Hello everyone and welcome to the stream. And if you're new to my stream, my name is Abhishek Sharma and I'm trying to learn advanced backend and system design. And this is day 86 of that. So if you enjoy the stream, do consider subscribing to this channel and drop a like as well. So let's get started now. Hello Yashwant, welcome to the stream Yashwant. What's up? Lol, I can hear the keyboard sound. Welcome to stream Yashwant. What's up? Okay. So today our goal is to implement the rate limiting, login rate limiting, and endpoint specific rate limiting. Right. So that's what we need to do, do today. That is the main goal. Okay, so there we go. All right. So first we need to install Express rate limit Redis. Okay, so here I can install cd backend cls. Yashwant, sub man, done with the dinner. Yes, Yashwant, I have done my dinner. And now we are going to implement endpoint specific rate limiting into our identity module. That's the goal for today. And what about you, Yashwant? You had a dinner. npm I rate limit Redis. Rate limit rate limit Redis. Okay, we are going to install this. It is getting installed. Ganesh, hello Ganesh, welcome to the stream. Hi again here. You gave advice yesterday around 1 a.m. for learning front end. I'm starting with you live. Hey, that's nice. Ganesh, welcome to the stream. And yes, we can code together and let's see how long do we code today. 07GT. Hello 07GT, welcome to the stream. How did you prepare this project timeline phase wise? What is the prompt that you used and can you share the prompt? I've shared the prompt in my Discord server. You can join my Discord server, the resources, and you'll find the Notion template. So we have installed this, right? All right, so if you go here, package JSON, and for this one, if we see the dependencies, here we have rate limit Redis, right? And now if I see my GitHub, okay, we have this repositories. Okay, Yashwant. Yeah, done. And by the way, I was opening to prepare for my C++ and same time you started the stream. Okay, nice. Yeah, bro, let's code together and let's see for how long we can code today. Okay. Mem Babu. Hello, Mem Babu. Welcome to the stream. Please give your Discord server. The Discord server link is in the description of the stream. Okay, find the link in the description. Okay, so if I go here and backend, here we have the package JSON and dependency express rate limit and rate limit Redis. Do we have a dev dependency for this? Dev dependency for this? No. Okay. All right. So if we see here, we have done this creator rate limit configuration. Okay. Hello, Software Pause. Welcome back to the stream. What's up? Okay. So here we have rate limit policies. We are going to create the policies. Correct? Okay. Um, this we have rate limit policies, register, forgot password. We are keeping like this. Okay. Max. Okay. Login rate limit max. Okay. So first, what I need to do is I'll go to my .env.sample. Here we have this one. Okay. And here will create login rate limit window, and it is 15, and login rate limit max is going to be, according to this, we are keeping it 10 requests in 15 minutes. Okay, that is all right. Fine. Okay, so then we have, after login, we have register. Let's make it login user. Login user. Okay. Register user 15. Register user rate limit max
will be 10. Okay, we have this. Then we have Namak. Hello, Namak Whitey. Welcome back to the stream. Or by also nice post today. It's honestly true throughout the life. Yep, Namak. Yeah, see, we have to manage our thoughts and our mindset. Only then we can do something. And welcome to the stream, Namak Whitey. Out of the loop. Hello, out of the loop. 9. Welcome to the stream. I've completed Python. Should I learn DSA or SQL and frontend? Because then all LMs rag, bro. I have 4 years still for grad. I'm in 12th. Okay. Python should I learn DSA? See, you can learn DSA with Python, and SQL you can learn later as well. But right now, you pick one primary language, learn Python, and then build a habit of solving one or two DSA questions every single day. And then later on, you can learn about Fast API, and then you can get into LLMs and everything. Fast API will help you to write APIs and create a backend APIs in Python. But later on, if you want to get into LLMs and all those things, then Python will help you a lot. Okay. Then here we have a register. Then we need forgot password. Okay, forgot password. Forgot password rate limit window. Okay, Namak White. Damn, I wish I was back at the same as you. Okay, here we are keeping 15 only. Okay, and then we have forgot password rate limit max. We are going to keep it 5. Okay, so what I can do is I can keep this here. Right, I can keep this here, and this I can keep it here. Okay, we have this 15. Then we have reset password rate limit window. Here we have 15, and here also reset password rate limit max is going to be 5. Okay, okay. Ank X 3095. Welcome to stream. Is it okay to learn DSA with Python? Yes, it is absolutely okay to learn DSA with Python. NG Tantai. Hello, NG Tantai. Welcome back to the stream, brother. What's up? Then we have reset password. Then we have refresh token rate limit window. And here we have reset refresh token rate limit max, and in 15 minutes we are going to keep 30 requests. Okay, fine. Okay, or like it's better to do DSA with C or Java. See, the point of DSA is that no matter which programming language you're comfortable in, you need to build your logic and write that logic into a code comfortably. Okay, we have this max. Okay, then we have verify email rate limit window. Here we are having 15. Verify email rate limit max 5. Okay, we have this, correct? And I can copy this entire thing, and I'll go here and I'll paste it here. Just a sec, I'll paste it here. Okay, did this, close this, and yeah, there we go. We have this. Okay, all right, thank you, welcome. Okay, दीक्षांत वेलकम स्ट्रीम दीक्षांत भाई। एक दिक्कत हो गई है यार, मैंने इंटर्न कर रहा था उधर, जैसे साथ में फ्रंट एंड कर रहा था सीनियर, उसने गवर्नमेंट लीव कर दिया। अब मेरे को टेंशन हो रही है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो इधर, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत सीख रहा था। सी दीक्षांत, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी कैन लीव एनी टाइम, देन you have to learn those things on your own. You cannot depend on anyone. We have this, right? Now if I go to my config, src config env.schema. Now here we are going to use all of those things, right? Okay,
Yashwant, if I'm learning important basics of language and start working with ChatGPT for beginner project and start learning with it helpful. See, before getting to ChatGPT, I will suggest you first watch a tutorial on YouTube, code along with those tutorials. Then after watching the tutorial, whatever learned from the tutorial, use that knowledge to build something on your own. Then get into GPT and use GPT to teach yourself complex topics, right? Okay, because if you directly jump into see, in the end, ChatGPT is an LLM and it can hallucinate anytime, right? So you have to have the basic knowledge so that you can understand when an LLM is hallucinating. Okay, we have this. Okay, so here we have login, rate, limit, login user, rate limit, window. Then here we have z dot equals dot number. Okay, we have this. Then we have login, user, rate, limit, max, z dot equals dot number. Okay, we got this. We got a good point. Okay, we got this login. Then here we have register user, rate limit, window, z dot equals dot number. Then we have register user, rate limit, max. We have z dot equals dot number. Okay, we get this register user also. We are getting it. Then we have forgot password. Okay, here we have forgot password. Yes, copy this, paste it here. Forgot password. Z dot equals dot number. Then here we have limit max z dot equals dot number. Okay, we get this. Okay. Muhammad Hamza. Hello, Muhammad Hamza. Welcome to the stream. LLM hallucinating, which means sometimes it's just going to give random if I'm right. Yes, you are right. Okay. Your LinkedIn. Fiza07. I don't use LinkedIn. I'm not active on LinkedIn. I'm active on Twitter. My Twitter link is in the description of the stream. Forgot password. Then after forgot password, we have reset password window. Z dot towards dot number. Then here we have max z dot towards dot number. We have this. Then reset password. Then we have refresh token window. Z dot towards dot number. Then we have max as z dot towards dot number. Fine. Then we have verify email. Here we have, okay. Then we have verify email rate limit window z dot towards dot number. Then we have max z dot equals dot number. Okay, we got this. Out of the loop, bro. Are you building a project with ChatGPT? I mean, can it help you build total website? GPT can build simple websites, but for complex backend, you need to have some knowledge. Mohammed, how much you have covered and which tools you will probably implement like Redis, Engine, etc. Uh, we have successfully implemented the modular monolith structure, and we have almost completed the identity module. By today we are going to complete the identity module. Then after that we are going to start with the customer module. Then after customer module we have order, restaurant, menu and driver module. Then after that we are going to shift this entire modular code base into event driven architecture, and then we are going to implement Kafka. So a lot of things are left here. Okay. Okay. Mohammed, did you use a SMTP service for verification? Yes, sir. We have used a Mailtrap as our SMTP service, and we have used NodeMailer also.
Yeshwant, where can I find the GPT prompt used for the current project timeline in Discord? This for current project, I have not shared the prompt yet because this entire prompt is still incomplete. Once I complete this, then I'll share the prompt because it is still in my Obsidian file, right? But for the prompt to create the entire curriculum, that I have shared in the Discord server. Okay. Which AI chatbot is best for learning code stuff? I personally feel like Claude has better explanation of code. See, personally, for just for learning purpose, I go with ChatGPT. Claude is very good for writing the code, and see, Claude has much more higher intelligence when it comes to coding and all. But my issue with Claude is that first is the token limitation, and second is that it gives me things that I don't even ask for. So it does not give me for learning purpose. It can be a problem because if Claude tells me everything, then I will not be able to research and learn on my own, right? So it will be like AI is spoon feeding me. So I don't want that. So that's why I go for GPT when it comes to learning. Okay. Yashwant, yeah, old ones timeline where it is. I mean Discord section in the resources channel. You will see a pinned section. You will find a Notion template there. We have this verify email rate limit. Okay, verify email limit max. Okay, this we have done, right? So I can close this. I can close this. Yes. Then after this, we need to create the SRC infrastructure security rate limit dot config. We have rate limit like this. We need the rate limit dot config here. Hold on. We have this security storage. Yes. Okay. Here I can create rate limit dot config dot ts. Okay. Rate limit dot config dot ts. Fine. We have this. Just a sec. Yes. Yeah. We have this one. Fine. But see, this is a config file, so I think it is better to keep it here inside the config folder. Here. Yeah. I think this is better. Rate limit config, it should be here. And here I'm going to create export const rate limit policies. Okay. Then here we have login. Okay. We have login, register, forgot password, reset password, refresh token. Fine. Then we have verify email. Verify email, right? Okay. Yeah, ChatGPT has clean explanation. Gemini sometimes sucks. Yep, I agree. Right, GG. Okay. आयुष टकी, हेलो आयुष टकी, वेलकम टू द स्ट्रीम। भैया वर्जन यूज़ करके फुल स्टैक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई यूजिंग ओल्ड वर्जन एक्सजेएस 11.3, कोई दिक्कत होगी जो मॉल? आई विल से ऑलवेज गो फॉर न्यूअर वर्जन। Raja Velu, hello Raja Velu, welcome to the stream. Bro, how do you make this? What? Okay, message redirect. Okay, fine. Verify email. Fine. We have this, and this is going to be as const, right? We got this here. Fine. So for login, here we have window milliseconds. Here we have env dot login user rate limit window into 60 into 1000. Then here we have max of env dot login user limit max. Yes, we got this. Out of the loop, you can take help of Codex, right, bro? I know it has less credits, but you can use once for 24 hours. Yeah, we can take help from Codex as well. आयुष है कि क्या code syntax change होगी version? See, actually 11 is quite old version because I think they have removed app router, all those things,
Raja Velu, sorry bro, how do you make this big end-to-end plan? I mean, following your method, it took me 2 days to done plan setup for simple project. I used AI for the complete end-to-end plan. Yeah, see, initially it will take time, but once you get the habit of creating an implementation plan before you start working on something, then you will see that you will be able to complete your projects properly. Okay, then here we have window ms env dot register user rate limit window 60 into 1000. Then we have max env dot register user rate limit max. Yes, okay, we got this. Then here we have window ms env dot forgot password rate limit window into 1000. Then here we have max env dot forgot password rate limit max. Then here we have window ms. Okay, okay, no issue. I used to keep whatever you have learned. You can see learning a new tech stack. If you already know the old tech stack, it will not take much time. Window ms env dot mm, reset password rate limit window into 60 into 1000. Then here we have max env dot forgot password max. We go here, fine. Then in refresh token we have window ms env dot refresh token rate limit window into 60 into 1000. Then max, here we have env dot refresh token max. Okay, then here we have verify email window ms env dot uh, verify email limit window into 60 into 1000. Here we have max env dot verify email max. Okay, we got this thing correct. Okay, okay. Thanks man, all the best for your project. Welcome out of the loop. आयुष कि भैया मैंने पूरा 2 months के आसपास लगा के प्रोजेक्ट बनाया था समझ के देन जस्ट लर्न द न्यू थिंग्स व्हाट हैज चेंज्ड एंड देन ट्राई टू बिल्ड इट अगेन इट विल नॉट टेक यू मच टाइम नाउ we have this one correct. All right, and global rate limit policies, should I create the global one here as well? I think it is better to create the global one here as well. Rate limit policies. Okay, here we can create, let me create global as well. Okay, and here we have window ms env dot global rate limit window into 60 into 1000. And here we have max env dot global rate limit max. Okay, we have this, fine. Then after this, create rate limit service. Okay, infrastructure security rate limit service. Okay, so according to this, we go here and we have security here. Okay, there we have a rate limit like this. Just a sec, I want to make some changes here. We don't need this one. I don't need this one. Here, what I need is window ms. It will be rate limit policies dot global dot window ms, and here also it will be
rate limit policies dot rate limit policies dot global dot max. Fine. We're getting this here. Okay, this is fine. But here we have a rate limit and here we have global rate limiter, right? That is fine, but if you see here, it is not like dependency injection, correct? So let us keep it like this for now. But here we need rate limit service, okay? So here I can create something like, hold on, infrastructure. Can I create here cache infrastructure security? Okay, let me write rate limit dot service dot ts. Okay, we have this. Then here I can create a class export class rate limit service. Fine. And here we are going to have import injectable comma inject. Fine. Okay. Out of the loop, bro, suggest one best DSA channel if possible in Python. Neat code. NEETCODE. Neat code. We have injectable. Fine. We get this. Then here I'm going to get the Redis store. Right. And this Redis store we are getting from rate limit Redis. Okay. So here I'm going to need the import Redis store from rate limit Redis. Okay. All right. And here I can also get type Redis reply. Okay. And here we are going to create the private read only Redis store Redis store. Fine. We have this from YT. Neat code is on YT only. Piyush, hello Piyush, welcome to the stream. Brother, what do you think in future which will boom, backend or front end? Please tell. See now, actually, see both contribute to building a product. So you have to think that I think backend has more scope for future because right now also AI can write front end really well. Okay. Hello Nikunj, welcome to the stream. What's up? We have Redis store here. Okay. And rate limit policies. Rate limit policy. We are creating export interface here only. Okay, so okay, fine. So if we are doing this, then do we have a type here? No. If we don't have a type here, infrastructure, config, infrastructure. Okay, here we have anything shared, types. Okay, maybe here I can create rate limit policy dot types dot ts. Okay, maybe here I can create rate limit policy dot types dot ts. Okay. Or here I can say rate limit policy dot interface dot ts. Okay, but it's an interface. Hold on. So if we are doing this, then Leo, early stream again. Hello, Leo. Welcome back to the stream. Yes, bro. Today also I had my dinner early, so I started early. What's up, Leo? Yeshwant, have you tried Firebase by Google? Yes, like years ago I tried Firebase and Supabase as well. Then here we have export interface I rate
limit policy, and here we have window ms, which is of type number, and max of type number. Fine, we get this. Okay, so here we have this. Then I'm going to create the constructor. We're going to create the constructor here. Okay, by default we're empty right now, and here we're going to have @inject. Here we have infrastructure tokens dot redis client, and here we have private read only redis of type redis from io-redis. Okay, just a sec. Here it should be like this. Fine, yeah, we got this. Okay, Nikunj, which ID are you using? I'm using an ID called Zerita, ZED. Partial. Hey bro, what's the goal for today? Rate limiting. Yes, today our goal is to implement endpoint specific rate limiting, and by today we are going to complete the identity module, so that from the next stream we can start with the customer module and we can proceed further with our food delivery application. So by today we are going to complete the identity module end to end. Okay. Bro, what's your mother tongue? My mother tongue is Hindi. Okay, soft pause. Hello, soft pause. Welcome to stream. I currently use Superbase for a project, but it feels its free tier can't withhold whether after some time. Any other options? See, Superbase is good for simple MVPs, and if you're building small mobile-based applications or small SaaS that will not have huge number of users in the future. But later on, if your app explodes and it becomes really popular and lots of people start using it, then either you have to pay a lot for Superbase to use it as a backend as a service, or in the free version it will be very slow to use, right? So that's the thing. Maybe if you already have the knowledge of backend, you can build your backend on your own. See, I always prefer building the backend on my own. I don't like to use third-party applications for end-to-end like for a product that I'm building. Okay, Partial, I'm looking forward to building an open source project with you and the audience here. Yeah, man. See, guys, I needed your opinion on one thing. If you are joining the stream, pay attention right now. See, actually, on weekends, I'm thinking of starting a new stream series where I'm going to build an LLM from scratch. Like, do let me know if you see. The goal with that series would be that first I'm going to build the core version of the LLM, and then I'm going to make that project open source. Then you guys can contribute to that LLM. Like it will be like an open source LLM that I want to build, and I will be doing this on weekends because during my weekdays I'm busy with my startup product, right? Maybe on weekends I can build an LLM from scratch, and then after building the first version I'm going to deploy it, and I'll make the code open source so that you guys can see the code and also contribute to the code. So if you guys are interested and if you think that this project you would like to contribute, then do let me know. I'll start this project. Okay, we have this, right? Then inside the constructor. Okay, softball, is there a platform where we can list open source repos for public contribution? Is there a platform? I don't know yet. Softpause, you can search on Google actually. I don't know anything about LLM, but I'm ready to watch and learn if it's possible for a beginner to try. Yeah, actually, right now, during my weekends, as a hobby project on my weekends, I'm trying to learn how to build LLM from scratch. Then after that, I try to build my own LLM. Partial, yes, I'm down for it. Will be a pleasure to build alongside you. Sure, man. Then, in future, I'm going to start that series on, like, it will be weekend specific series. Only on weekends, I'll be streaming those things. Right. Suraj, hello, Suraj. Welcome to the stream. What's up? We have this constructor here. We got this. Then here, I'm going to do this dot redis store equals new redis store. Okay, and here we have send command. Here we have command of type string and args of type array of string. Okay, then here we have this dot redis dot call command and args as promise of type redis reply. Okay,
We are getting this. So can I keep it like this here? We go here. We go here. Okay. We get this. Correct. Then after this constructor, here we have create limiter. Okay. We have this method called create limiter. Okay. Somnath Das, will you create an element with Python PyTorch? Yes, I'm going to use PyTorch because I know PyTorch and I'm comfortable with it. Okay. Deepak, hi Abhishek bhai, what's up? Hello Deepak, welcome back to the stream, brother. What's up? Today our goal is to implement rate limiting and complete the identity module. So inside this create a rate limit method, here, here we have the policy, then we have the prefix. Okay, and rate limit request handler, and this rate limit request handler is coming from express rate limit. Okay, but if we see the code here, just a sec, if I show the code of rate limiting here, we have, where is it, src. Okay, Somnath, great. Okay, Somnath, thanks man. We have this. Here we have policy of type rate limit, I rate limit policy, I rate limit policy, and here we have the prefix of type string. Fine. Then here the return type will be rate limit request handler, and this will be of type. Okay, then here we have return rate limit. Okay, and here we have window ms of type policy dot window ms. Shanky, good evening, bhai. Which font is this? Hello, Shanky. Welcome to the stream. Font, I think it is a default Z font, and the theme is called Carbon Fox. Pasha, from your yesterday's stream, I have also implemented forgot and reset password in my project along with email feature. Although it took me 2.5 hours, the efforts were worth it. Yeah, bro. See, that is actually true software engineering, true, building something. It will take time. That is the reason, when you try to build something on your own, it takes time. It takes a lot of time to implement something. Anudeep. Hello, Anudeep. Welcome to the stream. Hello, bro. What do you think about the current job market? Currently, I have completed my MTech and still unemployed. What would you suggest if you were in my shoes? See, right now, the thing is, if you notice carefully, people are getting jobs, but the competition is very high. We are not in a time where you will just get a degree and then someone will come to you and offer you a job. Those days are gone. If you want to get a job right now as a computer science student or in IT field, you have to be exceptional, right? Because right now AI has solved the problem of writing the code. So writing the code is no longer the issue. Now the issue is that you need to understand how to build good projects, and like when I say projects, I mean end-to-end products. And if you launch it, if somebody sees your project, it should look like an end-to-end product, right? So for that, you need to learn about software engineering skills. You need to plan your software. You need to learn a little bit of system design. You need to pick one tech stack, and you need to be very good in that tech stack. Like what I mean by that is that, for example, if you are working in Stack or Stack, you should be able to write code in Stack or Stack without AI. That is the first thing. Second thing is that after that, you need to build good projects, like end-to-end projects. You need to deploy those projects. You need to build in public. You need to build a strong resume. Then you need to start networking online with people who are already in the industry. Like you need to get attention to your projects. Then maybe you can start approaching startup founders. Like if you can get into a well-funded startups, you will actually you will get a very good package as well, right? Okay. Tara, hello Tara, welcome back to the stream. Suraj, hey bro, I try to build my AI assistant using Olama 5 billion model. Oh, that's nice. 5 billion parameter model. Nice, bro. Devam Jha. And what framework you're using, Suraj, to build that? Devam.
What frameworks are you using in backend? I'm using Postgres for my database, Express to write the APIs, Node for runtime environment, um, Zod for data validation, Redis for rate limiting and caching, BullMQ for background jobs, Mailtrap for SMTP, and that's it. And T-Series for dependency injection. Okay, Window MS. Then we have Max policy dot max. Fine, we get this. Then we have standard headers true, and also legacy headers false. Then we have key generator return dot ip or unknown, and here we have request. Okay, then we have identifier. Identifier will be the prefix. Okay, and then we have the message success false error. Okay, then here we have the error. So error we have code rate limit exceeded, message too many requests, please try again later. Fine, we get this now, correct? And if you see the code here, where was it? Middleware, rate limiting, and if you see, for example, login rate limiting, this thing is same as this entire code here. When we are creating the rate limiting, we are actually doing this thing, this one, right? So in URL sorter, we have already done this, right? Okay, so we are creating the rate limiter. Fine. So here we have rate limit service. Okay. Then add the DI token inside the infrastructure tokens. Okay. So if I go to my infrastructure, here we have container tokens, infrastructure token here. And here I'm going to add the rate limit service. Okay. So here I can add rate limit service. And here we have symbol dot for infrastructure dot rate limit service. Fine, we are doing this. Then after this one, if I go to infrastructure container modules, here we go to infrastructure.ts. Here I am going to use that class. Okay. Okay, Leo, you don't like having a small ambient or FM music running in the background, very low volume just to vibe. Actually, Leo, like here in this scenario, I need to constantly think and build logic in my head. So when I'm coding like this, and if the background music plays, personally it distracts me a little. Maybe if we were doing vibe coding and we were not writing code a lot, we were just doing vibe coding, then I would play a background music. But right now we are not doing vibe coding, and I need to build logic in my head constantly. So, and I also need to understand all the code base structure as well at the same time. So like for in that case, background music can become a little distracting. Okay, Suraj, I built my Monster application using TypeScript, and I think at Person AI Assistant 2. Okay, nice, Suraj. Shanky bhai, last week I gave an interview for a fresher SD role, but I think they were looking for someone with 10 plus experience. Okay, 10 plus experience. Okay, got it. Code with VSK. Hello, Code with VSK. Welcome to the stream. I started working with GraphQL, Postgres, Prisma. I'm a Monster developer. Now I'm learning new tech stack of above which I feel it's confusing a little bit. I see whenever you're trying to learn something new, it can get a little confusing, but the best thing is project based learning. Build a project.
We have this, right? A rate limit service from security rate limit service. Okay, fine. Then here we are going to use container. There's a singleton. It's going to be singleton. Okay. So if I go here, container dot register singleton dot, here we have infrastructure tokens dot rate limit service, and here we are going to use rate limit service. Okay, we get this here, rate limit service, and this rate limit service we are getting from security. Okay, this we have done. Fine. Then we need to create a middleware, identity middleware. If I go here, close this, and according to this modules, we have this infrastructure here, we have this. I go to module, then we go to identity, then we get inside the presentation layer. Then here I can add a middleware. Hold on. Middleware application. Okay, here I can add a middleware in presentation layer. Middleware. Okay, and here I can add identity rate limit dot middleware dot ts. Fine, we get this. Okay. Noob, hello Noob, welcome to the stream. Yo bro, what to start backend from zero? What should I do? First, pick up programming language. First, you should pick up programming language and pick a programming language that supports backend development as well. You can start with Java, Golang, or Python, JavaScript. I would recommend if you're a beginner, go with JavaScript. It is quite easy to learn and it has a big ecosystem for backend development as well. You can go with Java or Golang as well, but if you're looking from job perspective, Java and Golang, it requires a bit of experience in the industry to become job ready. Okay. Then after that, you need to learn one tech stack that revolves around that programming language. For example, if you have chosen Python as a core programming language, then maybe you can learn Fast API or Django to learn about backend development, learn about REST APIs, controllers, ORMs, how to use different databases, authentication, how to write CRUD API, and all those things. Then you need to start building projects. Noob, okay. Shanky, okay. Guru, hello Guru, welcome to the stream. Anudeep, bhai, won't you get confused between languages? Like you said, you were going to build. Actually, I had the experience of working with multiple languages. Actually, if you see my story, I started with Python. Like I started with C++ in school, then I got into Python in college. Then in my previous job, I was working with Java. So I already have the experience of working with multiple languages at the same time. So this is why I always emphasize that. See, now you need to understand the flow and fundamentals of programming language, and later on you can learn any language. Only the syntax changes, but the flow remains the same, right? Okay. Okay. Leo, chat miss. Okay, Leo, what was the chat, Leo? What's the chat of Leo? Leo. Okay, answer that question. Like, why don't play background music, because I find it really distracting. Dhruva Jain. Hello, Dhruva Jain. Welcome to the stream. What's up? I'm good, brother. How are you? अमित भाई आप लिंक्डइन यूज क्यों नहीं करते आई हेट लिंक्डइन लिंक्डइन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इन माई ओपिनियन because it is too cringe and it never worked for me. I'm more active on Twitter. Leo, your recent post about your biggest opponent is your controller. What do you think? It's do you know it's a book too? I have not read that book, Leo. What is the name of the book? It is what is the name of the book, Leo? Noob. Thanks, bro. Welcome, Noob. Okay. Then we have the rate limit middleware. Then we create the middleware like this, right? But if you notice carefully, if you see the other middlewares inside our app layer, for example, we have authorization middleware. Okay, okay, fine, that is correct. Yeah, flow remains the same of the middleware. So here I'll create a new class, export class
identity rate limit middleware. Okay, then here I'm going to use injectable import injectable from T-syringe and also use inject, and here at top I'm going to put the injectable here, injectable. Okay, then after this I'm going to create a constructor. Okay, we have the constructor here, right? And read only login request handler, request handler, request handler, and this request handler is coming from Express. Okay, so okay, fine. अमित भाई, क्या आपने प्रोजेक्ट्स साथ में ट्विटर पे पोस्ट करूं? हाँ, you should post about your projects on Twitter. Twitter is actually very useful. Build in public in Twitter. Request handler. Of type. Fine. Then I have read only. Register of type. Request handler. Fine. Then we need a read only. Forgot password. Request handler. Okay. We have this. Then we have a read only. Reset password. Request handler. And then we have a read only. Refresh token. Request handler. And read only. Verify email. Request handler. Fine. Then inside this constructor we have inject infrastructure tokens dot rate limit service, and here we have private read only rate limit service of type rate limit service. Okay, then after this, okay, we have this constructor here. The book name is Your Biggest Opponent is Your Uncovered My by Saurav Dubey. Okay, Leo, I'll check it out. Thank you, Leo. Thanks for letting me know. Ashish, which language is this? It is TypeScript. Partial, okay. Private slash read only, same thing. No, actually, read only means that we don't want this once this variable is declared, I don't want the value to change. This means read only. We cannot write. We cannot write any value in this. So inside this constructor, as you can see here, inside this constructor, we are assigning a value. Then after a value has been assigned inside the constructor, later on we cannot change it. Okay. Okay, Mohammed, which lint is it? Code font. Code font, I think it is a default code font, and the theme is Carbon Fox. Okay, got it, bro. Okay, partial. All right. We have this. Then here we have this dot login equals this dot rate limit service dot create rate limiter, and here we have rate limit policies dot login, and prefix we are going to say, just a sec, prefix we are going to say identity dash login. Okay, so similarly I can, for these things we can make this dot register. Here we have this dot rate. Here I can put this dot rate limit service dot create rate limiter, and here we have rate limit policies dot register, and here I'm going to put identity register. Okay, fine, we have this. Then after this we can have this dot register equals this dot rate limit service dot create rate limiter. Here we have rate limit policies dot forgot password, and here I'm going to say
identity forgot password. Okay, then here we have this dot, hold on, this dot forgot password. Okay, we have this, fine. Okay, then after this we have this dot reset password. Here we have this dot rate limit service dot create rate limiter. Here we have rate limit policies dot reset password. Then here we have identity slash reset password. Then we have this dot refresh token equals this dot rate limit service dot create rate limiter. Here we have rate limit policies dot refresh token, and here I can say identity slash refresh token, and here I can say this dot verify email, this dot rate limit service dot create rate limit. Here I can say rate limit policies dot verify email, and here I can say identity slash verify email. Fine, we get this. Okay, Shanky, bhai, is this Nest.js? No, it is Express.js. We get this here. So after constructor is done, okay, we put this here. We put this here, okay. Fine. This we are doing. Okay. So what we are going to do is we are going to create this, call it via this identity rate limiter dot login like that. Correct? Identity rate limit middleware update identity.ts. So we are going to have this identity.ts inside my infrastructure, security, persistence, tokens, identity tokens. Hold on, identity.ts. Okay, so this one we have identity as a singleton. Okay, not here, not here. Hold on, hold on. If I go here, infrastructure, container, modules, identity here, okay? So here we are going to use register singleton, correct? All right. So here I'm going to use container dot register singleton, and here we have identity rate limit middleware, and here also identity rate limit middleware. Okay, I would put this presentation level dependencies, use case, authorization service. Hold on, authorization service. Okay, so it's better to keep it here. There's a use case, login use case. I can put this here. Yeah, we put this here. Fine. And then after this one, we are going to start the identity router. All right. So next thing to do is update the identity route modules
identity, close this, kind of middleware, close this, routes, identity.route. We have this. Now we are going to use this one, correct? So, login controller, authentication, all of this. In the end, we are going to use the identity rate limiter middleware. Okay. Newbie, hello newbie, welcome to the stream. Abhishek bhai, आज क्या होगा? Today we are implementing endpoint specific rate limiters, and today our goal is to complete the identity module so that from the next stream we can start with the customer module. Okay, so here we have const identity rate limit middleware equals container dot resolve identity rate limit middleware. Fine. And now what I can do is, when now for each and every endpoint, here we have router this post, and before we validate the data, here I'm going to implement identity rate limit middleware dot register. Okay, well, we are keeping it like this. Okay, fine, we are keeping it like this. Yes, and then we have identity rate middleware dot login. Okay, then yeah, we are doing this login refresh to, oh, yeah, then we have this identity rate middleware dot refresh token. Fine, then me, do we have this me endpoint authenticate? We don't need this here. Logout also we don't need. Change password, we don't need middleware here. Verify email, forgot password. Okay, change my verify email. Fine. Leo, newbie. Oh, Redis. Okay, Leo. Haha, you should rewatch your first stream on this channel. Like few parts, they are wholesome. It will make you happy. How, bro? Like Leo, can you explain? What do you mean by that? Sharma and Anmol. Hello, Sharma and Anmol. Welcome to the stream. Why is there a guy who asks if this Nest.js every stream? I have no idea, bro. Like maybe they see this, like actually in Express normally. If you see all the tutorials of Express.js on YouTube, nobody's using dependency injection with Express. So that is why when we use T-strings with Express, the syntax looks similar to Nest.js. Okay. Nianshu. Hello, Nianshu. Welcome to stream. Hey, bro. Watching you from 1 week. I had few questions. If you have time, could you please answer it? Sure, Nianshu. Ask your questions, bro. Troubleshooter. Hello, troubleshooter. Welcome to stream. Actually, this is the pattern of Nest.js. Actually, yeah, I agree. And Nest.js follows the pattern of Spring Boot. If you have worked with Spring Boot, there also we have this dependency injection thing. And Nest.js also uses dependency injection, and in Express also, and in Hono also we can use dependency injection. So it's like a dependency injection is a way of making your different features of your application um, loosely coupled. Okay, troubleshooter. Yes, that's what. By the way, love your video, brother. Thank you, troubleshooter. Thanks a lot, man. Means a lot, man. We have this refresh. Then here in this logout, change password, verify email. Okay. Then here, if we go and see identity rate limiter dot verify email, we get this. Then forgot password. Identity rate limiter dot forgot password. Then identity rate limiter dot reset password. Okay.
We get this. This we have done. Right. Okay. Now we need to check if this is working or not. Right. So just for checking purpose, what we can do is uh hold on. Okay. Leo, it was a roller coaster of emotions working on the social media app and still explaining the code and all. You were frustrated with the bugs and more, and at the end, you thanked everyone with zero views. Yeah, man, I agree. Like in my first few videos, they were new, like nobody was watching. So, as I always say, that the streams are actually for me to be consistent with my learning journey. So yeah, that's the thing, Leo. Okay, Rishi. Hello, Rishi. Welcome to the stream. Hi, Bhaiya. Sorry if I had asked this before, but how is my study time? So I'll watch them immediately. Where to learn system design from scratch? I asked this. Now is my study time. If you want to learn system design from scratch, see system design. Before you get into system design, first you need to learn one backend. Like you should have a good understanding of backend technologies, right? Then first in system design, you cannot jump into practical side of system design directly. First, you need to understand the theoretical side of system design. So maybe for theoretical side, you can follow Gaurav's YouTube channel or Hayek Simonian YouTube channel. Alright, you can follow system design theories from there, and then when you start building a project, then you can start implementing those theoretical knowledge into your projects. Okay, troubleshooter, bro. A question. As you said, you had worked with Spring Boot. Why did you leave Spring Boot then? Is it really good, right? Actually, see, Spring Boot is very good, but the problem is that if you are a solo developer, then Spring Boot can actually make your development process really slow because most of the time goes inside, into configuring things in Spring Boot. But if you have a team, then Spring Boot is fantastic. But if you're a solo developer, then you want a framework that makes your product development process really fast. Okay. Leo, haha, it was fun. Maybe if you can do fun stream on weekends, you might go through your old videos and watch how far you have come. All this just because of your genuine care and hard work. It's great. Yeah, that's a very good suggestion, Leo. And if you want, I'll give you one spoiler. If you really want something goofy, you can go to my Twitter and see my old posts. My old posts are really funny on Twitter. Okay, we get this. Now we have to check the endpoints. We have to check these things. Okay. So first thing, we have to start the Docker engine. Okay. Nityanshu, so my question is, tell me, how did you start learning from what you already know and totally how much you know? See, before I got into the advanced backend and system design concepts, first I understand the basics of backend development with MERN stack. Then I built simple projects. Then I got into system design. Like first I watched one or two videos on system design. Then I used AI to teach myself. First I created a curriculum, like a syllabus that I can follow. And one by one, I started learning those topics through online articles, through tutorials online on YouTube. Then I started building projects. Okay, we have this. Then if I go here, backend, right? But before this, if I go to .env.sample and let me just make the time small, 15 minutes to 10, 10, 5, 5, 30. Okay, so that's fine, we can keep it this much, and now we can start testing it. Okay, so if I go inside my backend and here, if I open my terminal. Okay. Okay, Rishi, bro, I heard high X pneumodia. So I searched high X pneumodia system design. Only then I saw high X Simonian. Yeah, high X Simonian. That's the guy. Tara. Hello, Tara. What's up? Then here we have CLS Docker Compose PS. Okay. Docker Compose build. Now build process is going on. Fine. And if I see my .env.sample, according to this, here in global rate limit of 15 to 1510. All right. Okay.
Leo Abhishek Sharma, number 16. Yusuf, please bring back Ezio Aditore. Okay. I actually tweeted that, Leo. Uh, Nityanshu. I mean, when you start learning coding, how much you know already, and at present time, how much you know from the start date. See, when I started coding, my first ever, like when I got introduced to programming language, my first ever language was C++, and through C++ only started learning basics of programming language. Then when I got into college, in my first year, I started learning Python. Then I got into Django. Then with Django, I started learning about backend development. Then I learned a bit of HTML, CSS, JavaScript, React. Then I started building full stack applications. And if you compare that point and this point, like I have actually learned a lot of things like how to write production grade code, how to, what are horizontal scaling, um, DB bottlenecks, caching, rate limiting, cache stampede problem, cache penetration issues, background jobs, how to scale the workers, and all those things. So we have come a long way, actually. Okay. Rishi, bro, I wrote that issue. Okay. Sharma Anmol, Sharma Anmol, do you run a home lab? But that time, I mean, maybe a separate server. Do you run a home lab? But that I mean maybe a separate server machine or some Docker containers on your current machine using Caddy or some other reverse proxy. Yes, you can actually use your own laptop as a server, and you can give access to entire world in your server. Right, like you can actually use your entire laptop as one single server. Okay. Okay, Leo. Yeah, you did tweet that, including this. Abhishek Sharma, I'm away June 7, 2024. In a few years, you will know me. Did I actually write that, Leo? I wrote that tweet. Sharman more. It could be beneficial to run Postgres, Redis, and such containers all the time. See, actually, Sharman, the thing is that it is not recommended to run a database inside your Docker container, because normally when we work in production, what we do is that, for example, this is your Docker container, right? And inside your Docker container, you have your backend APIs. You have your backend API. Then maybe you have a container that has Redis, right? Then maybe you have a container that runs the background jobs with bullmq like worker, right? And normally what we do, we deploy this, and all of this works inside a single Docker network, right? Docker network, DN. So this DN contains all of these different containers, right? But normally in production, what we do, we create a separate database inside the cloud infrastructure, which is not at all related to the Docker, right? DB on cloud, DB on cloud, right? We have this DB on cloud, and maybe it can be AWS RDS, it can be Neon DB, right? It can be Neon DB as well. Then what happens is that we give access to this cloud database to our backend API, right? So what happens if you make this inside your same Docker container? Then what will happen? It can, like, see, even a container inside a Docker network, it takes some memory, right? And database, if you're building an application that can have millions of users, then database is going to take a lot of memory. So in that case, we want to keep database separate from a Docker container, and we want to deploy it in a cloud environment where, according to the need, we can scale up or scale down the database. And this has nothing to do with the Docker container, right? So normally in production, we go for this kind of architecture. You can use a database inside Docker container as well. Maybe you can create a different container for your Postgres, right? This also is fine, but I recommend using database in a cloud infrastructure outside your Docker environment. Okay. Okay, how much time you took, bro? See, I started development. I got introduced to computer programming when I was 16 or 17 years old, and now I'm 26 years old. Okay. Aditya, do you think with 3 years of experience in software developer in Azure .NET Core, Angular, React with SQL Server and Postgres, I pursue master in USA, which could which should I choose, cloud technologies or else DS? See, Azure .NET is used in lot of companies, and .NET, if you already have 3 years of experience with .NET, that is very good. And yes, you can go for
this will actually help you to pursue masters in foreign universities. And I will suggest go with data science, or go into something related to AI, because you see, in US based companies, they have lots of, like, they are getting funds. AI companies are getting funding a lot, right? So AI companies have a bright future, in my opinion. Like, right now there is a bubble, I agree, but still there are some companies who are actually contributing towards the development of AI, right? So maybe you can get into some AI company. If you like, if I were in your place, I would be doing masters in AI ML, right? Or maybe masters in deep learning, or LLM, or something like that. Okay, we have this. So now what I can do is run build. Redis to particular when you never read. Where? Rate limit service. Okay, so if I go to rate limit service, rate limit serve, hold on, rate limit dot service dot ts. Hold on, what is the issue? That line number 11. This is never used. Then why are we getting this here? From where are we getting this here? Hold on. Is never read. And this is the Redis store from rate limit Redis. Okay. Then this dot Redis store, where are we getting this from? Close this. If I go here, rate limit dot service, rate limit dot service, private read only, and with this we are not able to access it. Why? Okay. Hmm. Uh, Sharma Anmol. It can break, and yes, it may not be resource efficient. I meant for local testing, running and deploying for yes, maybe a cloud-based infrastructure like AWS would be better. Okay, yep. Yeah, for testing you can use a database in your Docker environment. मानभट्ट, हेलो मानभट्ट गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम. हाँ जी, कैसा बढ़िया मानभट्ट, व्हाट्सअप. से आ ही नहीं पा रहा था. ओके, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम मानभट्ट गेमिंग, कॉलेज की वजह से. ओके, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम ब्रदर, व्हाट्सअप. लियो चैट मिस, लियो, लियो, just a sec. Leo. Yeah, I did tweet that, including this. Abhishek Sharma. In a few years, you will know me. Leo, did I actually tweet that? I don't remember. Did I tweet that, Leo? We have this. Hold on. Then why are we getting this one? Just a Redis store. This Redis store we are getting. What if I make this a type as well? No. Hold on. Redis store. Okay. So never read. Okay. If I go here, and here if I do, okay. Aditya, I have seen universities, but they are not giving specialized courses for AIML, but they are integrating subjects like AIDL. Okay, I think seen like DS or cloud or CS like that. Okay, if they are not giving a dedicated, if just a sec, if they are not giving a dedicated a course like that, then maybe you can take a course that is closely related to that. ओके मान बट नया माउस लिया मैंने पोर्टोनिक्स का, थोड़ा चेक करो उसे, बहुत अच्छा है. ओके, ड्रॉप द लिंक इन द डिस्कॉर्ड, आई चेक इट आउट. लियो, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन ट्वाइस, बट आई थिंक chat is getting deleted because I had a link. Okay, yeah, like I think in YouTube it does not allow to send the chat, send the link. Maybe you can drop the link in the Discord. Okay, मान बट पिछले HP का माउस. Okay, nice. Nityanshu, bro, are you actively looking for a job or solely focus on your salary? I'm not looking for a job. I already had a job. I left my job 6 months ago. I'm not looking for a job. I'm trying to build my own startup. मुझे पढ़ा and much better than HP1. Okay, 3 device connect or oh, that's nice, man. But you can drop the link in the Discord. I'll check it out. So if I do npm run build, okay.
So if I, what will happen if I remove this? What if I remove this? Then we are going to get issue here, right? Yeah, we are going to get issue here. And if this is fucking Redis to declare I never read, then how are we reading this value? I don't understand. Okay, just a sec. We have this. Okay, so to fix this issue, if I go here by using this new Redis store, this Redis store from Redis store, okay, we have this handler create limiter Redis store, okay, this dot store. What if I call this store and I call this store, then also it is not working. We have this create this message. Oh, maybe here I need to use it. Just a sec. Yeah, we need to use this store here. Legacy, skip successful requests, legacy headers, false, key generator, handler. Okay, maybe here we need to use this store. This dot store. Okay, Redis store. This dot Redis store. Okay, and here I'm going to use Redis store. Okay, we're using the store here. Okay. Aditya, if I choose cloud technologies, can I get roles like forward deployed engineer? It is new role in US, right? Did you heard about it? Yes, I did hear about it. But see, forward deployed engineer, it requires a bit of working experience, like in terms of, like something related to AI kind of thing. If as far as I know, मान but चलो आता हूँ. Sure, Manbat Gaming, Nityanshu. What was your role in your first company, bro? If you switch your first company, how much high you can expect? I was working as a Spring Boot developer in my previous company, and I don't know, bro, how much I would get. To be honest, I don't really care about it right now because right now I want to build my own startup. Okay, check your Discord. Okay, Leo, I'll check it out. मान भट्ट गेमिंग कॉलेज जाने वाले दिनों में मुश्किल से 4 घंटे की नींद आती है यार ब्रो आई एग्री Jonas. Hello, Jonas Brad3. Welcome to the stream. Bro, I understand you are learning backend, but me as a senior engineer, I would never recommend you type code like that or learn this. You will stay behind. What do you mean? Can you explain, Jonas? Can you explain what do you mean by this? Okay. All right. Miro. Hello, Miro. Welcome back to the stream. What's up? I have you ever thought that learning programming and software engineering is a dead role for most of the people? Did you ever had that fear that whatever you learn, there is no point of learning since AI can do it? Yes, Miro. See, the thing is, yes, I do think like if right now we are at a point where AI can write the code, AI can plan the software and all those things, then what's the point of learning how to code, right? But I look at it in a way that if you learn how to write the code first, you work on your problem solving skills. Second, if you're looking from a job perspective, you know, if you understand how an LLM works, LLM is just predicting the next output, most suitable output, right? So, for example, if you are a software engineer, and Miro, if you are here, this for you. Imagine this scenario that you are working in a company like any good tech company like Google, Microsoft, Amazon, or any good tech company like that is trying to build something that has never been built before, right? Then if you look at LLM are trained on data that already exists, right? So for example,
if somebody comes to you in your company and tells you that now we are having this trouble, we want to build a new architecture that can solve our issue, right? And this architecture has never been built before, so there is no data exist that LLM can use to build that thing, right? So in that case, what will happen? Core human intelligence is going to get used to build an architecture that has never been built before to solve a problem for that company. And how did I come with it with this example? A few months ago, I was reading an article that how Netflix came up with the microservices. Right? It is considered that Netflix are the pioneers of microservices. So actually, what sudden there was a sudden surge in Netflix user traffic, right? So their simple monolith structure was not working appropriately, because normally what was happening, user were there, but sometime it can happen that one particular series got so much traffic that in the monolith structure, if they had to scale it in monolith structure, what happens, there are so many features tied up together that they have to scale up all of it together just to scale the streaming service, right? So in that, to solve that issue, Netflix engineers sat down and they created a new architecture, and they came up with a new architecture called microservices to solve that issue. So there, what they did, instead of monolith structure, they separated all the features into separate modules and separate servers. And now when they want to scale up the streaming service, they will just scale up the servers for the streaming service, and all of the other services like register, login, recommendations, features, they do not need to be scaled up, right? So to solve this issue, Netflix engineers came up with that solution, right? So imagine that scenario, like for example, if you're in a company and there is a sudden issue, and you want to come up with something new that has never been built before. So in that case, LLM cannot do it. You have to use a human intelligence. So this is where your core programming language, your core programming knowledge, your core development knowledge comes into the picture, right? So yeah, all right, okay. Discord conscious channel. You can drop in the resources channel. Leo, check it on stream for 2 minutes. Sure, I'll check it. Check it. Just a sec. Okay. I mean, you need Claude for Codex work for you with AI. What are you doing now is wrong. All of this work is already can be done by AI in 2 hours. Yes, Jonas, I completely agree with you. I completely agree with you. And while building my startup, during my daytime, I'm working on my startup as well. And in my startup, I'm using AI coding agents to write the code and build my product. But here I'm trying to learn like advanced practical side of system design, and here I'm deliberately not using AI coding agents, because see, if AI coding agents write the entire thing, then later I can just debug it and understand the theoretical knowledge, right? But here I want to build those things from scratch, so that later on, when I in during my daytime, when I'm working on my startup and when I'm trying to do these things through AI, if there's some issue, that is, it can happen that AI can have some issues, and we need to like debug it. And if we debug it, let's face it, that AI is not free, we have to pay. So if you have already had the knowledge, then why would you use AI to debug it? Like, if it's a small issue, if it's a big issue, then yes, you have the money, spend it, use AI to debug it. But if you have the opportunity to improve my debugging skills, improve these kind of skills, where AI can write the code and I can, like I can fix the small issues myself, then I will be saving resources for my company, right? So that's the thing. Okay. Okay. What he means is use AI and manage agents, increase the output and shit. I'm guessing. Okay, Jonas, they don't write code by hand anymore. What are you saying, bro? Yeah, see, no, I'm not saying that companies are writing the code by hand. I'm saying that imagine a scenario where you have to come up with an architecture that has never been built before. And obviously, if you know how LLM works, LLM are trained on data or on already existing data, right? So if something has never been built before, then it means that there is no data related to that. So how can we depend on AI to build something that has never been built before? AI is very good in building something that has already been built. That's what I'm trying to say. Okay. Okay. All right. Mm-hmm. But I feel if you upskill yourself, you have to write some part of the code yourself. Yes, I agree. That's what I'm trying to do. Yeshwant. Sup, I'm back. Welcome back, Yeshwant.
I agree with Jonas because if you are working on training neural network specific models of AI agents, then understand you need more. You need to write codes by hand and train the models. Okay. All right. Java TypeScript Express models are pretty much okay. Send resource. Okay. I understand, but there's an architecture-based prompting. You can tell it exactly what you need. Like build me a Microsoft. See, understand this. Why AI LLMs are able to build microservices? Because microservices has been built before. It has been built before, right? And so that it has been trained on the data with microservices, so it understand what microservices. I am telling you, imagine a scenario where we want to build an architecture that has never been built before. Like for example, to solve your particular problem of a company, you need to, it can happen, engineers, why are engineers in Google, Microsoft, Amazon paid so much? Because they are expected to in some scenarios, if pre-existing solution is not enough, they're expected to come up with their own solution that has been exclusive for those companies, right? So in those scenarios, they have to come up with a solution on their own. Then after they come up with the solution, then LLM are trained on those particular data. Then it can rebuild those solutions again. That is what I'm trying to say. Okay. Vinay, any guide for RAG ML projects? For RAG, I have built a RAG. You can go to my Discord server. There you will find. You can go to my GitHub repository, and there you will find a repository called DocuGenius. You can try to build that. Okay, Leo sent this. Where is Leo? Leo feedback. Okay, okay. So if we go here, start here. You did including this picture. Okay, where is it? Resources. Okay, this one. I'll check it out. I'll check out this product. Okay. Okay, where can I find the channel prompt used for current project timeline? Okay, this I have to share that project link. Okay. But check Discord. Yeah, I checked it. Okay. All right. Resume in Discord. Review my mouse. Done, bhai. Okay. I review it. We got this. Now, if I go here, मान बात चलो मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ आता हूँ या श्योर मान बात विनय I couldn't find your rag project. I'll show you just a sec. It's a Python based project. You can go to GitHub, and here in GitHub you will find, just a sec, go to repositories, and here we'll find something like this DocuGenius, this repository. This is actually a rag based application where you can upload your PDF, and you can chat about that PDF. It's a simple rag application, and I built Python Django for this. I use Python Django for this. You can check out this code here. Okay. Hello, this is Greg. Welcome back to the stream. What's up? How are you? Key generator identifier. We have this store, and here, why are we doing this? Skip successful request true. We have this store prefix store. Okay, identifier is the prefix. Okay, we have this store. Just a sec. If we are doing this, we have this key generator message. We are getting the message and handle. So why we are not having the handler? Policies prefix. Okay, we are using the create limiter. Okay. Okay, so now let's try this. And here if I go skip successful requests. Okay, skip successful requests true. Fine. All right.
We have this prefix here, and we have the identifier. Okay. All right. So maybe now we can try to build this. Okay. Anudeep. Hello, Anudeep. Absolutely agree on Abhishek about AI, because if you are Anudeep, I absolutely agree on Abhishek about AI, because if you are going to ask deep down questions regarding TS config, it will start hallucinating, repeat the same thing, because AI models sometimes have dead end. I agree. See, this is you need to understand the limitations of LLM. See, I am using LLM to build my projects, and but I know the limitations, because that is why some of the times I go and read articles online, and then I try to come up with a solution, right? Because LLMs are good if you're trying to build something that has already been built before, but if you're trying to come up with a solution that has never been built, then you have to think like an engineer. Okay. Jonas, guys, context or the need to understand the underlying of the any code base will be gone in the next couple of months. See, Jonas, I'll tell you one thing. When you are building a project, like when you are working on something, there are different levels of engineers. For example, you are building an application level engineer, like you're building an application, simple app. There you have front end, back end, simple. That what we are doing right now is simple application level kind of projects, right? We are building a full stack application and we are just scaling it up and down, right? Then we are implementing system design concepts and all those things. That is one level. This is level 1. Then we have level 2. Level 2 can be, for example, behind this application we are using Node.js, right? How is Node.js built? Node.js, we are using V8 engine, we are using we are using C++, right? So, for example, we want to build a Node.js, like we want to understand the working of Node.js, right? This is level 2, where we are trying to build a runtime environment with C++ and V8 engine. This is level 2. And now after this we can go for level 3. Level 3 can be compilers, interpreters, and all those things. Then we have level 4. In level 4 we can go and learn, try to build operating system. So in my observation, what I have seen is that AI coding agents are very proficient in writing code in this level 1 structure. With AI coding agents, you can build full stack applications. You don't have to look at the code right now, right? But once you go inside the deeper levels, like for example, you tell AI, I want, if you guys have the access to coding agents, you can try to build your own Node.js. Go to AI and write a prompt to build me Node.js, and then see the quality of the code. Maybe it will build something, but the code quality will be very bad, and like then you need to code along, you need to debug that and all those things. It will take a lot of tokens. It will do that, but the quality will be very bad. Then later on, maybe if you can use coding agents to build your own operating system, try that, and then you will see that AI coding agents will suffer, will struggle a lot at this particular moment. Later on future, yes, the quality of the AI agents will improve. Giri Shankar, hello Giri Shankar, thank you for the super chat, man. Welcome to the stream, Giri Shankar. What's up? So what I'm trying to say is that later on, when AI quality of the AI coding agents improve, then yes, we can reach a point where AI coding agents are able to build the entire operating system on their own, right? But still, we need to have that human intelligence where we want to build something that has never been built before. That's what I'm saying. Okay, what's up, Giri Shankar? What's up? Okay, Grey Hat Hacker. Hey, buddy, how's your day? My day was good here. Grey Hat Hacker, welcome to the stream. Sagar, hi bro. Totally agree with Abhishek. Coders Gyan also mentioned the same thing about AI limitations. Okay, welcome stream, Sagar. Sam, hello Sam, welcome to the stream. Bro, can you please make playlist of these live streams? Want to follow from the start? Sure, man. I'll make a playlist. I just keep forgetting that. Okay. Hello, Giri Shankar. Rahul. The interviewer asked me to explain if money is taken from GPay account, but because of a network error, the person does not receive the money. How will GPay handle the situation? That's a classic example of system design. And here you need to understand how secure transaction works. There's a very important concept called secure transaction. And this is a classic case of that. Okay. Okay. Giri Shankar, how are you, brother? I'm good, Giri Shankar. How was your day? So now here we can do npm run build. We have this npm run build process is successful. So now we can delete this. And if I go here I can do, and if we go here, cls docker compose down,
npm uh, docker compose build. Okay, build process going on. Ishat, hello Ishat, welcome to the stream. What's up? Okay, build process going on, guys. Okay, Rahul, how should I answer this question? How will GPay handle the situation? That's what I want to know. See, here you need to understand about, if you, for example, if you are using, if what are the given scenarios, like what kind of database the interviewer told you, like you are using Postgres, you are using SQL or no SQL database. Can you answer that, Ishat? Rahul, can you like in your system design interview, what exactly did the interviewer tell you? Like did you clarify that we are using no SQL or SQL database? Okay. Okay, Ishat, can I ask you a question about AIML? Sure, Ishat, you can ask me the question. Girishekar, idempotency retries if GPS make asset transaction. Exactly, asset is the keyword here. For example, if a transaction has been executed from one end and but the receiver did not receive the money and there was some issue, then what will happen is that we are going to roll back. There's a thing called rollback. For example, if the transaction has not been completed, we are going to revoke that entire transaction and we are going to roll back to the previous state. Okay. Jonas, look, my friend works at Amazon as a software engineer, a development engineer. He showed me their workflow. It's agent with guardrails, constraints. If the code quality is your concern, it has already been fixed. But that's fine. See, yes, maybe that is one part of Amazon, and maybe that your friend's role, maybe so build something simple and all. But you need to understand the point I'm trying to make. For example, I there's a upcoming rise in lot of new architectures, and for Amazon, like Amazon wants to build a new architecture that has never been built before. Now Jonah, explain me, if something has never been built before, yes, AI workflows are there, you can write the test cases, you can explain, and you will write uh, you know you will write the test cases, you will like for testing you can do that, small functions you can write through AI. But tell me, without the human intelligence, how you are going to build that solution for the new architecture that has never been built before? This is the key point. How you are going to use AI to build a software architecture that has never ever been built before? Answer this question maybe. Okay, Ishat, if I want to know how can I connect a simple chatbot to my LMS, what should I consider first, and how much should I cost be for a simple AI chatbot? Okay, so if you are integrating a existing chat, if you are integrating a chatbot into your application, first you have to give that chatbot access to the database, and then you have to make that chatbot understand that entire database is the knowledge base, right? Then if a question is asked outside, regarding anything that is outside the database data, then the chatbot will say that I don't have the knowledge for this entire question, right? So then here you need to understand about embeddings, you need to understand about vector databases. Then here you need to understand about RAG. Okay. Jonas. Okay, then you are right. We can't use LLMs. Yeah, see, there are, see, with time, LLMs are going to improve only. There is no doubt in that. And I'm happy that LLMs are going to, because in my startup only, I'm using AI coding agents to, build the product. But we still need to have a eye on the fact that LLMs work on data that already exists. If our type of data does not exist, LLM cannot, like LLM will start hallucinating. That's the whole point that I'm trying to make. Okay. GPace where uses Google Spanner. This is relational since it's deployed on Google Cloud. Okay. Sharma, use free tier LLM API. Start with Gemini console. Okay. Jonas, it's something innovative. Then there's no data on it. Exactly. You got my point, Jonas. Attack Titan. Bro, can you please tell me how do I start learning system design resources? Which one to start with, high level and low level, and what exactly is the difference between the two? Okay. See, firstly,
System design is not supposed to be a theoretical subject. System design is actually a practical subject. Right. So first, what you need to do is you need to first brush up your backend development skills, because system design is backend heavy. Right. So first, you need to pick one tech stack, learn the basics of backend development, learn build different kinds of REST APIs, learn how to use different types of databases and all, learn caching, rate limiting, basis of caching and rate limiting. That's the first step. Then second step is, first you need to understand theoretical side of system design. That for that you can learn from Gaurav Singh YouTube channel. You can learn from Hayek Simonian YouTube channel, right? Then you know the theoretical knowledge now. Now what you need to do is, for example, pick one product or pick one project. Like I want to build the backend of a Netflix application. Then go to Google, learn about, search their backend architecture of Netflix, understand the backend architecture. For example, if I show you here, if I am in your place, what I would do is backend architecture of Netflix. We go here, and there you will find this article. You can go through this article, try to read about this article, right? Then try to learn technology. See, right now Netflix uses Spring Boot, but you can replace Spring Boot with any other tech stack that you're comfortable in. But all of these topics should be covered, right? Maybe you can use Apache Kafka for streaming and all. You can use Cassandra with any tech stack. You can use CloudFront, Amazon S3, and understand what role these technologies play, and then try to mimic this entire architecture into your own way, right? Try to use any tech stack that you're comfortable in, and try to build this architecture on your own. Maybe that is a very good way of understanding advanced level of system design, right? And in a practical way. Okay. And see, LLD, as the name suggests, high level design. For example, HLD can be like entire working of Netflix architecture, right? Then LLD stands for low level design. For example, inside HLD we have streaming as a service, right? So now in LLD, what we are going to do, we are going to go inside streaming, and inside streaming we are going to design the streaming service, which with LLD. So HLD is like a overall high end picture, and LLD is like, you know, feature specific things, how we are going to plan the feature and how we are going to build that feature. Okay, Rahul, पहला इंटरव्यू ऐसा जाएगा सोचा नहीं था. Okay, Rahul. Now, Rahul, you see, this will help you understand the level you need to reach as a developer to get a job, right? Miro, the sad part is some people are not going to hit those problems since they don't want to work at Fang. Fang is a rat hole with no end, and 99% is moving data from the base to a screen. Okay, that is true. See, you have to understand, if you think about everything in terms of level, why, firstly, if you notice about the Fang companies, why are Fang companies are actually $1 trillion companies, and why they are evaluated at those $1 trillion? Because they are building product that maybe billions of users are using, right? So imagine the level of engineering skills that you need to handle a backend, where you need to make sure that no out of those 1 billion or 2 billion users, none of the users suffer any, like none of the services should be down. So this is why if an engineer go inside the Fang based companies, they are paid so much, because they understand the level of the product that Fang companies are operating. Each of these companies are evaluated at $1 trillion, right? So this is why Fang companies are evaluated so much. And then comes the next level companies. Like it can be maybe some startup. Startup start from no market value. Then they build a product. Then they try to innovate something. Then they try to capture the market. Then slowly, if the startup does well, then they capture the market and the market value grows, right? So then the next level comes good startups. Then see, I will put service-based company at the end. Service-based companies are the easiest to work in, because I have worked in a service-based company. So I know, like in service-based companies, there's absolutely negligible to zero innovation. So that is why engineers in service-based companies are not paid that much, right?
So this is the difference. You need to see, whenever you're making a career decision, you need to think in this way, like what kind of companies I'm targeting and in which level those companies are operating. So when you understand what level those companies are operating, then you will naturally understand what kind of engineer you need to build. Like what kind of engineer you need to become, right? Okay, Ishat, why I think more bigger AI will be blessing for us. See, as AI improves, I am going to be very happy with improvement of AI, because in my startup I am using AI coding agent to build the product. So I am happy that AI is evolving a lot. Okay, Galax. Hello, Galax. Welcome to the stream. What job are you doing now? I am working as a freelancer. I had a job. I left my job 6 months ago. Right now, I'm working on my startup full time. Miro, for people like me which are not from US, FANG is not an option, and I don't want it to be. Okay. So the only thing that leaves is to create own business and sustain myself with the skills like this. So in job market is dead, and also people which are getting hired are paid less and are doing more. I somehow agree with you, Miro. See, even I am in a country where like FANG-based companies hire. Firstly, they're going to hire from US. Then after that, they're going to think about engineers from out of US, right? Yuvila, your LinkedIn. I am not available on. I am not active on LinkedIn. I'm active on Twitter. My Twitter link in the description of the stream. Vishal, hey Abhishek, what's up? Today I learned JSX component props, rendering lists and keys. That's great, man. Nice. Now maybe you can build a project where you use a third-party API and then you pull data in that API and show it in your front end. Attack. So as you're learning system design and specifically in Express, which even learned in it that's itself, could you please guide me further? Okay. So if you already know Express, then start building APIs. Pick one thing at a time. First, learn about caching, rate limiting, then build a project and implement those things in your project. अमित, फुल स्टैक फुल स्टैक का कोई प्रोजेक्ट बता दो मैं जिसमें बनाना सब कवर हो जाएगा, अच्छा भी हो. If you want to cover everything, build a Google Meet clone. There you will understand Socket.io. There you will understand CRUD APIs. There you will understand real-time communication. There you will understand caching, rate limiting. There you will understand a lot of complex things. You can go with build a Google Meet clone. Vishal, Abhishek, I am also preparing for GATE full time. Guide any tips? See, GATE, yeah, go for it, man. Focus on GATE. And see, for GATE exams, it's better to take some course. If I'm not like, see, if I were in your place, if I were going for GATE exam, I would be taking a course because it would give me a structured way. Okay. Ailu, hello Ailu, welcome to the stream. My primary language and tech stack are both cancelled. Just a sec. ILU. My primary language and tech stack are both centered around Python. Should I explore other tech stack or focus on mastering ecosystem around Python? I would suggest you master the ecosystem around Python, because there's no point of learning 10 different things. You will understand more if you learn one thing properly. So if I were in your place, I would be sticking to Python and learning the Python ecosystem. Uh, Sagar. Bro, in core branches related to system engineering, they have job description asking for skills ranging from cloud engineering, AI, ML engineering, embedded systems. 5 years, this was not the case. Yeah, this was not the case few years ago. And see, right now, most of the companies are just doing random things. Like, I don't know what is wrong. Like, they're expecting freshers to have an experience of 5 years. Like, right now, the competition is so high in off campus. I have seen job description where they mention that a fresher is expected to have so much complex knowledge that maybe after 5 year experience, you will gain those knowledge. Right. Okay, MacDon. Abhishek, who is your worst enemy? My worst enemy would be my own mind, I would say. Rahul, they asked me another question. How will you design a notification system that can send millions of notifications at the same time? We are actually building this in this particular project only. Okay, Amit. भाई जब आप बड़े यूट्यूबर बन जाओगे तो हमें भूलोगे तो नहीं. No bro, like why would I forget anyone? Sagar, I was in the same role and got laid off. Okay. Macdon, I knew it. Okay, Macdon. Nice. So here we have this docker compose up dash d posts. Okay. So we have this docker compose ps. We have this. Okay. So now if I go here, docker
docker logs dash f backend 1. We have the logs. And now if I open requestly to check this API, go to requestly. Okay. Yes, so my worst enemy is my own. That's always goated one. Okay. Okay. Requestly is also taking time. Which language is used in requestly? JavaScript. That is why requestly is so slow. Okay. Okay. Yashwant, is Geeks for Geeks useful? Yes, Geeks for Geeks articles are quite useful. I learned mostly from Geeks for Geeks online articles. Okay. Kratika. Hello Kratika OG, welcome to the stream. By late night भूख लगती है तो क्या खाते हो? Fruits. If you have seen my older streams, whenever I'm hungry at night, I eat fruits. Okay. Like whenever I hear this word fruit, when I was in college, I'll tell you one funny story. When I was in college in first year, like I was a fresher in first year college student, and I made a small friend group, and like there was me, there was one more guy, and there was another guy. I will not say the name, and he was quite innocent. Like see, I and my friend, we were not so innocent. Like we used to make fun and all those things, but that guy was very innocent, and like he was kind of a cow. You can say a cow, right? Innocent as a cow. Okay, so like normally when you go out as a like, just a sec, guys. Just I'm getting a call. Hold on. Just a sec. All right. Yeah, guys, I was getting a call. Sorry for the inconvenience. Okay. Vishal, bro, there was a tragic accident right outside my room. Two bike collided, and I saw the aftermath on the road. Since then, I've been feeling scared about riding. Damn, bro, that must be a disturbing experience, man. Okay. Yeah. So, what was I saying? Can somebody remind me in the chat what I was yapping about? Can someone remind me? Okay. We go here. Okay. Oh, yes, one story, innocent one. What happened? Yeah, yeah. See, so I was saying that when I was in college in first year, I had a friend. Like he was very innocent, and like whenever I hear this word, I think about that friend. Why? Because like we were out, we went to pub and all, and we were coming back from pub, and I and my friend, we were drunk, right? And when I was coming back from pub, that friend did not drink, and he was in first year, and he was like, no, no, these are bad things and all, and I completely understand that. And like we were so drunk, we just wanted to go back to our room and sleep, right?
But that guy, we were coming back, and he saw a shop, like a fruit shop, like somebody was selling a fruit, and we were so drunk, like we were so drunk, like we could not even stand. And that guy was waiting there, and he was like in a very funny accent. He was saying, "यार मुझे fruits लेने हैं." And me and my friend, we started laughing so hard. Like, you see, it's a when you are in first year, you have that innocence, right? And that guy, like, we were drunk as hell, and he was saying that, uh, यार मुझे fruits लेने हैं. Whenever I hear this word fruit, it triggers that thought in my head. Like he was saying so innocently to those two drunk guys that, यार मुझे fruits लेने हैं, and it means that, guys, I need to buy fruits. I need to buy fruits, and like it was such a funny thing that I cannot even explain it. Like, yeah, like we were drunk as hell, and he was saying that, यार मुझे fruits लेने हैं. So yeah, that is a funny story back in college. Okay. Okay. Yes, one. It is like whatever the I do to my body, I'll repair it at the end. Yeah. So yeah, that guy was very innocent. But later on, he also changed and he became like us only. So we were, I think, bad influence on him. Yeah. So according to this, if you go and see .env.sample in login, we should not send more than 10 requests in under 15 minutes. So if we send request here, we have this test user one, two, three. Too many requests. Okay, this is global rate limiter issue. Okay. So for this, for global rate limiting, how much should I keep for global rate limiting? Hold on. Global rate limiting 15 to request. Maybe make it 1000. Okay. In 15 minutes. Okay. So we are doing this. And if I go here, we have this. Okay. Partial, instead of him changing you, you change that guy into. Yeah, that is what happened. That is what happened. Okay. Docker ps. We got this. And we have Redis stack, right? So if I go to my notes, development, notes, we have this one. Okay. Vatsal, वो old theme अच्छी थी. Yeah, Vatsal, like we can go back to it, but let's try this new theme for a few days. Then once we get bored with this theme, then again we'll change. We do this. Okay. So Docker compose down, Docker compose build. Fine. Then here we have Docker compose up dash d, Docker compose ps. Okay, this is healthy. All right, and now if I do this, 1, 2, 3, rate limit exceeded. Hold on. Hold on. And this rate limit exist. This we are getting from, why we are getting from 3. Okay, we changed it to the sample. Hold on, guys. If I go here also I need to make it 1000. Close this. Yeah. So now if I do this again, fine. CLS Docker compose down, CLS Docker compose build. Fine. Kratika, भाई आपके कॉलेज कौन सा था? Was there good coding culture? In my college there was absolutely zero coding culture. My college was Sikkim Manipal Institute of Technology, and if anybody from Sikkim Manipal faculty is listening to me, I don't need any defamation cases. Docker compose build up dash d. We get this. Hello Randy, welcome back to the stream. What's up?
McDonald, bro, is literally the Asian. No matter whatever you do, there's a Asian somewhere better. Yeah, yeah, bro. I agree. I agree. Okay. Welcome back to Brandy. Lol. Yeah, man. See, that's true. Vishal, bhai, आपने JEE का prep नहीं किया? No, I did not prepare for JEE because when I was in school, my goal was not to become a software engineer. I wanted to get it. I wanted to become a physicist. I wanted to get into physics. I wanted to do BSc, MSc, and then PhD in physics. But somehow I could not do it. Docker compose updash dash d. Docker compose ps. We got this. Fine. CLS. We have this. And now if I do this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now we should get an error. 16, 17. Why are we not getting the... We are not getting that. Okay. So what does that mean? It means that rate limiting is not working. Okay. Flawless Nitin, welcome to stream. Flawless Nitin, what's up? Today we are working on login rate limiting. Like today we are going to complete the entire identity module so that we can start with the customer module. Okay. आपकी DSC कैसी है? लीड कोड प्रोफाइल मिलेगी? I did not do lead code. I solved only 40 questions from Geeks for Geeks, I guess. Okay. यशवंत, जमीन आसमान का फर्क is profession. Yeah, bro. That's the thing. Okay. So we got this here. Rate limited middleware dot register. Login. I am rate limited middleware. So if I go here, Docker presentation middleware identity rate limiter. We have this. Hold on. So this is happening. Okay. Why is this not working? Create a rate limiter, a rate limit service, policies, login, and we are passing this. If I go to rate limit service, infrastructure, security, rate limit service, we are using this. Okay, hold on. So if we go here, okay, okay. Bro did lead code 2 hard problem. That's nice, BGM only. Welcome to stream. McDonald. At least there wasn't AI at that time. Bro did his own terms. Yeah, bro. Yeah, man. Okay. I'm going to sleep, guys. Bye. Bye, Vinay. Flawless. I'm going to... Bye, Flawless Nathan. Take care, bro. We go here. One change I recommend for verify email. We have this. Why is this not working? I am middleware. Okay. Resolve. We are doing this. Then an identity, we're having that. We're resolving it. Okay. Okay. Then we have this middleware. Then after that, register singleton, our middleware. BGM only. What flaws you see in existing food delivery apps? What flaws do I see in existing food delivery apps? Good question. To be honest, I don't see any flaw because I order the food, I get the food, and I can see the driver location. I don't see any flaw. Okay, we'll learn from you. Okay. Oh, we have this instructor. We are having this part. Okay.
Create middleware, identity login, rate limit service, inject, run rate limit service, okay. Private read only, we get this. We have this, okay. Satyam, yo boy, what's up? Hello Satyam, welcome back to the stream, brother. How are you? I'm good, man. See, right now we are trying to implement endpoint specific rate limiters. And also, today our goal is to complete the identity module. Okay, BJ, you're creating a food delivery app, right? Or no? Yes, we are building a food delivery application. And this is for the learning purpose only, MacDon. Bro, what would you rate Postman and Yak respectively out of 10? -5. I would give -5 to Postman because it bugs a lot, man. And the new updates are so pathetic in Postman. I seriously did not like the new updates in Postman. Okay. And in Yak, there's a cookie issue. Like they need to fix the cookie jar. Giri Shankar, thank you for the gifts, Giri Shankar. Thanks for the mango lassi, man. Thanks for the gifts, MacDon. And what about Yak? Yak, they need to fix the cookie jar. Okay. Yes, but I feel like getting manipulated with the order place time because of the delay at the restaurant or the hotel. Like if I play 8:30 shows, 8:45, like kinda. Okay. Then maybe they're doing it deliberately from the business perspective. Satya, meanwhile, Postman paying 40 LPA to their engineers. Nice. I don't know what they're doing. It's Amit. Bro, I need advice for me. I'm trying to learn DSA. Okay. If you're learning DSA, I would suggest that don't directly jump into solving question. Your first thing should be pick one data structure. For example, if you're trying to learn about arrays, then learn an algorithm like two pointer. Then first understand two pointer and then solve questions related to two pointer approach. Right. Then after that, when you solve the question, then understand that what hint that that question give you. Just a sec, guys. I'm getting a call. Hold on. Just a sec, guys. Okay. So what was I saying? Subhajit, can you give me a short brief of the module? Yeah, see, identity module is basically, you know, in our food delivery application, who are the main users or, you know, like people who are contributing to this food delivery application. We have a customer, we have a driver, we have a restaurant owner, right? These are the three main identities, and maybe we have an admin, right? These are the four identities, and these four identities to handle these four identities. First, we have a identity module, and in that identity module, we handle the login, register, reset password, refresh token, verify email of these identities. Then, for particular specific identity like customer, we are going to create another customer module. Then we are going to have restaurant module. Then we are going to have the order module, like that. Okay, okay. Yeah, Postman is comparable to Mang. Okay, MacDon. Okay. BJMI, want same discipline as you, bro. Give few tips to stay disciplined and consistent. See, BJMI, if you want to become consistent, you have to make a promise to yourself. See, I see it in such a way that you become a man of your words. For example, if you tell yourself that from tomorrow I'm going to at least sit and give 2 hours to my project, then no matter what happens, I'm not going to sleep unless until I give my 2 hours to that project. Like this, you slowly build your mindset, right? When you start seeing yourself as a man who keeps his word, then obviously consistency becomes natural. Okay, it's Amit. I'm doing the same, but a random question totally destroy my confidence. Yeah, that's a very bad way of doing DSA. First, don't solve DSA question randomly. Okay, Vishal. Abhishek, I have an idea for a college food delivery or Blabble app. What do you think about the idea? What is Blabla app? Can you explain, Vishal?
Sahas Rai. Hello, Sahas Rai. Welcome to the stream. What's your core tech stack? Are you using Pern Stack? Satyam, bro, are you never going to masters? To do masters, I'm not asking for the sake of job, but for yourself regardless of the outcome. See, right now I want to build my startup, and once the startup start generating revenue, then maybe maybe in future I would do masters, or maybe I would get a PhD. Who knows? But right now my goal is to build my own startup. Okay, Jasmeet, bro, can you suggest me a good laptop for AIML and little bit gaming? Asus Predator is a very good option. Dell G3 is a very good option. Then you can go for what else? Predator is a very good option. Okay. Macdon, bro, when will you review my project? Drop the link in the Discord. I'll review it. What's your thought on agentic SaaS? Agentic SaaS, yes, it's a booming thing, and agentic SaaS people are building a lot. Okay. But it should solve a actually painful problem. See, you should not build something just because you are integrating AI into this. You need to build something first. You need to identify a problem and understand that is that problem actually important to solve. Okay. Mohammad Mehtab Ali, welcome to Mohammad Mehtab Ali. What's the startup related to what you're building? I'm trying to build a startup that allows business owners understand what happens when a visitor comes to the landing page and why that visitor is not getting converted to customer. Okay, Satyam, suppose you are doing masters right now and have substantial money. Would you do it in India or abroad? If I have money, I'll go abroad. Okay. Rogue. Yeah, Rogue is also good. Victus, okay. Vishal, I'm thinking to build blah blah app. What do you think? What is blah blah app? Can you explain? We have this. The constructor. We are doing this. Right. Fine. Okay. Mm-hmm. Okay. We have this. Okay. Request handler. Fine. Of request handler. Okay. Injectable service. Okay. This is done. Then we have rate limit service, infrastructure token, rate limit service, infrastructure. Oh, great idea, man. Did you start? Yes, I have already started working on the product. BGMI. Can we contribute to your project like open source? I mean, like I will be starting an open source project soon. Then you can contribute. Theme name VS Code. It is not VS Code. It's their editor, and I'm using a theme called Carbon Fox. Okay, Sas, what's your live stream timing? I usually start by 9:30, 9 or 10. After having dinner, like I start by 9:30 at max. Vishal, it's an online app for ride sharing. Okay. सत्यम भाई आजकल कंटेंट पे नाम पे कुछ भी चलने लगा है पीपल आर लेजर शेयरिंग गॉसिप्स ऑन सोशल मीडिया एंड गेनिंग फॉलोअर्स हैपनिंग और हम यहाँ डीएसएस में घी घिस रहे हैं सी या सी दोस काइंड ऑफ कंटेंट आई वुड कंसिडर ब्रेन रॉट कंटेंट राइट and see the bun 1.5 is the best. Yeah, I need to check out bun 1.5 1.4. Yes, infrastructure token, infrastructure infrastructure token. We have this rate limit service, infrastructure rate limit service, request context service, fine, email job processor, email service, and we are having this, okay? Then after this, we have this thing, okay? Store, Redis store. Then here we are doing this, okay.
Now if I go inside security, rate limit service, here we have Satyam. Yeah, but like it's kind of quick money. Why effort to reward ratio तो मतलब मजाक है. Yeah, man, it's an unfair world. What can we say? We go here, rate limit service. We have rate limit service here. We have the rate limit policy. We have this class. We have Redis client. We have this Redis store. Fine. We have this Redis store. Then we have the constructor. Inject Redis client. Private read only Redis. This dot Redis. Hold on. We are calling it store. Okay. New Redis store. Send command. This. We are doing this. Okay. Fine. We are doing this. Return rate limit. Window. Okay. Rate limit policy. Yes. Then we have policy dot window ms policy dot max. Standard headers true. Legacy headers false. Then we have store this dot redis store. Okay, that is fine. Then key generator request IP or unknown. Okay, identifier. We have the message. Correct. Okay. Then here we have code. We are having this. Fine. Then after this, we are having 3 minutes. Okay. Satyam, bhai, in sub ka final boss. Yeah, bro, I have heard about that. Proth Boy Barua. Hello, Prothoy. Welcome to the stream. Hello, brother. I'm an undergrad student in CSE, and I can manage my development and problem solving. How can I manage my development? See, if you want to do problem solving and development side by side, you need to manage the time. Maybe in your daytime for 1 or 2 hours, you can do develop. You can do DSA. You can solve 1 or 2 DSA questions. Then rest of the day do development, build projects. Having this. Okay. Rate limit service. Fine. So if I go here, we're having the issue there. Okay. This is my code. This is my code. First, close this, close this, close this, close this, and close this. And here I'm going to collapse all. And here we have backend src, backend src app. Here we have app.ts. This is my app.ts. Okay. Then we have infrastructure. We have security. Here we have rate limit. Here we have rate limit.ts. Okay, we got this. Then here we have rate limit. Then here we have security.ts. This is my security.ts. Fine with my security.ts. Okay. Ball 3Y1. Welcome to stream. Are you working for a company right now? No, I was working in a service-based company. I left my job 6 months ago. Right now I'm trying to build my own startup. Yashwant wrote a code in C++ and tried understanding the logic using GPT and felt to use pen paper. Damn, I spent 30 minutes, but I have no regret cause the end I understood better. That's nice, Yashwant. Not so good. Welcome stream, not so good. But yeah, already completed Spring Boot and done 2 projects using that. But is that helpful to get a job in this AI era? See, as to be honest, if you're a fresher,
The only drawback with Spring Boot is that after you complete your BTech, if you don't have an experience, it gets really difficult to get a job as a Spring Boot developer. Whereas if you work with any other tech stack like Mernstack, Pernstack, or Java-based or Python-based tech stack, then you can easily get a job into a well-funded startup, right? So that's why if you're a fresher, I would not recommend you to go with Java Spring Boot. If you want it, if you really like it, stick with it. But before you complete your BTech, try to do at least 2 internships in Spring Boot. Then it will help you. Okay, we have this security done. Okay, then we have infrastructure. We have container. We have tokens. This is my infrastructure.token. Infrastructure.tokens.ts. Fine. We have this. And before that, this is my main.ts. I should also give my main.ts. This is my main.ts. Fine. This is my bootstrap. Okay. This is my bootstrap.ts. We have this. This is bootstrap done. This part we have app. All of these are here. Okay, we don't need this. Close this. Infrastructure, infra token done. Then we have modules. Infrastructure.ts. This is my Steam user. How to find internship remote on X? See, actually getting a remote internship, it's not just about posting in public and all. See, build in public is important. What you need to do is you need to build projects. You need to post on projects every single day. You can post on Twitter about your projects every single day. Then you need to build your feed. Like, what do I mean by build my feed? You can go, if you see my Twitter feed here, if you can see my Twitter feed here, here you will, like, see these kind of things, like what people are building. Build a small student like something like this. For example, if you can go into this build in public kind of thing, here you will find lots of people who are trying to build something. Then maybe you can try to look into their product. Then you can try to contact them, and you can tell them that these are my skills and these are my projects and this is my GitHub repository, and I can contribute to your product like this. And but before you do this, make sure you build in public in Twitter, post about your projects, build a good GitHub repository, build good projects, deploy those projects, right? And be very proficient with the skills. Only then start contacting startup founders on Twitter. Okay, Vishal, bro, how difficult to land a job as a Stack developer? What approach would you recommend or getting a job? As I said, go to Twitter, post about your projects every single day, build a strong resume, and start approaching startup founders. We have done this as const. This is my infrastructure.ts. We get this. This is my identity.ts. This is my identity.ts. We get this. Fine. Then this is done. Then this is done. Then we have security. We have rate limit service. This is my rate limit dot service dot ts. This is my rate limit service, and this is my config, rate limit config. This is my rate limit dot config dot ts. This is my rate limit config. Fine. We have this service. We have this security. Then we have rate limit service. Yeah, we have the rate limit service here. Then we have modules, identity, presentation, middleware. This is my identity dot
dash identity dash rate limit dot middleware dot ts. We get this. Fine. We get this here. Okay. Adonis, hey bro, how are you doing? Hello Adonis, welcome back to the stream. I'm doing fine, brother. What's up? Not so good. I really love to code in Java, but to be honest, I hate to code in Python. But recently, I was watching some videos on Python. Currently, in my final year, preparing for Cognizant on campus. Give some tips. See, Cognizant is a service-based company. If Cognizant is coming for on-campus placements, right? Then first you need to work on your aptitude. Do a little bit of DSA, arrays and strings. Focus on that. Then learn about your college subjects like DBMS, operating system. These are very important subjects. Okay, does views matter for build in public? Actually, you should not focus on views if you are building in public. Just post, just be consistent with your posts and post about like try to write a detailed post what you are building and how you are building it. Hamid, hello Hamid, welcome back to the stream. Hey brother, for a professional React-based e-commerce site in 2026, should I use Express, Nest.js, or Laravel and 80% PHP? But site speed, performance are my top priorities. Okay, if you want to go with see Laravel is good, but the problem is that PHP ecosystem is kind of reducing. So maybe you can go with Nest.js or I will suggest that if you're a beginner, go with Express.js because Express.js is quite modular. It is unopinionated, and it gives you a very it gives you a freedom to write the code or write the project structure on your own. And if you want more opinionated framework, then go with Nest.js. Okay. Vishal, bro, I am finding difficulty to land a job as a fresher. I have some MERN projects, but not sure what approach to take. See, if you see, it's not about just the projects. You need to understand what kind of projects you are building because see in off campus competition is very high. In off campus companies don't come to you, you go to the companies. So if you are going to a company, you need to prove yourself, you need to prove it to them that you can actually build end-to-end good products. So your project should actually look like end-to-end products. Then you need to build in public, you need to get credibility online, you need to maintain a good GitHub repository, you need to deploy those projects, you need to put that deploy link in your resume, you need to build good ATS friendly resume. Right. You need to do these kind of things. Okay, Adonis. Hey, bro. As you know, I'm a second year. I've got an offer from a startup for a lead and full stack. They gave me 1 day to decide. Now they're ghosting me. This can be my first internship. Okay, if they're ghosting you, then maybe give them for 1 week. Then again try to contact them after a week because before making a final decision, at least startups do take 1 week. So wait for 1 week. Rate limit middleware. We got this. Then this is my identity dot route dot ts route. Where is my route? I am. This is my dot env. I'll give my dot env dot sample. Where is my sample env dot sample? I am testing this endpoint requestly. More I am not getting the rate login rate limit error. Okay, but before we do this, let me just check it one more time. CLS uh, CLS docker compose down. Fine. I have this CLS that docker compose ps docker compose build. We have the build process. We got the build process. Then here we have docker compose
up dash d. Then here we have docker compose ps. Ps, it is healthy now. And if I go here, we get this. And now if I do this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We're not getting this. Okay, so if I go here, login rate limit window 15 and 10. Okay. All right. So here we are. I can see that I'm not getting the rate limit error even after 15 requests. Let me see. Oh, we added this. That is why. This means that in your rate limit service, this means the server login requests are not counted towards the rate limit. If you are sending 15. Okay. Okay. Yeah, it was my bad. So here if I go and if we go to the service, rate limit service, where is it? Config, security, rate limit service, and here if I do skip successful request to false, but in production it should be true. We do this, right? We have done this. Now let's try this again. CLS, do this again. Fine. Anjita, I think you are doing so wrong. What do you mean, Anjita? Bro, what time do you sleep? I sleep nowadays. I'm sleeping quite early by 2:30 or 3 a.m. Docker compose build compose down docker compose build. Fine, we are building it. Docker. Yashwant, rate my quote. Somewhere between the known and the unknown, there always lives a fool who has nothing to lose on the path to destiny. Damn, bro, that's deep. That's deep. Nice. Docker compose up dash d. Docker compose ps. PS healthy. Okay. Here we have logs. Now if I do this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah, we got the issue. After 10 requests, we got the rate limit issue. So this is working. So this is working absolutely fine. Right, so this part we have done. So here we should actually keep this true only, because in production it should be true. Why? Because successful request does not contribute towards rate limit issue. Only if a wrong password, we are setting wrong password all the time, then the rate limit counter should work, right? So for this we can go here, CLS. Also let me try it one more time. Docker compose down, docker compose ps, docker compose build. Oh, thanks, man. Welcome, Yashwant. Docker compose ps, docker compose ps,
build docker compose up dash d docker compose ps healthy. Okay, logs. And if we do this now, let's try with the wrong password or wrong email. Fine. Or let's try with the wrong password only. Let's try with the wrong password. And we send this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah, this is working. So we have implemented the rate limiting, endpoint specific rate limiter. Okay. Sam Biswas, camera. I'm Ami Bhalo. Sam Biswas, welcome to the stream. Not so good. In TCS on campus, I was unable to solve both coding question. Give some tips to solve both questions for the Cognizant exam. Where to practice those? Uh, like first, tell me in TCS what was the level of the DSA question? Can you answer that? Not so good. We have done this one, right? So after this, I can say that we have officially completed the identity module format strike through. We have this shared infrastructure identity module. We have officially completed this format, highlight, and make this format strike through. Now we have to start with the customer module, right? All right. Okay. So here I can close all. Here I can collapse all. And after this, I'm going to customer module. So now we are going to start with the next phase of this project, which is the customer module, right? So in this, we're going to work with the profile, avatar preferences, then the restaurant module. Okay, fine. Sam Biswas, I'm working on marketing materials for my SaaS. We went for a client meet today. Oh, that's nice, Sam Biswas. Nice. Not so good. But both the question was in story format, not direct quick sort. Yeah, see, DSA question, they will never ever give you direct problem that implement quick sort. No, you have to read the question into, that is why I always say, na, whenever you're solving the DSA question, whenever read the question, understand why, what hint you are getting from that question that tells you that you need to implement sorting, right? We go here, customer module, right? So highlight this format, highlight, not this. Make this highlight format and highlight. Okay, so now I'm going to start a fresh chat, brand new chat. Fine, we go here, and what I'll do is we go here, food delivery system, we go here, sorry, pattern, we go here. Fine. Okay, then after this we have phase 1. In phase 1 I have completed phase 1.2, phase 1 I have completed these. I have completed the foundation, these. Okay, and also here we have implemented helmet format strike through, rate limiting format strike through, course format strike through, security middlewares done, format strike through, validation pipeline done, format strike through, dependency injection done, format strike through, correlation IDs we have done, format strike through, global error handling we have done, format strike through,
Request context we have done. Format, strike through. What else? Middleware pipeline we have done. Yes. Format, strike through. This compression we don't need right now. Error handling framework, configuration, format, strike through, middleware pipeline, format, strike through, error handling framework, format, strike through. Okay, what does your SaaS do? It helps a business owner understand why a visitor is not getting converted to a customer. Format, strike through, fine. So here I can say that we have done these two things. Mega Ranveer Singh, thank you for subscribing to this channel. Welcome to the stream. Go here, just a sec. I think this is better. Fine. Yeah. Then this we have done. If I go here, phase 1 completed. Then I have also done phase 1. Copy this. Copy this. Also here we have implemented format, strike through, login we have done, format, strike through, logout, done, format, strike through, refresh, token, format, strike through, change password, format, strike through, forgot password. This we have done, reset password, format, strike through, email verification, format, strike through, role-based access control we have done, format and strike through. Okay, and we have learned these things. Okay, Pixel, hello Pixel, welcome to the stream. I have started machine learning. That's great, Pixel. Nice, man. Fine. So this we have done. Format, strike through, authentication, format, strike through, a module, format, strike through. This we have done. Password hashing we have done. Okay. Giri, thanks for the gifts, man. Thank you so much, Giri. Thanks for the gifts. Thanks for the samosa. Thanks for the gifts, man. Format, strike through. Yashwant, work went well today. I feel on your side. Okay, nice. Yeah, today we have completed the identity module and now we are going to create the implementation plan. And guys, you always wanted to know how I create the implementation plan. So if you guys are interested how I build the implementation plan, now you can focus. So now I'll show you how I create the implementation plan for my projects. Strike through, format, strike through, session management, format, strike through. Okay, so we have this. So now I can copy this from here. 1.2 and 1.1. We have done till here. We go here. Now we will implement close this customer module. Fine. Create. Okay. Explorer. Hello Explorer, welcome to stream. Have you ever thought of making a chat GPT clone? I have actually built a chat GPT clone. If you go to my repository, I have built a clone few years ago when GPT initially came out. In 2024, 2023 I built. If you go and see GPT, like it's a simple GPT clone. Yeah, this one. Full stack chat GPT clone with OpenAI API. I've already built this. You can check out this project. Okay.
MacDon, Abhishek आज फॉर्म में है. Welcome, thanks, MacDon. Okay, so I have already built this project. You can check out the repository here. I have built a simple full stack GPT clone. Okay, we have this domain validation. We have so domain validation. We have okay. Now you need to create a okay. Fine 1.4. This was the implementation plan for 1.3. 1.3 implementation plan, identity module. Fine. We have this. Saish, how to get your first job or internship? Okay, so first let me tell you how to get a first internship. When you go for internship, see, before you try to go for internship, first you need to be good at one thing, that is fundamentals. Maybe you can learn one programming language like JavaScript. I will suggest you go with JavaScript or Python. I got my first internship with Python, but you can go with JavaScript as well. Learn the fundamentals of that language, then pick one tech stack and learn the basics of that tech stack, like basic tech stack. Like for example, if you have gone with JavaScript, you can learn basics of Merge stack or Pern stack. Then build one or two good projects, like simple credit application project, like a blog, e-commerce, then deploy those projects and then build in public on Twitter. Build in public on Twitter. This is very important. Then what you need to do, whatever projects you are building, post about your projects every single day. Then in your feed, like as I've shown earlier, in your Twitter feed, you are going to see lots of startup founders trying to post about their products. Then try to research about those products, try to research about those startup companies, then try to get the email of those startup founders, then email them that these are my skills, tell them how you can contribute to their product. But make sure you build in public from before, and you push your codes regularly on GitHub. You create a good resume, you build your projects properly, you deploy those projects, and then start up with startup founders, right? That is the first thing to get internships. See, why I'm telling you internships, go for startups, because startups actually need developers, and startups actually give internships. I have done 2 internships, and both of them were in startups only. So go for startups, and then for full-time job, if you're doing proper, if you're working nicely in those startups, then you can ask for APPO. If not, then for startups, if you already have worked in 1 or 2 internships, then after completing your graduation or BTech, same process, whatever you have learned, build projects. But once you have completed your graduation, your project level should increase. You just don't need to build simple APIs. You need to build end-to-end products. And similarly, when you build products, post about them every single day on Twitter, or deploy those projects and start approaching startups only, because startups actually are easier to reach, right? Then there will be some interview round, coding round, solve those rounds and get hired. Same when you approach a startup founder for full-time job role, you don't just need to send your resume and just tell that give me a job. No, you have to research about their product, and you need to make them see how you can contribute to that product. That is what matters. Okay, we have this. Fine, just a sec. Yeah, okay. Have this 1.3. We don't need this. What we need is above the rate limiting part. Go above, go above, go above, go above. Go up. Okay. So from here, really I go up. Okay. We have this and we have this. Fine. Put this here, right? Then we have this one. This is okay. I want you to create a detailed implementation plan for
phase 1.4. Okay. Then before I send this, this is my project structure. Okay. Okay, Sesh. Thanks, bro. Welcome, Sesh. Have this is my project structure. So for this project structure, if I go and I open this EZA terminal, go here and I copy this. And if I go here and inside backend, I open a new terminal. Okay, new terminal is opening. No, I don't need to open a Z editor. I need a terminal. We open this CLS, we paste this, we get the project structure. Right, we have the project structure. We have the project structure here. Copy this. And now if I go here, my project structure. Fine. We get this. Now we get the implementation plan for phase 1.4. Now we're going to get the implementation plan for phase 1.4. Right. So for this, I can create a new, just a sec. It is taking time to load. Okay. So here we have deliberately is smaller than identity, but architecture is important. The key thing I would change from typical CRUD implementation is I do not make customer second user aggregate. Own the person is for authentication. Customer owns customer specific profile. Okay, fine. It is loading. Let it load. All right, it is loading. Mm-hmm, 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 mm-hmm. It is, yeah, it is loaded. So here we can say that do not make customers again. Okay, additional. Okay, goal: build a production grade customer bounded context responsible for customer profile, customer preferences, customer domain validation, customer persistence, customer authorization, repository abstraction, aggregate value. Okay, that is fine. That is okay. What comes? What customer owns has what identity owns. This okay. Customer owns this. Fine. We have this. Okay, we have this. Our first name, last name, update profile. Okay, we have this. Okay, this is my schema dot prisma for this project. Schema dot prisma. Okay, fine. Okay, I recommend prisma model. Starting with one customer. Okay, inverse relation to user. Okay, so we need a customer. We need a customer table as well. So we need a customer table. Do we need that? Hold on. Give a full implementation plan for this. Okay, now it will give the updated one. Okay, customer module. Okay, domain driven design, for the mapping. Fine. Then here we need the customer owns this. It is loading. It is loading. So that is fine. Let it load. Okay. Anil. Hello, Anil. Welcome to the stream.
To get a job in a startup, what skills are required? First, to get a job in a startup, see, startup founders does not care. Like for example, a startup founder would not care about your degree, or you know like about what percentage you have scored. It only cares about your skill. So if you want to target startups, you have to build projects that actually look like product. So in to work in a startup, you need to have very good command over your skills. Whatever you mentioned in your resume, you make sure you truly know that properly. You have built good level projects, like actual good level projects, like you know project level should be like top notch. Like maybe you can build a full stack Google Meet clone video calling application, uh, end to end streaming into Netflix clone, something like that. Those kind of level I'm talking about. Then you need to learn how to showcase those projects online on public, like build in public, post about your projects on public, and then build a strong GitHub repository, build a strong resume, and all those things. Okay, so it is still loading. Fine. And front. Okay. Anil, career gap matters. In startup, career gap does not matter, but in some service-based companies, it can matter. See, career gap actually, it depends on company specific. Like it's quite subjective. Some companies might consider it. Might some companies don't give a shit about career gaps. Like most of the companies don't care about the career gap as long as you have the skills. Okay, so we have this implementation plan, food flow, existing and module, business schema. Okay. Then here we have the customer module. Then here we have customer module. Okay, domain driven design, entities, okay. Fine, architecture. Okay, this is my architecture. Fine, we have this customer on context. Fine, customer owns. Okay, then customer module should never modify these things. Database design should receive customer. This is my customer. Okay, okay, okay. Fine. Then we have the user relation. Okay. User ID unique because one user can have one customer. The database should enforce an invariant. Okay. One user can have multiple. Okay. Fine. By customer is not merged into user. I might not be tempted to add these. Don't. Okay. Fine. Okay. Identity authentication. Customer business profile. Restaurant. Fine. Customer aggregate. Okay. We have this. Customer aggregation invariants. Value object. First name value object. Zord. Okay, avatar endpoints, customer creation, presentation layer. Okay, so here we have step 15. Fine. So where are the steps? Do we have the steps? Okay. So these are the steps. Give a detailed step by step implementation plan. Okay. ओके डांग सोनी भाई सही में इंडियन के पास स्किल्स तो है skills are there but like most of the skills are not getting used to its highest potential. कर लेगा भाई तू काफी टाइम से देख रहा है. Okay, thanks, Dang Sony. Thanks, man. See, right now I'm trying to build my own startup, so that's what I'm trying to do. Okay, so it is loading. Fine. Dang Sony. Yup, keep it up, brother. Thank you, Dang Sony. Thanks a lot, man. Means a lot, brother. Thank you so much. Marketing is 100 better than building.
True. This is actually true. Marketing is 100 times harder than building. I completely agree to this tweet. No plan B. I'll make this shit happen. Okay, fine. We got the plan now. Phase one customer module, architecture boundary, 1.4.0. Step one, Prisma customer module. Fine, fine. Then we have customer domain value objects. Correct. First name objects. Objects. Okay, we have the value objects. So if I go here and we close this Prisma src, if I go inside identity, here we have domain. If I go into value objects, and for example, if we see this, what are value objects? Read only. Okay, value objects are basically these things. Create value objects. Okay, fine. So if I go here, we have these value objects, right? Yashwant, how you work over your social life? See, social life, right now, I am not spending too much time in my social life. Like, or maybe on weekends, I go grab a coffee with some friends. But I think I did this last month. Like this month, I did not meet my friends yet. So, see, my social life, I right now, I don't want to spend too much time in socializing because my entire energy is right now in building my startup. Okay, MacDon. Bro, why do people block me from the channel? I have no idea, bro. I have no idea. In my channel, you have been good only, MacDon. I don't know, man. I have this. First name value objects, last name value objects, phone value object. Okay. Then avatar URL value object, Cloudflare R2. Okay. Cloudflare R2 is free. Cloud is free up for a specific monthly limit, but it is not completely free. 10 GB per month. Yeah, then Cloudflare R2 is fine only. We can use Cloudflare R2 for storage for we can use AWS S3, but the problem with AWS S3 is that on stream I don't want to show AWS S3 because by mistake if I leak my AWS S3 key, then I will be billed a lot if somebody starts using my AWS S3 key. So on stream, if you have noticed, I don't show anything related to AWS because I'm quite um, you know skeptical in showing the AWS, because on stream if someday I leak any API key, then I'm doomed, right? So that's why I don't use AWS infrastructure on stream. But see, these things can be replaceable because we are writing code in such a way that if later on if we want to implement anything else apart from Cloudflare R2, for example, in future if you want to implement AWS S3, then you don't need to make any code changes. You just need to make some configuration changes and the code will work absolutely fine, right? So that's the way we are writing the code. Okay, all right, I get you. Yes, Yashwant. Okay, Vishal, what's your opinion on the recent student mental health suicide issue IIDs? Why do things students face much pressure there? See, the pressure can be a lot of because of a lot of reasons: peer pressure, parents from pressure, pressure from parents, pressure, peer pressure, and like after the main issue is that when somebody cracks IIT, they have sacrificed their entire 11 12 to studying only, and once they get into IIT, and in IIT also for last few years placements had not been at its best, right, in IIT also. So because of those reasons, students who worked so hard in 11 12, and when they get into IIT, students have this mindset that once I get into IIT, my life is sorted, right? But because of this job market in IIT also, if somebody is not able to crack the job, then how it can happen that they will feel that how will I show my face back to my home that I have cracked IIT and all my relatives were so happy and all those things. So it creates a mental pressure in the student's head. Maybe that is the reason.
I'm back down. For me, it's 2 months since I left the house completely. Damn, bro. I can understand MacDon. If you leak, then you can revoke and recreate later. Yeah, man, we can do that, but I don't want to handle those unnecessary issues. Shivam, what you build? Right now, we are trying to build. You're talking, Shivam, you're talking about my startup, or you're talking about my SaaS product, or you're talking about this advanced backend series product you're talking about. Okay, so here we can use R2. Okay, for customer preference value object. Don't let this happen. Okay, a value object customer preference. Okay, for example, we have this step 3. Fine. Then we have step 4, repository contract. Then we have step 5. We are going to add this Prisma mappers. Same thing. Same thing. This is now this entire code structure will make sense to you because we have written the code structure in such a way that each and every module are independent of each other, and with each and every module we are going to follow the same coding structure. Right now, what you are building, I'm trying to build the backend of a food delivery application using modular structure. And with the goal with this project is later on we want to learn about event driven architecture, and then we want to get into microservices. So this is Prisma repository. Okay, we have this. Then repository tests. That is okay. Test cases. Okay. Get profile. Okay. 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 We have this. Fine. Preferences. Okay. All right. So we can actually use this entire implementation plan. It is quite detailed and I love it. I love this implementation plan. We are going to stick with this implementation plan. Right. So we have 14-step implementation plan, and for this one, just a sec. What is CQRS? Not yet. Redis caching. Don't add caching. Fine. Okay. We have this one. Correct. And I can copy this. Just a sec. Okay, it is copied. And now if I go here, I can create phase 1.4 customer module. So here I can create a new note, phase 1.4 customer module, right? We have this customer module, and this entire step I can paste it here, and we are going to start with step 1, Prisma customer model. Okay, fine. This we are doing, and here I can paste the chat link here. Here, this is my chat link. This is my chat link. Fine. And you're going to start with this one. Format, highlight. Okay. Nayan Chaudhary, Obsidian, Mohammad Faizan Aziz. Hello, Mohammad Faizan Aziz. Thank you for subscribing to the channel. Welcome to the stream. Obsidian notes. See, once we complete this project, then I'll share the Obsidian notes because right now these notes are in my local computer, and these notes are changing every day. So even if I share these notes, you will not get the updated note. So once we complete this project, then I'll share these notes because Obsidian is storing the notes in my local computer. So that's why. Acha, okay. We get this. Okay. What about prep ones? See the entire. If you want the curriculum for this advanced backend system design series, like entire syllabus kind of thing, that I have shared my Discord server. The Discord server link in the description of the stream. And in my Discord server, you will find a resource channel, and inside the resource channel, in the pinned section, you will find a Notion template. You can use that. You will find all the curriculum there, and also the entire syllabus there. So you can follow that. We have this. And for this phase 1, we have this. I can close this. We have this phase 1. Okay.
phase 1, phase 1.4, and here I can put the chat link here as well. Just for safety, I'll push it here. And also, I'll link my phase 1.4 customer module. Fine. This has been linked successfully. And this is my entire Obsidian link. Damn, bro, it's becoming huge. So here we need phase 1. Put this here. Fine. We have done this. Okay. So the next thing would be to start with the customer module, right? So close this. Fine. So if I go here, step 1, customer module. Close this. Fine. We are here. We are here. Okay. We are here. And after this, customer module. Phase 1 customer module. Okay. So here if you see SRC modules, collapse all, backend SRC modules. Here we have identity. Now we have customer, right? So we have customer here. We are going to start this. Before that, I need to start write my schema Prisma. We need to make some changes. We have user. Now I also need a customer, right? So for this, I can create a new model as customer model, right? Just a sec. We have this model customer. Okay. So here we have ID of type string @ID default UUID and @db dot UUID. Fine. We have this. Then now if we see, here, we have this customer module, right? So before we proceed with this, here I need to create the ER diagram for this. ER diagram. Where is it? Yeah, here. So ER diagram, where is it? Where did I build the ER diagram for this? Yeah, this is my ER diagram. Fine. So here I'm going to have a customer module. Like I'm going to have a customer table, right? Inside this customer table, we have this customer, and this is my customer. Fine. So inside this customer, what are we having? We are having ID, user ID, yes, first name, last name, phone, avatar URL, then preferences, JSON. Okay, okay. Then we are creating a relationship and indexing the user ID and the mapping as customers. Okay, fine. Then here we need the customers. Why? Because this is a one-to-one relationship. Okay, one customer, one user can be one customer. Customer profile should not be shared by multiple users. Okay, that is okay, fine. So according to this, here we need the ID, user ID, first name, last name, phone, avatar URL, preferences. Okay, so here we need, here if we focus on this, here we need ID, UUID, and this is the primary key. And here we have user ID, which is a foreign key, UUID, and this is a foreign key. Then here we have first name of type string. Here we have last name of type string. Okay. Then we have avatar URL. Okay. This is of type string as well. Here we have phone number as string. Okay. Then after this, what we are going to store? Then after this, we are going to have
phone number, created at, date, updated at, date. Okay. So this, where is it? This user ID, as it is a foreign key, it is going to point out to this user, right? That this is a relationship, and this is a one-to-one relationship, right? So yeah, let's get started with this. So for that, we need ID. So here we need ID, then we need the user ID of type string, and here we have at the rate db dot uid. Then here we need first name of type string, and just a sec, if we check here, we have first name string map, and we are mapping it as first name. Then we have last name here of type string, and we are mapping it to last name. Okay, we have first name, last name, then we have phone number of type string, then we have avatar URL, and this can be optional, and this is of type string, and this can be optional because our user cannot add DP as well, right? And here we have avatar underscore URL. Fine. We have the avatar URL. Then we have created at, date, time, and by default we are going to say this as now, and this will be mapped as created at. Here we have updated at, date time at the rate default, and here I'm going to say at the rate updated at, and here I'm going to say map it to updated at. Fine, we have this. Then after updated at, what else? We need to create a relationship, right? So this relationship is going to go with user. Hold on. This relationship that we have, we are going to, yeah, user at the rate relation, and inside this we are using the fields option, and inside this table we are calling it a user ID, and it references to the ID inside this one. So this reference, see, if this fields means in this particular table we are calling it user ID, and this references mean in the referred table, like that is a user table, we are calling it ID. So that is why we are putting it this. And if a user is deleted, should a customer profile be deleted? That is the important decision. So if a customer is deleted, what we are doing it cascade. Okay, on delete. Okay, so on delete cascade, and on update cascade as well. Yes, on update cascade. Okay, this we have done, and now we can index it. Okay, just a sec. Index by user ID, and also we are calling it map. We are calling it customers. Fine, we got this. Then back inside the user table, here we are calling this customer. Okay, that's all. So here we have created, hold on, what is the issue? One-to-one must be unique fields. Either add an unique attribute to the field user ID. Okay, yeah, here it should be at the rate unique. Fine. Okay, Yash Saini. भैया backend या resource बता दो. For backend, if you want to learn core backend, you can learn the basics from Sriniyasli YouTube channel. There's a backend by first principle playlist that is very good. You can also learn from
Hayek Simonian YouTube channel. That will help you a lot. And if you are into Stack, you can learn basics of backend using Stack from Chai Code YouTube channel. Zlatan. Hello, Zlatan. Welcome to the stream. Do you work in Python? Yes, I do work in Python. Actually, on weekends, as a hobby project, I'm trying to build my own LLM using Python and PyTorch. So on weekends, I'm working with Python. We have this unique. Fine. This we have done. Okay. So this unique should actually come before. Go here and add this unique like this. Fine. This we have done. Customer, fine. One-to-one relationship. Okay. Then we have preferences as well. Hold on. Here we miss the preferences. Uh, Let me just add this. Here I can add this preferences of type JSON. Okay. And here we have user, avatar, and where are we keeping it? Hold on. Where are we keeping this? First phone avatar after preferences. And what is the spelling of preferences? Preferences. And we are storing it as a JSON and it is optional. Preferences JSON J capital. Fine. Okay. Okay, Yashwant. Man, just vibing with your stream. I studied for 3 hours nearly. Oh, that's nice, Yashwant. Bro, what is wheat? Wheat is basically a if you're talking about the core wheat is a React. Uh, you can call it as a React packager. You can call it as a React packager, where before Vite we had create React app, right. So whenever you wanted to initialize a React project, we were doing create React app. So now we are doing the same thing with Vite, but it is much more lightweight, and it is much faster to initialize a React project, and it is a basic packager for React. Okay. Zlatan, I work in Python course for. Okay, I have a lot of my own programs. Python is quite easy for beginners. Where are you from? I'm from West Bengal, India. And yeah, that's nice. Nice to know, Zlatan. Where are you from, bro? We have preferences here. Okay. So what I can do is if I go to my database, we have the database here. Serbia. Okay. Welcome to the stream, Zlatan. So it is loading. Okay. Here we need to make the migration because we added a new table here. Okay. Thank you. Welcome, Zlatan. Okay. So here we have this. Yashwant, how can I download Excalidraw? Actually, this Excalidraw, you can go to Google and Excalidraw desktop app download. Yeah, this one. Actually, this is a progressive web app. Uh, just a sec. When I was using Excalidraw, there was an arrow. I clicked on that arrow and it got downloaded as a official PWA. Just a sec. Hosted on Excalidraw desktop. Okay. Mac OS, Linux, git clone, cdr desktop, npm start. We can do it like this. Win. Okay, for building to create a production build. Maybe I can check this out later. Uh, in Excalidraw, there was this arrow function that I used. Okay. How you can download Excalidraw as a Docker image. Okay.
Zlatan, why don't you use Linux? Actually, I was using Linux in my previous laptop. I was using Ubuntu Linux, and I used it for 1 to 1.5 years. And I got this new laptop back last year in November, and till now Windows is not lagging. The day Windows starts lagging, I'll again switch to Linux. And right now I'm into a bit of gaming as well, so that's why I'm not shifting to Linux. When Windows starts sucking, I'll again move back to Linux. Okay, we have this one. Okay, close this. So here we have my Postgres. I can delete all of this. Fine. We have deleted this. I'll delete this and delete this as well. Right. So now if we see the database, we have few delivery DB, schemas, tables. Here we need a table. Okay. So now we need to migrate this. If we go here, we have created a new table, and here we can run npm run db generate. Okay. Zlatan, have you ever heard of Cache OS? Check it out and tell me what you think about it. Okay, sure. Just give me a few minutes. Npm run db migrate. We are migrating. Okay. So we have migrated. So if we have migrated successfully, and if I go to tables and I refresh it, we have the customers table, right? We got the customers table, correct? We have the customers table here. Very good. Fine. Cache OS. Now we can check about Cache OS. Let me see. Cache OS. Arch Linux. Okay. Performance based first Linux built on Arch. Okay. Ships. Okay. Nice. Docs. Getting started. Okay. Sudo pacman manipulation. Okay, it is built on top of Arch Linux. But why? Why is it built? Like, what problem does it solve? Okay, Zlatan, can you tell me like what problem does this operating system, like everything is built to solve a problem, right? So if we have Arch, then why this Cache OS is built? Like it is, like what problem is it is trying to solve? Okay, OS kernel configure gaming. Well, a guide for gaming and caching OS. This will guide you through everything you need to know to set up a system for gaming. First of all, understand not always possible. Like it is for building game, or we can actually play games inside this OS. Okay. What is Cache OS based on and used for? Foundation it uses same. Zlatan, it's very good. It doesn't use much processor. The RAM is minimal like Windows XP, and the mix is Win plus Windows. It's good for coding, and they say it's the best so far. So I wanted to hear your opinion. Okay. Uh, yeah, like the best thing is that, as you said, it is lightweight. Maybe we can check it out. Okay, high performance, yeah, and gaming. It is designed for user who want maximum system in gaming workloads. Okay, and can we play games based on okay gaming distro?
My turn scheduler. Okay. It is desktop use. High performance computing users choose to run snappy operating system that squeezes every drop of performance. Okay, it is quite it like Cache with if you have a low end system, you can use Cache as your main operating system. And if you have a high end PC or a laptop and you want your resources to be used in a most efficient manner, you can go with Cache. Okay. Mighty Raju. Hello, Mighty Raju. Welcome to stream. Bro, where did you live? I mean, which city? I'm from Kolkata. Parvez. Hello, Parvez. Garg, welcome to the stream. भाई प्लीज कोई टिप दे दो सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है फॉर सी लैंग्वेज C is the best language to learn as a fresher, like as a your first language. My first language was C++, but I would suggest if you are just learning to learn the fundamentals of programming language, then that is fine. But after C, quickly migrate to C++ because you should learn about object-oriented programming as well. Okay, Zlatan. Okay, thank you, man. Welcome, Zlatan. All right, so here we have done the migration. So if we have done the migration, this part we have done. Format, strike through, and format, remove the highlight. Okay. Then the next target would be to start preferences. Fine. We have preferences like this. Okay, Zlatan, I wish you and your family all the best. I have to go now. Thank you for everything. Oh, thank you, Zlatan. Thanks for joining the stream. I hope you enjoyed it. Okay. Okay. Download a good IDE and computer and start doing simple things. It's like common sense. Okay. Migration. We are doing this. Migration. Okay. Step one we have done. We have done this. Migration we have done. Fine. Step two, customer domain value objects. Okay. So we go here, format, highlight. Okay. So the next step would be to implement this. Customer domain entities. Fine. So if I go here, customer, I go here, Prisma, SRC modules. Where's customer? Here, first I'll create domain and entities, value objects, enum, errors, repository services. Okay. Here I need domain, entities, enum. Okay. Same thing. Here I need entities, value objects, entities. Then we need repositories, then we need the services, then we need the enums, then we need the errors as well. Fine. Okay. Please tell maths uses also in C. See, if you want to learn the basics of C, go to YouTube and search here C for beginners. C programming for beginners. Then you can just follow this 18-hour course. You will learn everything. Okay. So if I go here, entities, error repositories, enums. Okay. So here I have the errors as well. Find entities, enum, repository, services, value objects. Okay. That is fine. I don't need this, so I can delete this. Fine. The domain,
Okay, and we are doing this fine. And if I go here, and if I go here, and if I docker compose down, docker compose build. You did typos in repository. Let me check. Where? Stagnation. Identity, close this. Repositories. Where, man? Repositories. It is fine, but here also repositories. Yeah, it is fine, man. Stagnation, like it is, I think okay, yeah. Sorry. Stagnation, thank you so much. Thanks, man. There is an issue. Repositories. Yes, okay. We have done this. Yeah. Thank you, Stagnation. Thanks a lot for pointing it out. Okay, Guru. Okay, got it, Guru. Not I'm new here. Welcome to stream, Ayushtaki. Did you try to stream without headset? If yes, did you get echo? Yes, like if you wear headset a lot and you again remove the headset, your voice echoes a lot. Are you for real? Don't you see it? Yeah, like I missed it. But thank you, Stagnation. Thanks a lot. So if I go here, I can docker compose down plus docker compose build. Fine. Docker compose up dash d. We got this. Docker compose ps, yes. We are getting logs. And just to check one final thing, if I go here, updated, I'm able to hold on. I need to register first. Register a user, body, register. And now if I go and we see this, just a sec. If I go to, what is that called? Mail trap. Mail trap. We go here. And if we go here, and few seconds ago, we got this email right now. Okay, that is fine. This is working. And now if I try to log in again, user already yes, correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, too many requests, correct? Fine. So rate limiting is working absolutely fine. So that is okay. So this we have done, right? Okay, so this part we have done. This also we have done. Docker compose down. CLS. CLS. Exit. Okay, and now if we go close this and now we will implement step 2, first name 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Copy this. Give me the code. Fine. Stagnation. What app do you use to test the requests? I'm using Requestly. We are not using Postman because we were using Postman before, but now I have switched to Requestly because Postman is bugging a lot. Operating independent on Prisma Express. Okay.
So now we have to understand value objects, right? So fine, we have done this. Phase 1.4, we are here. Okay, fine. Okay, we are here. And here I can put the chat link here. Okay, we go here, presentation. We have this value objects, correct? Here we do work with the value objects, fine. Enums, errors, domain error base. See, error handling, we can do it on our own. First name error. Okay, we keep it like this. Like, let's see. We have the error, preference error. Okay, first name value object. The first name value object. Then we have the last name value object. Then we have phone value object. Then we have the avatar URL value object. Then we need customer preference. Okay, fine. Then we create an index, domain enums. Okay, domain index. Correct. Fine. Yeah, that is okay. We have this. All right. Yeah. So this is a chat link. Okay. Ashish, hello Ashish, welcome to the stream. Why am I seeing this series today so late? What do you mean? Like it came in your feed late or I started it? What do you mean, Ashish? And welcome to the stream. We have this. Okay, so value objects. Fine, we are getting this. Okay, go up. Came in my feed today on day 86. Okay. Yeah, and welcome to this channel, Ashish. You joined at day 86. That's fine. You can still follow along. Guru, happy that my daughter got placed in one of the biggest architectural companies only after 2 years of her 3 year course. She will now work and study at the same time along with good side. Oh, that's great. Congratulations to her, Guru, and congratulations to you as well. Congrats, man. We got this. Okay, so we have this chat link. This is my chat link. Not here. Hold on. Yeah, here. This is my chat link. Fine. We got this. Congrats, Guru. We got this. Okay. So we can start from this. Right. So here I can close. Here I can. Just a sec. I'm again having that OCD in my head that I want to check it again. That I save the chat link or not. I know I saved the chat link, but the OCD inside me tells me that I need to check it again. I'm a weird person, I have to say. Sometimes I feel that I'm very weird. 85E AC8. 85, yeah, I have saved it. So I can close this. I can close this. I can close this. And I can close this as well. I can close this. And the first thing is I need to push the code in the GitHub. Collapse all. cd dot dot. Okay. Exotic plays. Hello, exotic play. Welcome to the stream. Bye. Yeah, LinkedIn में post filter recent post not working. Do you have any solution? It's a glitch. LinkedIn में post filter recent post not working. Bro, I don't use LinkedIn much, so I don't have much idea about LinkedIn exotic plays. Yashwat, bye bro. See you tomorrow. Bye Yashwat, and thanks for joining the stream. Good night, bro. Guru, she did it on her own and gave us a good surprise. Her office is only 15 minutes drive from our home. Oh, that's amazing, man. Nice. Git branch, development branch.
And if I go to my GitHub, and now if I go to this repository, fine, I can, uh, yeah, that's fine. Can close this, yes. I can close this as well. Fine. And here inside my food delivery application, there we have the main branch. I'll go to development branch. And first I want to push the code git branch this git status git add git status git commit dash m, and here I'm going to say that uh, endpoint identity endpoints rate limit implemented rate limit implemented and Redis rate limit configured. Okay, then git push from origin to the development branch. Okay, so here we have pushed the code in the development branch and identity endpoints done. If I go here src, if I go inside modules identity and application presentation layer, and here we have middleware identity rate limiting. Okay, just a sec, what are we calling it? Identity rate limit. Okay, then after this, Guru, good lesson for everyone. Don't share plans, share outcomes. True, I agree with Guru. फैजान मोहम्मद, एंगुलर कैसे लगता है? एंगुलर, आई हैव वर्कड इन माय कंपनी, इन माय लास्ट कंपनी आई डिड वर्क विद एंगुलर अ बिट. एंगुलर is quite useful, like it you know, when you work with angular, it's a full-fledged front-end framework, right? So you have to follow some rules and regulations, and angular is, if a framework is structured, initially the learning curve is difficult, but later on you understand why those rules are important. So angular is a very good framework for front end. Okay, MacDon. I always have an OCD of drinking water before and when I'm one person thirsty. Okay, even I have that same thing, MacDon. Even I have that OCD. So if I go here, development branch, we have this, and also inside my config. Bro, can somebody tell me that why GitHub has become so slow recently? Like, serious, like frustratingly slow. Are GitHub developers vibe coding the new features? Maybe that's why. Rate limit config. Sarthak. Hello, Sarthak. Welcome to the stream. Bro, let me know what inspired you to build this startup, and have you thought about who will be your customer and any pricing ideas? Hello, Sarthak. Welcome to the stream. Actually, this current project that I'm building, it is not my startup. It is just for the learning purpose, and I'm working on my startup during my daytime. And the code repository for my startup is private, and the ideal customer is anyone who runs a business online. It can be anyone from a small plumber to all the way to a SaaS founder. Anyone who has an online presence of their business, they can use my SaaS. And basically it helps the business owner understand why a visitor is not getting converted to a customer. Basically it helps them to understand why they are losing customer and how they can reduce losing customer. Okay, MacDon, I would. You also have OCD of drinking. Yes, I have OCD of drinking water. Guru, it is not slow for Git commands. It is your internet connection. I do not get this error. Okay, but my internet connection, everything is working fine, but only GitHub is lagging. Here we have config, infrastructure, then we have security, then we have rate limit service. Fine, we have done this. All right.
So code has been pushed in the development branch. But guys, as we have completed the identity branch, now I'm going to merge this code to the main branch because we have implemented a feature. Okay, so now if I do get branch, get switch to the main branch, fine, get branch, get pull origin main, get merge development branch, fine, get push to origin main, fine, CLS. And now if we go and I will like to switch to the development branch again, development CLS. Okay, lead generation type. What do you mean lead generation type? Yeah, yeah, something like that. And also to understand the visitor behavior inside that SaaS. What is the upload speed? Download speed matters less. Upload speed, I think it is 29 Mbps. And upload, do song plays in a head while working? Yeah, bro, it does. Then if I go to the main branch, yes, and inside my main branch, as a Prisma, schema.prisma, user and customer, fine, has been pushed. Endpoints element, okay, and then development is also there. Okay, fine. It is working absolutely fine. Main branch, backend, and is my sample.env.sample, and here we have all of these things. Correct. So this is working fine. We have pushed the feature, and I can close this now. Exit. Fine. I can close this. And guys, I have pushed the code in the GitHub repository. You can find the code in the like the GitHub repository link in the description of this stream. You can find the code there, and in the main branch you will find the updated code. Right. So yeah, I can close this. Okay. Sarthak, bro, how many customers you have? Are you growing? What is the status? Right now, I have I have not built the product. The product is in the building state. We are working on it. Once we build the product, then I am going to market it. So right now we are in the building stage. Right now, Markdown. Except development, we have a lot of things in common. I agree. Guru, for a 20 minute streaming and GitHub performance is bad. Try to stop OBS and do the same thing. You will see the good response. Okay, Guru. I'll try that and let you know. Thanks, man. Thanks for the information. If two founders built the exact same product, one did everything manually, one used AI for 80% of it, who would you trust more? Interesting. Let's see. Transparency, if both products have same fees, same pricing, same security, but the one who used AI accepts that he used AI, I would appreciate it. True. Good point. A native one for sure. If the outcome is similar, knowing uh, I wouldn't care. Whoever has the better app and smooth experience will win. Mm-hmm. Okay. Nice. Your AI skills are just prompt in a markdown. Me after choosing GitHub over Instagram. Yeah, this is me every day. This is literally me every day. Madam, we both are unemployed too. I would not consider myself unemployed because I actually had a job. I left my job on my own, and right now I'm building my startup. So yeah, AI is creating two kinds of users: GUI users versus CLI users. Which one are you? Let's see. Both depending on need. GUI seems user friendly. Okay. Sarthak, bro, if you need any help with UI UX, do let me know. I would love to help. Sure, Sarthak, you can join my Discord server and you can DM me on Discord or on Instagram or on Twitter, or you can email me as well. I would like to stay in touch with you, Sarthak. You can find all my social links in the Discord in my description of the stream. Okay. Let's see, Cloudflare R2.
workers R2 view docs. I would like to know about Cloudflare R2. Object store for Cloudflare R2 allows developers to store large amounts of unstructured data without um, the costly bandwidth. Free. Okay, get started. Before you begin, you need to Cloudflare account with the an R2 subscription. If you do not have one, go to Cloudflare dashboard. There's no database R2 Cloudflare dashboard. Okay, if I go to my dashboard, I log into my dashboard and I hope no API keys are visible initially. Is there any API key? Anything here? No. Okay, I can share the screen. Fine. So this is my dashboard. Storage and databases. R2 object storage. Okay, 10 GB per month is free. Then it adds on the limits. Okay. MacDon, good night, bro. Good night, MacDon. Okay. Alpha Drone. Hello, Alpha Drone. Welcome to stream. Why Indians are not building websites like it has. Our first thing, I think, if we build something like that, we can actually build it, but will the government allow? That's the thing. Because in Indian government does not allow anything related to, what you know what I mean. Okay. Select the okay. Complete the checkout flow and R2 to your account. Okay. Now choose access work S3. Want to use S3 combine cloud flare R2 versus AWS S3. Is an S3 compatible with that elements egress fees entirely undercutting and bandwidth charges while R2 offers cheaper active storage free. Mm-hmm. Okay. Okay. Classes. In this project, we are going to use most probably we are going to use AWS like Cloudflare R2 for object storage. Okay. फैजान मोहम्मद भाई मुझे गाइडेंस चाहिए on understanding Angular project. I vibe code using Codex. I want to read code base. I want to know where to start. I have like app core, app shared. Okay. See if I were in your place and if I had no idea how to understand code base, what I would do first, I'll go to YouTube and watch one Angular playlist. I'll show you. If anybody is interested in Angular, there is this amazing Angular playlist that I used when I was learning Angular tutorial, and there you will find. Just a sec. Where's that guy? Where is it? There was a good playlist for Angular. I'm not getting it. Angular playlist. Where is it? I forget the name of the channel. Not this one. Which one? Where is it? There was a very good playlist. I'm not able to get it now. There was a playlist. I'll share you. I'll share it with you when I find it. Okay, but if I were in your place, I would first watch tutorials on Angular. Then I would try to, after watching the tutorial, then I would try to read the document. Then I would read the code base. Then maybe something will make sense, something will not make sense. Then whatever thing that does not make sense, I will take help from AI. I will tell AI to teach me. That's what I would do. Okay. Guru, India's strict terror government filter policies. Yep, I agree.
That's the reason why we cannot build something like that. We're building application that needs to. You want async SDK to interact with RTL application. You want to upload, download, or manage objects from your terminal. You want quickly view manage. Okay. So what I need is buckets overview. Buckets with object, all your objects are stored in the buckets. Bucket do not contain folder that group the individual files, but instead buckets have a flat structure which simplifies the way you access and retrieve the objects in a bucket. Okay, so learn, we have create new bucket, public buckets, deleting the bucket. Okay, so bucket is like S3 bucket only. And for each and every object, I think we are going to get create new bucket or public buckets, configure course. Fine, create new bucket. Faizan, thanks. Yeah, if I find the place, I'll drop in the Discord server. Ankit. Hello, Ankit. Welcome to the stream. What are your thoughts on system reliability role in Nordanix? Fresher, by the way, talking about on-campus placements. Go for it. Go for it, man. As a fresher, your first goal should be to get into the industry. And if it's related to your a little bit, even it's related to your interest a little bit, go for it. With R2 bug command. Local updates, configure course. Is higher methods to prevent domain X from on domain Y. If does so, okay, set a bucket to public. Our course is used to interact with a bucket from a web browser. Yeah, this is what I needed. So we need to figure course here. You have two options, set a bucket to public. This option makes your bucket accessible to the internet as read only, which means anyone can request and load objects from your bucket in their browser or anywhere. Pre-designed URL allows anyone to with the access. Yeah, this is what I need. I need pre-designed URLs. Okay, fine. Before you configure course, you have R2 bucket with that one object. Refer to domain you can access. Temporary access. Okay, fine. Then what is the return type when I upload something? Client R2 gateway worker. Client R2 gateway worker. Object data. Okay. What is the response return when I upload an image in Cloudflare R2 using my Express server? When you upload an image to cloud using AWS SDK v3, but from your Express server returns. Okay, just a sec. I have an Express backend server. Ankit, according to you, which is the most paying role in the industry right now? See, Ankit, the thing is, the role in the industry, high paying jobs changes every month. Right now, if the trend is towards forward deployed engineer, after a few months, the trend will go somewhere else, right? So it's not about which job is paying more or which, position is paying more. It's about no matter which position you are in. For example, if your goal is to become a full stack developer, if you are a good full stack developer, if you can actually build something for the company, then you will get paid more, right? So it's not I don't think you should make a decision you should not make a career decision based on which pays more right now, because trends change every month. I have an Express backend server and I want to
to upload an image from my backend to Cloudflare R2. Okay, clarity. Okay, your backend is use the image AWS SDK. Do we need the AWS SDK? But why? AWS client S3. S3 access key. S3 client access key R2 access key ID. Okay, R2 account ID endpoint. The storage. These people are paid in millions. Okay, an image with Multer. But I need to create AWS S3 bucket, and do I need AWS S3 key and all of that? No, you do not need to create AWS S3 bucket if you're using Cloudflare R2. Cloudflare R2 is a S3 compatible, which means you use the AWS S3 SDK to talk to R2, but the actual storage remains on Cloudflare. Oh, so I just need to install the AWS S3 client, and that using that client I'm going to communicate with my R2. Okay, R2 bucket, create an R2 API token, S3 credentials, get. Okay, so if I go here, here we have API S3 S3 compatibility. Yes. Okay, so according to this, access key Guru, right? It is 9 here in London. Time for dinner. Sure, Guru, have your dinner. This account ID, access key, bucket name. These things we need, right? Then SDK configuration. We pass all of this. S3 client from okay, but this does not mean you are using AWS S3 storage. S3 compatible. Okay, understood. Understood. Okay, so this is important. So to understand this, here if I go to Obsidian. Okay, bye Guru, bye. Thanks for joining the stream. Richie Rich, hello Richie Rich, welcome to the stream. Hi there, I am a second year student who has just dived into the world of coding. Could you suggest guide me on how to manage DSA projects and land a good internship? See, you are in second year right now. If you want to manage DSA and development, first pick one language for DSA. Either go with Java or C++. Then build a habit of solving one or two DSA questions every single day. And how you're going to do DSA is that don't directly jump into solving questions. First, understand the data structure, then understand an algorithm. For example, you can start with two-pointer approach, understand two-pointer approach, then solve questions related to two-pointer approach. Then while solving that question, understand that why do we need the two-pointer approach, right? Like when you're reading a question, what hint does that question give you that makes you understand, okay, in this type of question, we need to use two-pointer approach. Then solve the question, right? That is the first thing, and you need to build a habit of solving one or two TSA questions every single day, and then rest of the day do development. You pick one tech stack, build projects. You don't have to do DSA for 6 to 8 hours. 1 to 2 hours every single day is enough, and then rest of the day build projects. Okay. Satyam, someone said there's no India. Yeah, bro, I saw that. Sovik, hello Sovik, welcome to stream. Why are you using Cloudflare R2 if Cloudflare gives an AWS S3 bucket? Uh, Firstly, if we use AWS, like if we use Cloudflare R2, there's the thing called eagerless upload.
if I can pronounce it right, there's a thing called eagerless upload, and Cloudflare R2 has a generous 10 GB per month free tier, which is quite helpful. Okay. Satyam, are you using Cloudflare R2? Yes, in this food delivery application, we are going to use Cloudflare R2 for, avatar, image, URL, and all those things. Hardik, hello Hardik, welcome to stream. I'm in a fourth year. I'm doing lead code for the last 45 days and code for the last 3 weeks and solved 200 plus and 100 plus question till now. Oh, that's nice. That's nice, Hardik. Richard, thank you so much for this advice. Which stack would you recommend me going with CS market right now? I would suggest you either go with Python-based tech stack like Fast API or go with JavaScript ecosystem like a Perl stack or Mern stack. Because see, freshers get good opportunities with Python-based Fast API or JavaScript-based ecosystem. See, Java and Golang require a bit of experience. There are lots of jobs for Java developers or Golang developers, but the problem is, if you notice the job description carefully, they require at least 2 years experience. So as a fresher, you will not get the job interview call, right? So that is why I would suggest go with Python-based Fast API or go with Monstack or Pernstack. Okay, Satyam, Cloudflare doesn't. Yes, actually, we are not going to get S3 bucket. We are like using S3. We are going to communicate with the R2 bucket, right? It is just a way of communicating with our R2 bucket. Okay. Yeah, it's egress, bro. Which when the bytes go out of your storage, S3 charges. Yes, yes, I agree. Yes, egress. I was forgetting the name. Hardik, I've also worked with BullMQ and Express, Redis, and Postgres, but when it comes to TypeScript, I'm not so confident. If you see, the best way to build confidence in TypeScript is start building projects in TypeScript. Directly just start learning types, directly start building types projects with TypeScript, and while building, you will learn a lot. Satyam, I mean you have used CF workers, otherwise if you directly request under class, operation will get charged. Okay, Cloudflare workers. Okay, Satyam, I have to figure that out. Thanks a lot. Welcome, Rich Rich. Satyam, no, you're wrong, bro. What do you mean? See, if you see here, if you understand, we are using AWS like client S3, AWS client S3 to communicate with the R2. Okay. मयूरेश, हेलो मयूरेश, वेलकम स्ट्रीम. हेलो, सॉरी ब्रो, आज का स्ट्रीम मिस हो गया. Was stuck with some. That's fine, Mauresh, and welcome to the stream. So just see, like S3 Cloudflare has R2. The API to communicate with R2 is S3 compatible. Okay, basically the R2's API is the same as S3. Okay. But according to this, what we are doing is we are using S3 client, and inside you can see that we are using credentials as R2 access key and R2 secret access key. So I thought that we are going to communicate with the R2 bucket using S3 client. Okay. Akib Sheikh. Hello Akib Sheikh, welcome to the stream. Bro, can you tell me what do you prompt to GPT means about architecture to guide you when a project? For example, if I want end to end. Okay, so for example, if you are trying to build something end to end, what I would do is first I'll open GPT. I'll say that these are my tech stack. I'm trying to build this, and for you, then I give a role to GPT that you are a full stack engineer and a senior software developer, and your goal is to create a step by step. Your goal is to teach me and create an implementation plan that I can follow to build this project. Then GPT will give you an implementation plan. Then store that implementation plan somewhere. Then step by step start executing that implementation plan to build your project. Alpha, I don't like JavaScript ecosystem for backend, oversaturated and more issues. Okay. Okay, Alpha, don't got it. It's that we are communicating with S3 via R2. With S3 via R2. Okay, that's the SDK. Okay. Yes, you are using S3. Yes, that's what I meant. We are using S3 client to communicate with our R2. Okay, if I said that maybe I replaced the context. I meant that we are using S3 client to communicate with our R2 bucket. I am also using R2 for as far as for my video streaming project. I have digged into it. Okay, so tell me one thing, Satyam.
In this case, do I need the Cloudflare workers? If you can answer that, Satyam, it will be really helpful. Okay, Akib Sheikh, thanks, brother. That's a good one. I'll try to implement too. Sure, Akib Sheikh. And you can join my Discord server. In the Discord server, I've shared the prompt and all of these things in my resources channel. With Java and Golang, you can target both enterprise and startup cloud companies. Yeah, that is true. But for Java, see, with my experience, I've seen that for Java, you need experience, even in startups. Monstack or Pernstack, competition is there. But if you can actually build good products, you can get interview or call really easily in startups using Pernstack. Satyam, no, see, cache the object using Cloudflare caching. Okay, cache the, okay. Cloudflare caching. And for the access object use Cloudflare workers, then you won't get the egress charge. Okay, Satyam. Access object Cloudflare caching, and for access the object using Cloudflare workers, then you won't get. Okay, Cloudflare workers to access the object in Cloudflare R2. Configuration like name, write the worker code. Okay, worker. Okay. Should I explain the Discord? I mean, I'm not comfortable to explain it once that on chat. Okay, Satyam, yeah, you can do that. Yeah, if you're available, we can do that. Where do you work, bro? I was working in a service-based company. I have left my job 6 months ago. Right now, I'm trying to build my own startup. Okay, we have this. Use R2 from workers. Close this. Fine. We have the route. So with this, we are creating the communication. Okay. Then we have R2 storage service. File, key, connection type. Send. Direct huddle. What is direct huddle? I see. I'm a newbie in Discord. You need to tell me what is a direct huddle. We have a call channel, I think. Just a sec. Do we have a call channel? Yes, we have a call channel. Where is it? Voice channel. Okay, accept the request. How can I accept it? How can I accept it? How can I accept and where should I accept? Satyam, can you guide me? I've sent DM. Okay. Direct message. Message request. Spam. No. Where have you sent the DM, Satyam? I'm not able to get that DM. Where is it? SD client. And if I go here, copy this. Chat link. Paste it here. Okay. Then we have event driven architecture. Yes. Okay. Where is it? I've sent check again. I'm sorry, didn't solve the captcha. Okay. Where is the DM? Yeah, I got the DM here. And here we can talk on call. Hello, Hello. Hello, Satyam. am I audible? Yeah, yeah, you're audible. Hello.
Hello? Am I Am I audible? audible? Yeah, you are audible. Am I audible? Okay. Wait, let me just share my screen. Yeah, sure. Yeah, you are audible. Okay. How can I maximize the screen? Can you see my screen? Yeah, I can. It is loading now. It is loading. Hello? Yeah, your screen is loading now, Satyam. It is not visible on my screen right now. ओके ओके मुझे स्ट्रीम चालू रखना पड़ेगा. Close stream. Yes, Satyam, your screen is visible now. I can see your screen. You are not audible, Satyam. Hello. Yo, this stream is for Coder call center कब से? Actually, Satyam is trying to explain Cloudflare. Satyam, you're not audible. Hello. Not audible. Okay. Actually, here we're trying to understand how Cloudflare workers, using Cloudflare workers, how we can access the object inside the uh, Cloudflare R2. Okay, close this. Phase 1, here we go. Phase 1.4, okay. Close this. Okay, now let's join. Hello. Now am I audible? Yes, Satyam, you are audible. Am I audible? Yep. This is better. Yeah. Okay. So have you ever worked with S3 earlier? Yes, I have worked with S3. Okay. So assume कि ये जो R2 है वो S3 हम्म. ही है. Okay. But ठीक it's है. just Cloudflare का प्रोडक्ट है. Okay. ठीक है. सो सपोज मैं इसको S3 बोल देता हूँ ताकि वो S3 R2 कंफ्यूजन ना हो बिकॉज हाँ हाँ. बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बाद में. सो इट्स S3. अब हम्म. S3 क्या बोलता है? मैं थोड़ा थोड़ा और डिग डिग करता हूँ सो दैट तुमको और समझेगा. ओके. हाँ हाँ. ठीक है. क्लाउडफ्लेयर का वैसे भी एनीवेज नेटवर्क बहुत बड़ा है ही ऑलरेडी. हम्म. तो व्हाट दे हैव थॉट कि चलो हम भी अपना S3 ऐसा लाइक प्रोडक्ट बना देते हैं सो हम्म. वी कैन लेवरेज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. सो R2 में ऑफ कोर्स फिर जेनरसिटी तो देनी ही पड़ेगी, हम्म. अदरवाइज अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे लोग. हम्म. सो R2 क्या बोलता है, इवन इफ यू गो ऑन डॉक्यूमेंटेशन. हम्म. मैं डॉक्यूमेंटेशन भी साइड बाय साइड कर दूं क्या ओपन? हाँ, कर दो. R2 डॉक्स. देयर वी गो. मैं इसको थोड़ा साइड बाय साइड 50-50 कर लेता हूँ. इट विल बी बेटर. गेट स्टार्टेड. या सो S3 में जो R2 ही बोलता हूँ यार, ज़्यादा कंफ्यूजन. R2 है. हम्म. R2 में 2 मोड है. अभी वो ईग्रेस है ना, बोलेगा कि हम चार्ज नहीं करते बट वो कंडीशनल है. ठीक है. एक सेकंड. सत्यम, वो ना तुम्हारा स्क्रीन जो शेयर कर रहे हो वो छोटा हो गया है. लाइक पहले, लाइक तुम्हारा स्क्रीन ओके पूरा ओके. स्क्रीन ले रहा था. वेट. स्टॉप प्रेजेंटिंग एंटायर स्क्रीन. हाँ. अब दिख रहा है पूरा, लाइक हाँ कैसे हाँ. डिवाइडेड होगा? हाँ हाँ, अब सही है, अब सही है. ओके. सो R2 में 2 मोड है. एक होता है इनका जो क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स है. क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स नथिंग बट इनका सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है. ओके.
ओके। सी एफ वर्कर्स। ठीक है। सी एफ वर्कर्स में क्या होता है, इन्होंने अपना एक इंटरनल टूलिंग बनाया है कि अगर तुम्हें क्लाउडफ्लेयर के ही सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करना है हम्म। तो तुम्हें बाइंडिंग्स मिलेगी, ओके। जो आपने अभी जस्ट देखा था शायद, कि बाइंडिंग सी हाँ, एफ आर टू जेसन के बकेट, अंदर था, हाँ। या आर टू बकेट्स बाइंडिंग माई बकेट। हम्म। तो बकेट का नाम देना है, हम्म। एंड यहाँ पे उनका टोकन होता है, टोकन पास कर दोगे, हम्म। you will be able to your CF workers will start interacting with R2। ओके। बट R2 में जो कंडीशनल है उसमें क्या है, ये रहा इनका वर्कर्स, एंड हम्म। लेट सपोज ये है मेरा ब्राउज़र। ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली ब्राउज़र से इंटरेक्ट करूँगा हम्म। तो मुझे ईग्रेस चार्ज होगा, अच्छा। बिकॉज़ ये ओवर द इंटरनेट है। हम्म। नॉट लाइक अगर CF वर्कर्स के साथ होगा तो क्लाउडफ्लेयर के नेटवर्क में ही इंटरेक्शन हो रहा है। हम्म। तो इसमें अगर सीएफ वर्कर्स के थ्रू बेसिकली क्या करना है, आपका जो R2 है उसको सीएफ वर्कर्स को एक्सपोज करना है वाया बाइंडिंग्स। ओके। एंड सीएफ वर्कर्स को अभी बेसिकली सी, लेट मी आस्क यू वन थिंग, ऐसा कोई फीचर इम्प्लीमेंट करने वाले हो कि गेटेड हो वो कंटेंट, लाइक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ही मिलेगा? अच्छा। मोस्टली वो नहीं होगा, होगा तो भी कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम्म। ब्राउज़र है हम्म। उसको डायरेक्ट एस R2 के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम पाइप करेंगे सीएफ वर्कर्स के थ्रू। ओके। सो दैट क्या होगा, सीएफ वर्कर्स के थ्रू जो भी, अभी आपको कैश का पॉलिसी बनाना पड़ेगा, हम्म। कितने देर तक कैश होना चाहिए, लाइक 1 मंथ 1 वीक। हम्म। R2 से जब भी फॉर एग्जांपल मेरा एवटार है, सत्यम का एवटार है, वो हम्म। आप अगर एक्सेस करोगे हम्म। तो सीएफ वर्कर क्या करेगा, अगर वो वैसे भी एनीवे आपकी कैश की पॉलिसी होगी, वो कैश कर देगा उसको। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। अब इसमें कैश क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। सपोज S3 भी होगा तो भी कैश इंपॉर्टेंट है। हम्म। व्हाई? बिकॉज अभी एवेटार है, फॉर एग्जांपल आपके यूजर्स कभी भी लॉगिन करेंगे, हम्म। एवेटार तो दिखेगा ही। हम्म। तो एक एवेटार इमेज के लिए हर बार मैं R2 से रिक्वेस्ट थोड़ी ना करूंगा, कैश ओके। है, कैश से डायरेक्टली कैश से अगर, डायरेक्टली हाँ। एक्सेस कर लूंगा मैं। समझ गया। एंड सपोज अभी यहाँ पे S3 है तो समझो कि आपका ईग्रेस चार्ज हो रहा है, ठीक है। फिर तो कैश और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हम्म। राइट? बिकॉज हम्म। फिर तो मैं जब भी एवेटार होगा, कुछ भी होगी वो केबी में फाइल होगी, बट वो ईग्रेस तो चार्ज होगा पर जीबी, जब हम्म। भी होगा तभी। तो कैश। अब रही बात, अभी इतना ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बस अच्छा। इसमें है कि दो ही ऑपरेशंस है, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए ऑपरेशन कुछ नहीं है, जब भी आप अपलोड करोगे R2 पे हम्म। तो आपका क्लास ए ऑपरेशन चार्ज होगा, जो बहुत ठीक। ज़्यादा है नहीं। अगर यहाँ पे देखेंगे, लेट मी जस्ट चेक CFR2 प्राइसिंग। सी क्लास ए ऑपरेशंस जो है हम्म। वो जीरो पॉइंट स्टैंडर्ड जीरो स्टोरेज वन पे पॉइंट फाइव जी बी जीबी। ओके। और ओके। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज मतलब, अगर समझो अगर if आपको नहीं पता हो, हम्म। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज कुछ नहीं, अगर कोई ऐसी फाइल्स है जो हम्म। मैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहा हूँ हम्म। तो उसको आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज में डाल दो। स्टोरेज टियर से बेसिकली, ओके। स्टैंडर्ड स्टोरेज मतलब जो आप अभी यूज करोगे, मोस्टली इंप्लीमेंट करोगे वही। ईग्रेस डाटा फ्रेम पे आपने देखा होगा, वन पे ईग्रेस directly from R2 including via the workers API, S3 API and R2 domains does not incur data transfer charges and is free. If you connect other metered service to R2 bucket, you may charge by those service। अब ये जो चार्ज है हम्म। ये आपका क्लास बी ऑपरेशन लगेगा। क्लास बी ऑपरेशन इज नथिंग बट एक्सेसिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द R2। ओके। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज, CF वर्कर से बेसिकली आपका जो V8 आइसोलेट होता है हम्म। वही है CF वर्कर्स। वर्सल के साथ तो काम किया होगा ना नेक्स्ट हाँ। जेएस। हाँ। तो वर्सल का जो एज बोलते हैं ना, एज एज वाला, एज केस, हाँ हाँ हाँ, एज एंड रन टाइम, हाँ हाँ। एज रन टाइम ही है CF वर्कर्स बेसिकली, रफली अगर बोला जाए तो। अच्छा, तो बट उसमें मेरा एक बाइंडिंग्स मिलेगा। क्वेश्चन है। हम्म, जैसे यहाँ पे आर टू हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आई वॉन्ट टू स्टोर दैट avatar URL inside the R2 bucket। ठीक है। ओके। तो what will happen, there's an endpoint customer, when we create the customer profile, I'll get हम्म, all the data and there will be an option to upload the avatar URL, avatar image। ठीक है। हम्म, तो from that avatar image I will
I want to upload that avatar image into my R2 bucket, and then I need a avatar URL that I will be storing in my database. करेक्ट। है ना? तो इस फ्लो को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसमें? उस फ्लो को सी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तो बता देना, हाँ, हाँ। वरना बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड एट नहीं, नहीं, एक्सप्लेनिंग, बट वो आई तो ट्राई माय बेस्ट। डिस्कशन से ही तो होता है, इसमें सो कोई सपोज एक्सपर्ट। अभी हाँ, इसमें अपलोडिंग में भी दो फ्लो होता है। ठीक है। ओके, एक है कि आप अपने बैकएंड, आपका जो सर्वर है बेसिकली जहाँ पे एक्सप्रेस एपीआई सब होस्टेड है, हुँ, उसके थ्रू रिले कर दो डेटा। ठीक है। करेक्ट। और एक दूसरा एक होता है जिसमें प्री साइंड अपलोड यूआरएल्स होती है, बेसिकली प्री साइंड हाँ, यूआरएल्स होती है। हाँ, हाँ, वो वाला ओके, चीज़ था, हाँ। कि बस मैं लिंक दे दूंगा जनरेट करके, एक टाइम लिमिट डाल के, टोकन के साथ साइन हो गया होगा, हुँ, हुँ, वो भेज दूंगा, वो क्लाइंट पे जाएगा, क्लाइंट फिर वही यूआरएल फेच में यूज करेगा, हाँ। ब्लॉब को कनेक्ट कर देगा एंड डायरेक्टली, अब बीच में कोई सर्वर नहीं, डायरेक्टली बकेट में जाके लैंड होगा। हुँ, हुँ, अब उसमें प्रॉब्लम है कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई लैंड हो गया है या नहीं। अच्छा। करेक्ट। सो मैं एक डैशबोर्ड बता देता हूँ, मेरा ही है। यप। एपीआई की देख के, मतलब हाँ कुछ हाँ, एपीआई की लिखना हो। एपीआई कंप्यूट वर्कर्स, आई कैन नॉट वर्क, क्यूज में जाना है, क्यूज क्यूज, आई मीन वर्कर्स में ही दिखा दूंगा बट क्यूज, सी यहाँ पे क्यूज है ना। हुँ, हुँ, अगर मैं वेट स्टोरेज में जाके परफेक्ट दिखेगा, स्टोरेज में, वेट लेट मी मेक इट बिग, ये जो है मेरा, इफ यू सी फिल्माटो यूजर अपलोड्स, ये हुँ, बकेट हुँ, है। हुँ, हुँ, ये बकेट में जाने के बाद, ये बकेट है, इसमें हाँ, सेटिंग्स में जाओगे ना, हाँ, हाँ, तो यहाँ पे इवेंट नोटिफिकेशंस, सी, आपको एक वर्कर एक क्यू बनाना पड़ेगा जो फ्री में मिल जाता है। ठीक है। बट ये जो है ना इवेंट नोटिफिकेशंस, हुँ, हुँ, इसके लिए यू हैव टू बाय वर्कर्स का पेड पैकेज, हुँ, हुँ, $5 का कुछ आता है, हुँ, हुँ, टैक्सेस वैक्सेस $6 हो जाएगा। ठीक है, वो वर्कर, क्योंकि वर्कर के बिना फिर ये इवेंट नोटिफिकेशन प्रोसेस नहीं करता। ठीक है। ओके, सो जैसे ही तुम्हारा इस पे R2 पे फाइल लैंड होगा, मैं पूरा हुँ, हुँ, डायग्राम में बना देता हूँ। ये रहा क्लाइंट। हुँ, हुँ, ओके, क्लाइंट ने अपलोड किया सीधा R2 पे। ठीक है, ओके, R2 फिर नोटिफिकेशन क्यू में पास कर देगा। ओके, ठीक है, सी एफ क्यू, ठीक है। क्यू, सी एफ क्यू में पास कर देगा नोटिफिकेशन। अभी सी एफ क्यू में ना दो होता है क्यूज, तो बुल एम क्यू के साथ किया ही होगा। हाँ, एक हाँ। होता है एक सिंगल सिंगल जॉब कर दूं, हुँ, या हुँ, फिर एक बैच में ही सारे जॉब्स चले जाएंगे। ठीक है। तो सी एफ में मोस्टली, बिकॉज सी एफ में बैच इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जो क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स है, हुँ, हुँ, सी एफ वर्कर्स, सी एफ वर्कर्स जो है, हुँ, हुँ, वो हर एक रिक्वेस्ट पे चार्ज होता है, राइट। ओके, अभी फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। राइट। हुँ, हुँ, तो हर एक अपलोड, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सीएफ वर्कर का इन्वोकेशन कॉल करेगा, लेकिन इन्वोक करेगा, समझा। हुँ, हुँ। सो क्यों करे, rather देन हम 10 का एक बैच ही सीधा डिस्पैच कर पाए। अच्छा, तो क्योंकि वो वहाँ पे हर एक पर रिक्वेस्ट के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है ना, तो हाँ, इसलिए बैच हम 10 करने का से बैच ही भेज देंगे, समझ गया, ताकि एक ही इन्वोकेशन में 10 का प्रोसेसिंग हो जाएगा, समझ गया। राइट। गॉट इट। इफ यू वांट टू, नोड से सीधा ये जो सी एफ क्यू है, हुँ, हुँ, इसको पोल कर सकते हैं, बट एनीवेज वो $5 में आपको 10 मिलियन इन्वोकेशन मिल रहा है, हुँ, हुँ, तो यही लेवरेज कर लेते हैं। समझा। तो सी एफ क्यू से सी एफ वर्कर में जाएगा, ठीक है। एंड फिर वेब हुक का जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली, हुँ, हुँ, वही कर देना कि नोड में एक एंड पॉइंट बना देना इंटरनल, हुँ, हुँ, और एक सिग्नेचर बना देना ठीक है। सीक्रेट के साथ में। हुँ, एक हुँ, सीक्रेट वर्कर के पास रहेगा, एक सीक्रेट नोड एपीआई पे पड़ा रहेगा। ठीक है। सो दैट जब भी रिक्वेस्ट आएगा, वेरीफाई कर लेना कि सिग्नेचर, कि ये मेरे सी एफ वर्कर से ही आ रहा है या नहीं। ओके। ओके, सी एफ वर्कर से आ रहा है, ओके, सिग्नेचर वेरीफाई हो गया। देन जो भी क्या यूज केस या एप्लीकेशन जो है, वो उसका जो कुछ भी प्रोसेसिंग है बेसिकली हाँ, हाँ। डेटाबेस में, कि इसका यूआरएल उधर डाल दो यूजर के साथ में। अच्छा, तो यहाँ से वो पता चल गया, ये वाला पूरा फ्लो से ये पता चल जाएगा कि वो लैंड हो रहा है कि नहीं ना? क्योंकि हाँ,
तो मैं क्या बोलूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि इधर बकेट तो मत बनाना। हम्म। बकेट में भी ना, यहाँ पे एक ये मिलता है, लेट मी जस्ट टेल यू, हाँ सी, यहाँ पे क्यू सिलेक्ट करना है। ठीक है। क्यू सिलेक्ट करने का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, तो एक जो कुछ भी आप प्रेफिक्स बनाओगे, हम्म। बिकॉज ऑब्जेक्ट स्टोरेज में फोल्डर तो बना नहीं सकते, प्रेफिक्स देना पड़ता है। हम्म। फॉर एग्जांपल इमेजेस प्रेफिक्स है ना, हम्म। तो जब भी इमेजेस में ही कोई भी ऑब्जेक्ट लैंड होगा, हम्म। तभी ही वो नोटिफिकेशन डिस्पैच होगा। ओके। बेसिकली वो जो नोटिफिकेशन का जो ऑब्जर्व कर रहा है, हम्म। वो स्पेसिफिक प्रेफिक्स पे ही कर रहा है, ना कि पूरे बकेट पे। ओके। सो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पे। एंड मैं बोलूंगा कि सीएफ वर्कर्स में भी एक ये करना कि उसका जो प्रेफिक्स होगा ना, हाँ हाँ। उसके बेसिस पे कौन सा एपीआई एंड पॉइंट पे कॉल करना है, हाँ हाँ। वो भी कॉन्फ़िगर कर देना सीएफ वर्कर्स पे। ओके। सो दैट नोड एपीआई को मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेफ हो जाएगा कि हम्म। ओके मेरे ये वाले एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आ रही है, हम्म। तो मतलब यहाँ पे कोई तो एविटार का ही जो फोटो है हम्म। वो अपलोड हुआ है। एंड फिर उसका जो यूआरएल है वो जनरेट कर देना, हम्म। एंड वो सेव कर देना जहाँ पे भी डेटाबेस में सेव करना है। समझ गया। ओके। हम्म। एंड फिर बाद में तो फिर यूजर का डेटा आ जाएगा, उसके हम्म। साथ में यूआरएल भी है। वो यूआरएल यूआरएल से। इमेज में प्लेस कर दो, दिख हाँ रहा है अभी। हाँ हाँ। एंड इफ यू वांट टू, बिकॉज सी, अभी तुम्हें नहीं पता कि लाइक एवेटार यूआरएल, सॉरी एवेटार का जो फोटो है हम्म। वो कितने एमबी का हो सकता है। हाँ हाँ कुछ भी हो हाँ। सकता है, लाइक तुम्हें बता सकते हो ओके 10 एमबी मैक्सिमम है, हम्म। इसके ऊपर कुछ नहीं। हम्म। सो 10 एमबी है, बट स्टिल 10 एमबी रेंडर करना टाइम लगता हाँ है, हाँ। स्पेशली ऑन। तो इनका एक क्लाउड फ्लेयर का इमेजेस करके एक है, मीडिया में इफ यू गो हम्म। इमेजेस। अभी इमेजेस में इनके और दो टीयर है। एक है विथ स्टोरेज, हम्म। विथ स्टोरेज, और एक है कि स्टोरेज तुम लाओ, प्रोसेसिंग हम कर देंगे अच्छा। विदाउट स्टोरेज। ओके। सो क्या करना बेसिकली, ऑफ कोर्स ये सपोर्ट भी करता है आर टू एज स्टोरेज है, बिकॉज आर टू पे ही तुम्हारा एवटार यू हाँ आर फोटोज है, हाँ राइट। हाँ हाँ। एंड इनमें यू कैन जस्ट डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल 24/7, कुछ भी डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल हम्म। 40/40 का डायमेंशन है। 40/40 का डायमेंशन रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं डिफाइन कर देना, हम्म। वो ऑटोमेटिकली ऑन द सर्वर ही करके भेज देगा। अच्छा। तो तुम्हें अलग से ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए कोई प्रोसेस या फिर कोई सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और ना ही मेरे को वो रिक्वेस्ट में वो लिमिट सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ वो बेसिकली मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी यूआरएल है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, www.example.com हम्म। स्लैश CDN होगा बेसिकली तुम्हारा। हम्म। CDN ये कुछ भी इमेज का यूआरएल है, हम्म। समझो। यहाँ पे तुम उसको नाम दे सकते हो कुछ तो, जैसे एक होता है पब्लिक, हम्म। पब्लिक जो नाम है तो एक नाम दे दो, या फिर विड्थ और हाइट जो है वो डिफाइन कर देना, हम्म। 25h25। ठीक है। तो वो 25, भले ही इमेज का कुछ भी हो डायमेंशन या साइज, हम्म। वो अपने आप से ऑप्टिमाइज करके भेज देगा। अच्छा, समझ गया। बेसिकली क्लाउडिनरी जैसे कर लेता है, हाँ हाँ। ये इनका क्लाउडिनरी अल्टरनेटिव सर्विस है। ओके, गॉट इट। ओके। तो ये वाला, लाइक इतना डीप क्लाउडफ्लेयर में तुमको वो अपने स्टार्टअप की वजह से जाना पड़ा? या मतलब जो फिल्माटो देखा होगा, हाँ हाँ हाँ। फिल्माटो इज नथिंग बट मेरा जो वीडियो स्ट्रीमिंग है। हाँ हाँ। तो वीडियो स्ट्रीमिंग में मैंने, लाइक मैं तो मोस्टली यही सारे यूज कर लेता था, इमेज किट हो गया, क्लाउडिनरी हो गया, बट थर्ड स्टिल, पार्टीज जिसमें या थर्ड उसमें पार्टी हो प्राइसिंग गया। ज़्यादा हो जाता है। फिल्माटो पे मैं क्या कर रहा था कि मुझे खुद से ही पूरा देखना है कि मीडिया काम करता ही कैसे है। समझा। तो फिर रेंडरिंग भी मैं करूंगा, लाइक अगर यूट्यूब पे जाओगे हाँ हाँ। तुमको तो ये आ जाएगा। यूट्यूब पे ये दिख रहा है हाँ, स्ट्रीम तो कि दिख रहा है। या स्प्राइट शीट जो होता है, ये जो लाइक मैं नीचे हाँ होवर हाँ कर रहा हूँ हाँ हाँ इमेजेस, हाँ हाँ। तो ये पूरा ही मिलेगा, सब कुछ अपने आप से रेंडर करके। इमेजेस थंबनेल हो गया, ओके। तो मैं थंबनेल के लिए इमेजेस देख रहा था, बट इमेजेस में मेरे दूसरे सर्वरलेस वाले प्रोजेक्ट पे यूज कर रहा हूँ, हाँ बिकॉज इस हाँ पे तो मुझे खुद से करना है। तो इसके लिए इफ यू नो, इवन ये जो नेक्स्ट जेएस का इमेज वाला कंपोनेंट पता है, हाँ हाँ, इमेज खुद का, वो लोग या का इवन खुद वो का भी इमेज अंडर द हुड कंपोनेंट है। यही लाइब्रेरी यूज करता है, शार्प, शार्प npm दिस। ओके। इवन शार्प अपना जो नेक्स्ट जेएस है, हाँ हाँ।
वो भी यही यूज़ करता है शार्प, बिकॉज़ ये बहुत फास्ट, लाइक समझो कि इमेज पास कर दिया, रेंडर होके निकल गई। सही है। तो क्या बोलते इसके बारे में कहाँ-कहाँ से लाइक क्या-क्या रिसोर्सेज देखा तुमने? अम, एक तो अपना चैट जीपीटी है। हाँ, हाँ। ओके। चैट जीपीटी, कीमी, हुँ, हुँ। परप्लेक्सिटी में सर्च के लिए यूज़ करता हूँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ। सर्च के मामले में परप्लेक्सिटी अच्छा है। हाँ, वो तो पूरा रिसोर्स दे देता है कि हाँ, कहाँ से खोज के या निकाला। एग्ज़ैक्टली रिसोर्सेज़ के लिए, ताकि मैं मुझे भी हुँ, पता चले कि हुँ। कहाँ से लेके आ रहा है। हाँ, हाँ, सही है। एंड देन फिर यही डॉक्यूमेंटेशंस पे लैंड कर देता है, गिटहब ओके। हो गया। लाइक थोड़ा मीडिया के बारे में बता ही देता हूँ। हुँ, इन हुँ। केस इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग वीडियो, हुँ, हुँ। तो एचएलएस के बारे में पता है? हाँ, हाँ, एचएलएस एचटीटीपी लाइव एचएलएस एंड स्ट्रीमिंग। डैश, या तो उसमें बेसिकली उसका लाइक पर्पस यही है कि अगर तुमको पूरा वीडियो देखना है, तो चंक्स में भेजता है वो या वीडियोस चंक्स में को। भेज दो, हुँ, राइट? हुँ। बट चंक्स में भी एक प्रॉब्लम है, एक तो पहले ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। हुँ, हुँ। लाइक वो क्वालिटी है 1080p, 720p, 480p, हुँ, हुँ। 360p, राइट? हुँ, हुँ। तो उसको पहले दो होता है, तुम्हारे पास दो अप्रोच है, राइट? एक है कि मैं पूरा ही रेंडर प्लस सेगमेंट कर दूं, रेंडर प्लस सेगमेंटेशन, हुँ, हुँ। वेट, सेगमेंटेशन, ओके। हुँ, हुँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? सपोज बैड लक हो जाता है and तुम्हारा सेगमेंटेशन जो है हुँ, वो हुँ। फाइल्स करप्ट हो गई, ठीक है। तो वापस रेंडर करना पड़ेगा। हाँ, सो कंपनी लाइक एक स्टैंडर्ड ही है वो, कि कंपनीज क्या करती है, पहले एफएफएम पेग जो है, हाँ, एफएफएमपीईजी। एफएफएम पेग से रेंडर कर लेती है, हुँ, हुँ। एंड उनको भी स्टोर कर देती है आर टू पर, ठीक लाइक है। जो भी स्टोरेज है एस थ्री आर टू। एंड फिर वो जो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1080p, 720p, 480p, ओके। हुँ, हुँ। ये सारे वीडियोस बन गए। हुँ, हुँ। ये अपने आप में अलग अलग सेपरेट वीडियोस है, ठीक है। क्वालिटी बस अलग है, ठीक है। हुँ, हुँ। फिर क्या होगा, और एक प्रोसेस लगेगी यहाँ पे, ये प्रोसेस में फॉर एग्जांपल 1080p का भी मुझे एचएलएस बनाना है, हुँ, हुँ। चंक्स। ओके। तो 1080p मतलब वन बाय वन एक एक को ले लेंगे, हुँ, हुँ। एंड उसको फिर सेगमेंट में ये कर देंगे, सेगमेंटेशन कर देंगे इसका, ठीक है। सेगमेंटेशन। ऑलराइट, अब ठीक है। सेगमेंटेशन के बाद पैकेजिंग भी करना है, बिकॉज एक लाइक एक प्लेलिस्ट है। हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेस ट्यूटोरियल हैशटैग वन, हुँ, हुँ। ओके। हुँ, हुँ। पोस्टग्रेस ट्यूटोरियल हैशटैग वन में 1080p है, 720p है, 480p है, ठीक ओके। है। ठीक है। इनका सेगमेंटेशन है। ओके। प्लस यूट्यूब हो जाए या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, इनमें वीडियो का चंक अलग होता है, ऑडियो का चंक अलग होता है। ठीक है। वाई, इफ यू आस्क वाई, डबिंग भी हो सकती है। हुँ, हुँ। सो मैं डबिंग के लिए अलग से वीडियो वापस नहीं एचएल स्ट्रीम करूंगा, राइट? हुँ, हुँ। मैं वीडियोस चंक भेजूंगा एंड और ऑडियोज अलग से ऑडियो चंक्स भेजूंगा, भेजूँगा, समझ गया। ओके। हुँ, हुँ। सेगमेंटेशन होगा। एंड अब भी दो होता है, जैसे कि कोर्सेज जो होते हैं उनमें क्या होता है, डीआरएम लगता है, डिजिटल राइट, उसका आगे का फुल फॉर्म नहीं याद, डीआरएम फुल फॉर्म, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। ठीक है। जो दिखता है ना नेटफ्लिक्स पे, स्क्रीनशॉट ले ले या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर तो ब्लैंक दिखता ब्लैंक है, हो जाता है, हाँ, या हाँ। दैट्स डीआरएम। ओके, तो गॉट इट। डीआरएम सर्विस ऑप्शनल है, अगर ठीक है। लगाना है, लाइक यूट्यूब पे तो डीआरएम होता नहीं है। हुँ, हुँ। तो इन दोनों के लिए एफएफएम पे रेंडरिंग के लिए, और एक गूगल का ही एक प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स, शाका पैकेजर। शाका ठीक है। पैकेजर सेगमेंट कर देगा वीडियोस, ओके। लाइक ये पूरा बना देगा, पूरा जो प्लेलिस्ट होता है, मेन हुँ, मैनिफेस्ट हुँ। फाइल बोलते हैं, हुँ, हुँ। वो पूरा जनरेट करके दे देगा। ओके। दिस इज योर पूर एंटायर मीडिया पाइपलाइन इन अ नटशेल। ओके, सो बेसिकली स्ट्रीमिंग के अंदर भी यही होता है? या स्ट्रीमिंग के अंदर भी यही होता है, लाइक सी, ओके। ये जो सी एफ क्यू है, हुँ, हुँ। दिस इज क्लाउडफ्लेयर स्पेसिफिक थिंग। ओके। अमेजोन खुद के नोटिफिकेशंस दे देता है इस तरीके। हुँ, हुँ। if you go, I guess, like you can configure SQS है, हो या SNS, हुँ, I'm हुँ। not very much aware of S3 का ecosystem, हुँ, हुँ। because of course मुझे फ्री चाहिए था। हाँ, वो तो समझ रहा हूँ क्योंकि अभी पहले प्रोडक्ट बनाने में तो या एमवीपी में तो फ्री वर्ज़न यूज़ करेंगे, फिर तो सी एफ क्यू इनिशियल है, कस्टमर्स लाना एंड पड़ेगा। ये पाइपलाइन इतना, लाइक इसमें तो मैं कपल कर रहा हूँ, पूरा स्ट्रांगली कपल्ड है, हुँ, हुँ। बट आई एम गोइंग टू लाइक डीकपल इट सो दैट, एंड सी ओपन सोर्स कर देता हूँ, बिकॉज इट विल बी माई फर्स्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। हुँ, हुँ।
सो एनीवन कैन, बिकॉज़ ये जो पूरा सिस्टम है दिस इज़ लाइक कमोडिटाइज्ड, राइट? किस हम्म कोई भी पेयर कर सकता है। हम्म प्लस मीडिया में देखोगे देयर इज़ नथिंग अलग, राइट? इसमें बस ये हम्म। पाइपलाइन प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये पूरा पाइपलाइन कोऑर्डिनेटेड करके यू कैन क्रिएट अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, और कोई भी इसको लेके सिर्फ एंड पॉइंट ओपन कर दो फिर। एग्ज़ैक्टली। हम्म इवन इफ आई मीन दिस इज़ माय, कर देता हूँ, क्या ही होगा, बनाने में टाइम लगता है। इफ यू हैव यूज्ड बेटर ऑथ, बेटर होती, आई हैव हर्ड अबाउट इट। या तो बेटर ऑथ में बेसिकली क्या है, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे किसी सिस्टम से इंटरेक्ट किया था। बेटर ऑथ क्या बोलता है बेसिकली, मैं हम्म तुमको रेट लिमिटिंग की सिस्टम दे दूंगा, हम्म मैं पूरा ऑथ दे दूंगा तुमको। हम्म तुमको चाहिए तो मोंगोडीबी यूज करो, माई सीक्वल यूज करो, पोस्टग्रेसql यूज करो, हम्म कनेक्ट हो जाएगा। रेट लिमिटिंग चाहिए, वी आर यूजिंग रेडिस। रेडिस नहीं, तुम्हारा कस्टम लाना है, हम्म फॉर एग्जांपल कोई भी हो कस्टम लाइक इन मेमोरी डेटाबेस, हम्म। तुम उसके लाइक जैसे हम करते हैं ना, पूरा सर्विस से फिर यूज केस में डाल हाँ दिया हाँ एब्स्ट्रैक्शंस। हाँ हाँ। उन्होंने एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड कर दिए, ऐड अपडेट डिलीट, ऐड डिलीट के, ऐड डिलीट कर दो ये। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, ये जो पूरा पाइपलाइन है ये बना के विथ ब्रिंग योर ओन डेटाबेस, ब्रिंग योर ओन स्टोरेज, सो नाइस। दैट ये कर लो, कनेक्ट कर लो, डन, यू आर गुड विथ योर मीडिया पाइपलाइन। सही है, ये काफी अच्छा आइडिया है, ये वाला एक काफी अच्छा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आइडिया है ये। या आई मीन, और अगर तुमको अभी फिलहाल फटाफट से करना है, लाइक इफ यू हम्म डोंट वांट टू डू ऑल दिस पाइपलाइन स्टफ, हम्म there are two good alternatives for हम्म for video. There is, for video you can use image kit, हम्म indian ही है, हम्म। and for video you can use bunny cdn. बनी सीडीएन, ओके। बट Yeah. विद दिस पर्टिकुलर एडवांस बैकएंड, इसमें मेरे को जितना डीप जाना है मेरे को डीप ही जाना है। लाइक ये तो ऐसा नहीं है ना कि आई एम जस्ट डूइंग इट टू गेट अ जॉब, एंड इसमें मेरे को ये बना ही रहा हूँ सीरीज सीखने के लिए, है ना? तो इसमें हम्म। आई वांट टू गो डीप। तो मैं तो सोच रहा कि अभी जो तुमने हाँ, पाइपलाइन बोला है, वी बना कैन दो तो, इम्प्लीमेंट दैट। आई मीन सी, लाइक एक तो होता है लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब, हम्म। और एक होता है लाइक मेरा जेन्युइन क्यूरियोसिटी है। हम्म लाइक क्यूरियस, लाइक सी, अगर मेरे पास क्यूरियोसिटी नहीं होती मैं कर भी नहीं पाता था, टू हम्म। बी वेरी ऑनेस्ट। सही बात है। सो और या, अपने स्टार्टअप में कौन सा टेक स्टैक यूज कर रहे हो तुम? आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस स्टार्टअप, ये लाइक सी, मैं ग्रेजुएट हो गया था, हाँ हाँ। अब मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। अच्छा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट देखोगे, अगर मेरे को लाला कंपनी चाहिए तो मैं तो कोई भी क्रूड एपीआई से मिल जाएगा। हाँ, एंड सर्विस मैंने बेस्ड बत कंपनी तो मास या हायरिंग में ही मिल जाएगा। एंड मैंने आपको बताया था कि लाइक कंपनी वाज आस्किंग मी टू ट्रैवल फॉर 40 यस किलोमीटर्स फॉर यस, फॉर 5K अ 5 के। मंथ। यस। तो मैं बोला ये तो नहीं हो रहा, थोड़ी ढंग की कंपनी भी ऊपर कर लूंगा। एंड तभी मैंने बन्नी सीडीएन यूज किया था, हम्म एंड उन्होंने प्रॉपर लाइक डैशबोर्ड भी दिया है दैट योर वीडियो इज बिंग ट्रांसकोडिंग। लाइक हम्म उन्होंने पूरा पाइपलाइन था बट वो एब्स्ट्रैक्टेड था मेरे लिए, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था भाई कर कैसे रहे ये लोग। एंड हम्म इफ यू सी बनी सीडीएन जो है, वो आई गेस 10 से 12 लोगों की टीम है, ज़्यादा बड़ी टीम है नहीं। लेकिन हम्म उनके सर्विस इतना एडब्ल्यू जितना रिच नहीं है, हम्म बट ऑफ कोर्स जितना भी है एटलीस्ट इट इज़ वर्केबल। हम्म तुमको अनलेस एकदम बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहे हो तो बनी सीडीएन इज़ बेटर। गॉट इट। सो चेक आउट बनी सीडीएन अगर तुम्हें लाइक अफोर्डेबल फटफट करना है। हम्म इफ़ यू आर गोइंग डीप इनटू दिस तो ये तो है ही। हम्म और वन मोर थिंग, इफ यू एवर वांट कि ये पूरे पाइपलाइन का लाइक अगर प्रॉपर मिले, व्हाट आई टेल यू इज, वेट, मेरा ड्रिजल का ये दिखा देता हूँ, डेटाबेस, स्कीमास, मीडिया, इंडेक्स और टीएस, वेट, सेव ऑल, इंडेक्स डॉट टीएस, ओके, कैन यू सी दिस स्क्रीन? यस, आई ये कैन सी थोड़ा, द स्क्रीन। सो मैंने लाइक जब मैं सीख रहा था तब हाँ। एक ये था कि ऑफ कोर्स मैंने चैट जीपीटी सारे एआई को लेके एक दूसरे की चैट एक्सचेंज करके कंफर्म करा के लिए हम्म दैट यू शुड नेवर कपल योर मीडिया का जो प्रोसेसिंग है हम्म। विथ योर बिजनेस वाले स्कीमास। हाँ, दैट इज सो ट्रू। मीडिया स्कीमा अलग ही होना चाहिए, हम्म एंड तुम्हारा जो बिजनेस वाले स्कीमास और टेबल्स है, हम्म यूजर हो गया, फिर फॉर एग्जांपल मेरे इसमें चैनल्स होंगे, तो हम्म चैनल हो गया, वो सारे बिजनेस है ना, तो उसको हम्म सेपरेट कर लो, मीडिया को अलग कर लो।
तो मीडिया में व्हाट आई हैव इम्प्लीमेंटेड इज कि एक अपलोड सेशन होना चाहिए, हम्म ताकि मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले कौन से यूजर ने क्या अपलोड करने जा रहा था। ताकि ओके, रिकॉर्ड हो सारा चीज़ और ऑडिट भी रिकॉर्ड हो हो पाए। ऑडिटिंग के लिए हाँ बेसिकली। हाँ। ओके, और इसमें हम्म एक मुझे यूनिक आईडी तो मिल गई। हम्म अब मेरे मेरे इसमें दो है, इफ़ यू नो, मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया था। ओके, थोड़ा हम्म। कॉम्प्लिकेट हो सकता है, अगर ओवर ज़्यादा ही हो जाए ना तो मुझे बता देना। ओके, नहीं नहीं, गो ऑन। यहाँ पे R2 है। हम्म। अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल यूएस लाइक कंट्रीज तो ठीक है, हाँ बट हाँ लाइक साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, हाँ वहाँ पे हाँ। मोस्टली मोबाइल का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, राइट? हम्म। सो बहुत हाई चांसेस है कि लोग मोबाइल से ही अपलोड करें। ठीक है। द प्रॉब्लम विथ मोबाइल इज मोबाइल का नेटवर्क स्टेबल नहीं होता, फ्लक्चुएट करता है। हम्म। सो इसके लिए देर इज थिंग कॉल्ड रेज्यूमेबल अपलोड्स। यू कैन रिज्यूम, बहुत ओ- सारे इसमें देखा होगा। ओके, जहाँ पे अपलोड रुक गया है वहीं से वापस कंटिन्यू होगा। या ओके, रेज्यूमेबल अपलोड्स, तो गॉट फॉर इट। इसके लिए आई डोंट नो अल्टरनेटिव्स, बट देर इज वन प्रोटोकॉल कॉल्ड TUS। ओके TUS, ओके। ओके। TUS अपलोड URL है, सॉरी, TUS एक अपलोड का सर्वर बनाना पड़ेगा बट इसके लिए, ओके, हम्म बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन, हम्म। बिकॉज यहाँ से रिले होता है। ओके। एंड देर इज जो प्री सेंड URL पता है। हाँ। एंड आई डोंट थिंक सो तुम कभी ये करोगे कि मैं अपने ही मेन सर्वर से रिले कराऊंगा, नहीं लाइक जो अपनी, मेन नहीं नहीं API अपनी है, सर्वर राइट? से तो नहीं। तो यही दो ऑप्शन बचते हैं। ओके। यहाँ से एक R2 जाएगा, यहाँ से R2 में जाएगा। हम्म रेज्यूमेबल अपलोड्स तभी यूज करना जब कोई फाइल कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। हम्म। फॉर एग्जांपल 500 MB, लाइक हम्म इंडिया का बेस्ट केस है, इंडिया में लोगों को 1.5 GB मिलता है दिन का। हम्म। एंड फॉर एग्जांपल सपोज 200 MB की फाइल है, हम्म। बट वो रेज्यूमेबल अपलोड्स नहीं है, बीच में फेल हो गई, तो फिर से उसको 2 GB तो देना फिर से पड़ेगा। 200 MB उसको अपलोड हाँ करना हाँ, दो सौ पड़ेगा, एम बी देना राइट? पड़ेगा, हाँ सो इसीलिए हम रेज्यूमेबल अपलोड्स यूज करेंगे। हाँ। ये क्या करेगा, ये सारा जो रिकॉर्ड है हम्म वो रेडिस में रख सकते हो, या हम्म। फिर कोई और स्टोरेज, अगर DB ही यूज करना है, पोस्टग्रेस तो सभी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो यू कैन हम्म। यूज रेडिस टू, राइट? ओके, आई मीन पोस्टग्रेस टू, राइट? मैं गॉट रेडिस इट। यूज कर रहा हूँ बिकॉज रेडिस में वो AOF है, वो इनेबल कर दो, डिस्क पे लिख देगा, तो ओके, क्रैश भी हो जाए, रिकवर करके रीड कर लूंगा मैं। समझा। ओके, सो एंड इसमें तुम्हारे पास ये सारे चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन है क्या, लाइक क्या क्या आर्टिकल्स यूज़ किया है, कहीं पे स्टोर्ड है क्या डॉक्यूमेंटेशन? लाइक मैंने ऐसे कुछ एज सच आर्टिकल नहीं मिले मुझे। ओके। मैंने मोस्टली डॉक्स जो है, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन और परप्लेक्सिटी और मेरा जो AI है, ओके। उससे मोस्टली मैंने ये किया है। अगर आई मीन, अगर पॉसिबल हो तो शेयर करना, तो ये वाला अगर या इफ़ मैं शेयर पॉसिबल। कर देता हूँ, लाइक बीच में मैंने वो भी करा था ना, हाँ चाइल्ड हाँ प्रोसेस का डिग इन, हाँ हाँ तो वो हाँ। मैंने कर दिया था। इवन नहीं, चाइल्ड क्योंकि प्रोसेस पे भी आता हूँ, इसके इसका बिकॉज नॉलेज काफ़ी डीपली तुमने लिया है और काफ़ी सही है। या आई मीन, एक ये इसमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट वाज दिस स्कीमा, बिकॉज हम्म। इसका स्कीमा जो है किधर ही अवेलेबल नहीं है। ये खुद से बनाना पड़ा पूरा ये ना? खुद से बनाना पड़ा, बस एक हेल्प मुझे मिली थी, इफ यू नो मक्स। मक्स, नो, व्हाट इज दैट? मक्स भी एक सैस है फॉर ऑल दिस पाइपलाइन, ओके। बट उसका लाइक जो ये है, क्या बोलते हैं, प्राइसिंग जो है, हाँ हाँ। वो मतलब स्केल पे जाने पे फट जाएगा। अच्छा, मतलब लाइक बहुत ही बिल आना चालू हो जाएगा। समझ गया। आई मीन ये जो पूरा प्रोसेस है AWS भी देता है, बट हम्म। ऑफ कोर्स ये सब क्या करते हैं, फिर उनका थोड़ा परसेंटेज ऑफ कोर्स रखेंगे, तो उससे तुम्हारा प्राइसिंग फिर बढ़ जाता है। जैसे अभी अभी मेरे को क्या है ना कि ये जो तुमने पाइपलाइन बनाया ना पूरा, ये हम्म वाला भी चीज़ मुझे सीखना है अभी, क्योंकि अभी तक मेरा सर्वर साइड का ये सब चीज़ समझ में आ गया, बट अब जैसे मीडिया अपलोड हो गया, वो चीज़ में मेरे को ध्यान देना पड़ेगा अब। समझ गया। ओके, सी, व्हाट आई रिकमेंड इज, हम्म। अभी इसमें वीडियो तो आई डोंट थिंक सो कुछ होगा। नहीं, अवतार में वीडियो नहीं, सिर्फ इमेज होगा अभी। नॉट नॉट अवतार, लाइक ये जो ये फूड डिलीवरी है, राइट? हाँ हाँ, इसी में फूड डिलीवरी में फूड कस्टमर का डिलीवरी, इमेज जो अपलोड होगा, प्रोफाइल पिक्चर। हाँ हाँ, वो उस समझा, लाइक फूड डिलीवरी में वीडियो तो कुछ होगा नहीं, नहीं राइट? नहीं नहीं। एंड मीडिया में वीडियो का ही मेजर झमेला है, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट। ओके, सो व्हाट आई रिकमेंड इज फर्स्ट डू योर इमेज वाला थिंग, हम्म। एंड
लेटर डू एनीथिंग लाइक यूट्यूब है, कोई एलएमएस में भी यूज होता है ये सब। हम्म यूडेमी बनाना है, जितना भी वीडियो बेस्ड है, इवन दिस हम्म सेम सिस्टम विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर योर लाइव स्ट्रीम्स, इवन आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। या लाइव स्ट्रीम में बेसिकली क्या होगा, ये जो हमने पूरा फ्लो बनाया है ना, हाँ हाँ ये सब रियल टाइम में हो जाएगा। ओके लाइक अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे ब्राउजर में अभी यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग वाला चालू है, हाँ तुम्हारे इसमें इसमें विप यूज कर रहा है। देर हम्म आर टू, एक होता है आर टी एम पी आर है, टी एम पी आर आर टी टी एम पी एम राइट, पी आर हाँ टी एम पी प्रोटोकॉल। बट हम्म अभी लोग इस पे भी मूव कर रहे कि जो वेब आर टी सी है, हाँ हाँ व्हाट दे डू इज वेब आर टी सी से इंजेस्ट कर लेंगे, वेब आर टी सी वेब आर टी सी से इंजेस्ट करेंगे, हम्म इंजेस्ट। एंड ये जो जितना भी बाइट्स है, मैं रफली बता रहा हूँ बिकॉज मुझे वेब आर टी सी में अभी तक डिग इन करना है। हम्म इंजेस्ट करेंगे और रियल टाइम में एच एल एस डैश के चंक्स बना के स्ट्रीम करना चालू कर देंगे। एंड समझ दैट्स गया हाउ वी आई गेट टू सी यू ऑन यूट्यूब। एंड वो ऑफ कोर्स कुछ डिले तो होगा ही, हाँ वो बिकॉज एकदम यूट्यूब रियल टाइम में नहीं कर सकते। हाँ और यूट्यूब में ऑन एन एवरेज 5 से 6 सेकंड का डिले होता है एग्जैक्टली, बिकॉज सी वेब आर टी सी में डायरेक्ट कर दूंगा, बट उसमें अगर तुम्हें पता हो रिले करना पड़ता है। हम्म लाइक आई एक्सप्लेन यू, वेब आर टी सी क्या होगा, लाइक समझो बीच में कुछ नहीं है, ओके। हम्म मैं रफली बता रहा हूँ, ओके, आई एम नॉट लाइक लूजली बता रहा हूँ। हम्म वेब आर टी सी है, एंड ये समझो एक तुम हो और एक मैं हूँ, ठीक है राइट, सत्यम, एंड दिस इज अभी, ओके। ओके दिस इज पीयर टू पीयर कनेक्शन, पी टू ओके पी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ब्राउजर तुम्हारे ब्राउजर से कनेक्टेड है। हम्म प्रॉब्लम तब आएगी, लाइक जो होते हैं ना कुछ गेटेड सिस्टम, लाइक ऑफिसेस वगैरह में होता है, वेर यू कांट डायरेक्टली कनेक्ट टू मी, लाइक अभी कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू सत्यम, हम्म तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो उसमें क्या बेसिकली करना पड़ता है, ये जो सारा डेटा जो लाइक तुम्हारा जो वीडियो स्ट्रीम हो गया, ऑडियो हम्म स्ट्रीम हो गया, उसको रिले करना पड़ता है। ओके पहले वो उस रीले में जाएगा फिर वहां से तुमको या फॉरवर्ड होगा बट प्रॉब्लम इज दिस, फॉर एग्जांपल अभी अभी तो तुम्हारे लाइव वॉचिंग 23 है, राइट। हाँ लाइक जिनकी 100 के आते कुछ स्ट्रीमर्स के, राइट, हम्म गेमिंग की, गेमिंग कैटेगरी में हम्म 400 500 के एट ए टाइम देख रहे हैं। हम्म इसमें इमेजिन रिले सर्वर्स कितने लगेंगे। हम्म तो यहाँ पे क्या करता है यूट्यूब, इसको अभी मैं व्यूअर्स कर देता हूँ। हम्म यूट्यूब बोलता है चंक्स तो सेम ही है सबको भेजने, हम्म तो अब हम क्या करते हैं, अभी से कर लेंगे इंजेस्ट, हम्म उनको चंक्स बना देंगे हम्म और चंक्स को फैन आउट कर देंगे। फैन आउट, इफ यू नो, एक फैन बार में आउट सबको फेंक दो। ब्रॉडकास्ट जैसा ब्रॉडकास्ट, या ब्रॉडकास्ट जैसा, ओके वो ब्रॉडकास्ट कर दो ना। क्यों ही हम्म ऐसे एक एक कनेक्शन मेंटेन भी करना है। समझ गया इसमें 1 to 1 नहीं हो कि जैसे मेरे से डेटा लेके वन टू ब्रॉडकास्ट मैनी हो करके गया, 1 to many हो गया समझ गया सेम जियो, जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, ट्विच हम्म एंड ऑल, लाइक ये रफली बता रहा हूँ। मुझे भी इसमें जाना है बिकॉज अभी तो जस्ट मैंने ऑन हम्म डिमांड वीडियो स्ट्रीम क्रैक कर लिया है। हम्म सो या आर टू का बताता हूँ, ओके। हम्म आर टू में बेसिकली क्या होगा, मेरा एक यहाँ पे पूरा और एक, दिस इज माई क्लाइंट। ओके आई गेस आई हैव फाइल जहाँ पे मैंने इसका पूरा आर्किटेक्चर बनाया था। आई मीन आई गॉट दैट आर्किटेक्चर रिव्यू फ्रॉम गुरु टू। ओके जस्ट वेट, important docs, no, important files, no repo, yeah, is, yep, can you see this? यस So ये है मेरा क्लाइंट ओके ब्राउजर, ये ओके EC2 से कम्युनिकेट कर रहा है, ओके। हम्म रेस्ट एपीआई से, सॉरी, रेस्ट ओके एपीआई, रेस्ट एपीआई से कम्युनिकेट कर रहा है। रेस्ट एपीआई पे मेरा पूरा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, दुनिया भर के सारे चेक्स है। हम्म रेस्ट एपीआई बेसिकली क्या करेगा, ऑथेंट लाइक जितने भी चेक्स है वो चेक कर लेगा, ठीक है ओके, बंदा अपना ही है। फिर उसके लिए एक सिग्नेचर बना होता है, एचमैक, ओके एचमैक सिग्नेचर बनाएगा विद अ सीक्रेट, जो सीक्रेट टीओएस और रेस्ट एपीआई के पास है, राइट। ठीक है
R2 वो सिग्नेचर और एक अपलोड यूआरएल, जो टीयूएस वाला अपलोड सर्वर है मैंने डीकपल किया है। हाँ हाँ। इफ यू वांट टू, तुम अगर तुम्हारा ज़्यादा लोड नहीं है तो तो सेम ही मशीन पे होस्ट कर दो। समझ गया। EC2 भी सेम पे है, टीयूएस भी सेम पे। ठीक है। रेस्ट एपीआई एंड सपोज अभी अलग अलग है, ओके, तो ठीक इसका है। अपलोड, इसका यूआरएल भेजेगा रेस्ट एपीआई, तो रेस्ट हम्म। एपीआई मुझे टोटल 3 कंपोनेंट भेजेगा। वन इज टीयूएस अपलोड सर्वर का यूआरएल, ठीक है। सिग्नेचर की वेरीफाई करने, क्योंकि टीयूएस अपलोड के पास तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन चेक करने का मैकेनिज्म ही नहीं है। हम्म। एंड थर्ड इज जो सिग्नेचर बनाया है उसका पेलोड तो चाहिए, वेरीफाई कैसे करेगा, राइट? तो वो भेज देगा, ये 3 चीज़ें क्लाइंट को भेजेगा रेस्ट एपीआई। ठीक है। क्लाइंट वो सारी चीज़ें पास कर देगा टीयूएस अपलोड को। ठीक है। टीयूएस अपलोड 2 चीज़ें करेगा। एक वो S3 टीयूएस में डालेगा। अपलोड, नो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तक तो बस अभी पोस्ट है, 2 रिक्वेस्ट अच्छा। बनती है। अच्छा अच्छा, ओके। एक पोस्ट बनती है और एक पैच बनती है, ठीक ओके? है। वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है। टीयूएस अपलोड पे ये सारा मेटा डेटा, अपलोड यूआरएल से तो मुझे यूआरएल पे रिक्वेस्ट फेच कर दूंगा। ठीक है। सिग्नेचर मिलेगी, सिग्नेचर क्या करेगा, पहले टीयूएस सिग्नेचर को चेक करेगा कि ये जो सिग्नेचर है ये मेरे रेस्ट एपीआई से ही आया है या नहीं। ठीक है। बेसिकली यही देखना है कि ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है या नहीं। ठीक है। सेकंड की और एक होता है, लाइक मुझे इतनी ही फाइल का लिमिट साइज चाहिए, ठीक है। ओके, वो सब कुछ चेक कर लेगा। जैसे ही ये वेरिफिकेशन डन होगा, और एक है कि एक वैलिडेट करेगा। फॉर एग्जांपल, ओके, हाँ। डबल रिक्वेस्ट भेज दे कोई तो, ओके। एंड सपोज पहली वाली जो रिक्वेस्ट थी वो हम्म। अभी अपलोडिंग स्टेट में है, ठीक है। दूसरी भी जाएगी अपलोडिंग स्टेट में, तो डबल फाइल बन जाएगी। हाँ वो नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, EC2 से, अपना TUS सर्वर से हाँ। रेस्ट एपीआई में इधर GRPC हाँ हाँ। या HTTP रिक्वेस्ट कर लो एक एंड पॉइंट पे, ठीक है। एंड वैलिडेट कर लो कि ये कौन सी स्टेट में है फिलहाल अपलोड सेशन, ओके। एंड वैलिड है भी या नहीं, लाइक आईडी तो, आईडी से पता चलेगा वैलिड है या नहीं। ठीक है। होगा ही नहीं तो ऑफकोर्स थ्रो कर देगा 404। ओके। तो रेस्ट एप 4, कुछ भी, जो कुछ भी एरर होगा, लाइक रफली बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट से अगर कोई अपलोड कर रहा है, तो जब तक अपलोड पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो हम लोग वो रिक्वेस्ट ब्लॉक भी तो कर सकते हैं, ताकि वो वापस डबल रिक्वेस्ट ना भेज दे। नहीं नहीं नहीं, समझा नहीं मुझे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कोई रिक्वेस्ट, जैसे क्लाइंट 2 बार एक ही चीज़ भेज रहा है ना? हम्म। तो हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम जब अपलोड ले रहे हैं, तो हम लोग वो रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम जब तक पूरा प्रोसेस नहीं होता, वो रिक्वेस्ट ब्लॉक कर सकते हैं ना? हाँ तो वही होगा, सी, अच्छा। फर्स्ट रिक्वेस्ट भेज दी मैंने, हाँ हाँ। फर्स्ट रिक्वेस्ट भेज दी, क्या करेगा, पहले रेस्ट एपीआई से सब कुछ आ गया, ओके, हम ठीक रेस्ट है। एपीआई का क्लियर है, ठीक क्लियर है। है, राइट? हाँ हाँ। टीयूएस अपलोड पे देखते हैं, हाँ। टीयूएस अपलोड क्या करेगा, ओके, मेरे पास सब कुछ तूने भेज दिया, हम्म। मैं तेरे सारे क्रेडिट, पहले तो एचमैक्स सिग्नेचर ही चेक कर लूंगा, ठीक है। सिग्नेचर यही सर्वर पे चेक होगी। ठीक है। पेलोड को सीक्रेट के साथ साइन कर देंगे, ठीक है। अगर सेम सिग्नेचर बना हम्म। तो सही है, नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स कुछ तो गड़बड़ है, एंड रिजेक्ट। ओके। अगर एज सिग्नेचर भी सही है, पहले अभी हमें ये देखना है कि स्टेट क्या है इस पर्टिकुलर सेशन का, इन ऑन द वे तो नहीं है, ओके। इसीलिए हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे रेस्ट एपीआई पे। रेस्ट एपीआई देखेगा, ओके, स्टेटस अगर पेंडिंग है तो ही ग्रीन सिग्नल दो, पेंडिंग के अलावा कोई भी अगर स्टेटस होगा रिजेक्ट कर दो। समझ गया। वही हम प्रोपगेट कर देंगे क्लाइंट को टीयूएस से कि भाई रिजेक्ट हो गया है, अच्छा। अपलोड नहीं होगा वापस। तो सब क्लियर, यहाँ पे डुप्लीकेट तो बन नहीं सकता अभी। हाँ हाँ, समझ गया। अभी क्या होगा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट हुई थी, ठीक है। जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाती है, हम्म। पैच रिक्वेस्ट बनेगी कि ठीक है। फाइल सभी चंक्स में भेजना चालू कर दो टीयूएस को। ठीक है। अभी टीयूएस के पास स्टोर के ऑप्शंस है, अगर तुमको सीधा फाइल में ही ये करना है ऑन द सर्वर, तुम वो स्टोर कर दो, या फिर S3 से कनेक्ट कर दो, S3R2, या फिर GCS गूगल का हो गया, हम्म। एजोर का स्टोर हो गया, जो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। उसमें ये क्या करेगा, इसमें ज़्यादा कुछ तुम्हारा रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं होगा, बिकॉज क्या होगा, क्लाइंट जितने भी चंक्स टीयूएस को भेज रहा है, हाँ हाँ। टीयूएस लेजिट उसको उठा के सीधा S3 में पाइप कर रहा है। तो बेसिकली एक बीच में
पाइप ही है टीयूएस अपलोड सर्वर। बस समझा। टीयूएस क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है रेडिस के साथ में कि कितने चंक्स, कौन से चंक्स गए, हम्म। प्रोग्रेस क्या थी अपलोड की। सपोज बीच में अगर गिर गया, लाइक हम्म। जो कुछ भी है कैंसिल हो गया, नेटवर्क ड्रॉप हो गया है, कुछ भी नेटवर्क हो ड्रॉप गया। हो गया, कुछ भी हो गया, इंटरप्ट हो गया बेसिकली, हम्म। इंटरप्ट हो गया, ओके, वापस यूजर ट्राई करेगा। हाँ हाँ। अभी हेड रिक्वेस्ट जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर है, ये अपलोड हुआ था या नहीं, रेडिस में चेक करेगा टीयूएस कि था या नहीं। समझा? ताकि वो रेडिस में अगर प्रेजेंट हुआ तो उसके वहां से उसके बाद से वो कंटिन्यू हाँ, करेगा। एंड वो सेम। तुम कंट्रोल कर सकते हो कि कितने देर तक रहना चाहिए, लाइक 24 आवर्स, कितने आवर्स तक हम्म। वो मेंटेन होना चाहिए रिकॉर्ड। हम्म। अगर रिकॉर्ड है तो देखो कहाँ तक अपलोड हुआ था, वहां से कंटिन्यू हो जाएगा। समझ गया। अगर नहीं है तो भाई अभी स्टार्टिंग से ही करो। हम्म। एंड फिर S3 में जाएगा। अभी S3 में क्या है, S3 का खुद का मैकेनिज्म है नोटिफिकेशंस का। एसक्यूएस। SQS, हाँ, लाइक ये तो मैंने उठा लिया था, बट R2 में करते हैं CF वर्कर से। सपोज अच्छा। CF वर्कर्स है, CF वर्कर्स बेसिकली क्या करेंगे, बैच में लेंगे नोटिफिकेशंस को हम्म। और एंड पॉइंट कॉल करेंगे कि भाई कुछ तो आया है, कुछ तो आया है। हम्म। फिर तुम क्या करोगे, लाइक अपना S3 का जो SDK है हम्म। उससे सारे डिटेल्स निकाल, बेसिकली अभी तो क्या करोगे, यहाँ से नोटिफिकेशन आया है ना, हम्म। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो फाइल का जो नाम है लाइक आईडी, हम्म। वो यूनिक यही आईडी। आईडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सेशन का ही, बिकॉज इजी है, ये सेशन से ये फाइल गई थी, उसको ही स्टोर कर दो। समझा? समझ गया। ये हो जाएगा। शिट, पसीना आ गया, बट इट्स इंटरेस्टिंग। इट इज लाइक अ यू नो फ्लोइंग एंड स्टोरी फॉर है मी इट्स, पूरा। बिकॉज ये मेरा फर्स्ट इतना कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने चीज बनाई है हाँ हाँ हाँ। अपार्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो ओके, रेस्ट एपीआई में एंड पॉइंट कॉल कॉल हुआ। अब मैं स्कीमा पे आता हूँ। ठीक है। अपलोड सेशन में ये पूरा नहीं होगा, इफ यू कैन सी, यहाँ पे नल है, नलेबल है ये, न- अ, बकेट एंड ऑब्जेक्ट की, बिकॉज हम्म। मुझे अभी नहीं पता कौन से बकेट में जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट की होगा। हम्म। स्टोरेज प्रोवाइडर, इफ सपोज तुमको क्लाउडफ्लेयर R2 और गूगल क्लाउड स्टोरेज भी यूज करना है, हाँ हाँ। तो उसके लिए वो रिकॉर्ड है कि कौन सा स्टोरेज प्रोवाइडर में ये गया है फाइल। ठीक है। ओके, जैसे ही वहां से नोटिफिकेशन आएगा, बकेट बता देंगे कि भाई ये बकेट में है, हाँ। ये ऑब्जेक्ट की है। अब अपलोड सेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है मीडिया एसेट्स के साथ। ठीक है। कैन यू सी, अपलोड सेशन मीडियाज। आईडी। ओके। बट यहाँ पे मैंने रेफरेंस नहीं दिया है। क्यों? अब इसमें और एक कैच है, फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है अपलोड की, जैसे कि यूट्यूब पे आती है, ठीक है। अपलोड सेशन तो फ्लड हो जाएगा, पूरा भर गया। हाँ बट जो अभी फॉर एग्जांपल 3 महीने पुराने अपलोड सेशन है, हाँ। काम हाँ के तो है मेरे, हाँ बट हाँ। डीबी में क्यों रखूँ? ओके। तो मैं तो इनको कोल्ड स्टोरेज में डाल दूंगा बैकअप करके। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब मैं फ्लश करूंगा वो 3 महीने पुराने, हम्म। तो रेफरेंस जाएगा ना। ओ, गॉट इट। हाँ, वो डिलीट हो तो जाएगा। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, हम्म। आएगा यहाँ से ही, चेक भी होगा। इसके लिए जब भी इंसर्ट होगा अपलोड सेशन आईडी, हाँ। वो पता है बिफोर एंड आफ्टर ट्रिगर्स है, पीएल हम्म। एसक्यूएल वाले, डू यू नो? क्या? ट्रिगर्स होते, डेटाबेस ट्रिगर्स हाँ हाँ, बिफोर एंड बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर होते हैं, हाँ। हाँ, तो वो बिफोर ट्रिगर से पहले ट्रांजैक्शन मैं के पहले। हाँ, तो हम्म। वो ट्रिगर से देखूंगा भाई ये सेशन आईडी है भी या नहीं, बिकॉज मुझे ट्रस्ट नहीं करना ब्लाइंडली। अच्छा, मतलब डेटाबेस का फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स में नहीं घुसना है, तुम खुद से खुद ट्रांजैक्शन से का ही पहले देखो, चेक हाँ। कर रहे हैं। हाँ, समझ गया। वो कर लिया अभी, सो दैट मैं अभी बाद में 3 महीने पुराने फ्लश कर सकता हूँ समझ गया। सेशन। मीडिया एसेट क्यों, बिकॉज मीडिया एसेट का जो आईडी है, हम्म। यही आईडी जाएगा मेरे बिजनेस वाले टेबल्स में रेफरेंस। गॉट इट। समझा? हम्म। अब मीडिया एसेट में मीडिया कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे लिए बस इमेजेस और वीडियोस है और हम्म। ऑडियो है। अब इसमें डेरिवेशन है। वाई डेरिवेशन? जब मैं वीडियो कोई भी अपलोड करेगा यूजर, तो वीडियो ही डायरेक्ट अपलोड करेगा। हाँ हाँ।
मुझे ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने डिराइव किया है ये वीडियो से ये ऑडियो। और गॉट तो इट, फिर ये उसका टेबल में स्टोर रिलेशनशिप हो रहा है। मुझे मेंटेन करना है। तो ठीक है। उसका रिलेशनशिप डिराइव्ड एसेट्स में है। और यहाँ पे फॉरेन की यूज हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है। सी, हाँ हाँ, समझ गया। सेल्फ ही है, मतलब लाइक मीडिया एसेट में ही है रेफरेंसेस। इफ यू हम्म। सी ओरिजिनल, मैं ओके मैंने यहाँ पे ये नहीं किया है बिकॉज मुझे यहाँ पे कैप्चर करना है। सी, derived assets कंसर्न डेरिवेशन टाइप, मीडिया एसेट डेरिवेशन टाइप, ओके। फॉरेन की, ये रहा। गॉट इट। कैन यू सी, ये जो है मीडिया एसेट्स को ही फॉरेन कॉलम्स बता रहा है। हम्म मीडिया एसेट आईडी, मीडिया एसेट आईडी, बिकॉज एसेट्स होंगे स्टोर मीडिया एसेट्स में ही। हम्म। एंड अपलोड सेशन नलेबल क्यों है? बिकॉज जब मैं डिराइव करूंगा तब कोई यूजर अपलोड नहीं करने वाला। हम्म। वो सिस्टम जनरेटेड फाइल है, तो उसका अपलोड सेशन बनता ही नहीं है। ओके। तो वो नलेबल होना चाहिए। करेक्ट। अंडरस्टूड। तो डिराइव्ड एसेट में मैं बस रिलेशनशिप देख रहा हूँ कौन से एसेट से क्या मैंने डिराइव किया है। ठीक है। फिर मेटा डेटा, मेटा डेटा लगता है बिकॉज सी, मुझे नहीं पता क्या फाइल फॉर्मेट में क्या अपलोड कर रहा है यूजर। हम्म। तो मुझे पहले वो जो यूजर अपलोडेड ओडी ओरिजिनल जो फाइल है हम्म। उसका पूरा मेटा डेटा रिक्वायर्ड स्टोर करना है। ठीक है। कलर स्पेस क्या है, रोटेशन का एक लाइक कैच है, मुझे एआई ने बताया। हम्म। यू नो, अगर एंड्रॉयड में, आई डोंट नो आईओएस, एंड्रॉयड में यू कैन रोटेट योर इमेजेस। यस। तो वो रोटेशन स्टोर हो जाती है, जो मुझे नहीं पता था, इससे मुझे पता चला। अच्छा। लाइक फॉर एग्जांपल 90 डिग्री का जो 90 वाला जो था फोटो, उसको हम्म। मैंने देखने के लिए सपोज उसको लैंडस्केप कर दिया, हाँ तो उसका रोटेशन जो था हाँ। वो स्टोर हो जाएगा मेरे फाइल सिस्टम में मोबाइल के। और अच्छा। जब मैं उसको अपलोड करूंगा हाँ तो उसका जो रोटेशन था हाँ। वो भी स्टोर हो जाएगा। अब मुझे अच्छा। लगेगा भाई ने पोर्ट्रेट अपलोड किया है बट होगा लैंडस्केप, मैं कर दूंगा ट्रांसकोड किसी और चीज में ही, तो हम्म। इश्यू हो सकता है। तो इसीलिए ये सब, वाई, बिकॉज मैं पूरा पहले जान लूँ कि बंदे ने क्या अपलोड किया है। ओरिजिनली क्या था फाइल मेरा। हाँ, ओरिजिनल क्या अपलोड किया था। एंड फिर मैं क्या करूंगा, मेरे सिस्टम को जो रिक्वायर्ड है उसमें हाँ। ट्रांसकोड कर लूंगा। ओके। ओके। हम्म। सेम इमेजेस के लिए है, वीडियो के लिए है, ऑडियो के लिए है, सबटाइटल्स के लिए है। गॉट इट। नाउ दीज आर मास्टर प्लेलिस्ट, मास्टर प्लेलिस्ट टॉप पे है बट इस पे हम बाद में आते हैं। ओके। नाउ द फर्स्ट थिंग इज इमेज वेरिएंट्स। ओके। ओके। यहाँ पे मेन चीज है बिकॉज सी, एक है इमेज का वेरिएंट आईडी, ठीक है। और कौन से एसेट है, ये कौन सा एसेट है विच इज विच इज द मीडिया। मीडिया एसेट। हम्म। ओके। ओके। उसका फिर हाइट, वेट, कलर हाँ। स्पेस, ये मेरे स्पेसिफिक चीजें हैं। ठीक है। ओके। इसमें फिर इसमें इफ यू सी बकेट है, हाँ स्टोरेज प्रोवाइडर अगेन है, दो मैं हाँ। क्लाउडफ्लेयर R2 ही यूज कर रहा हूँ। इन केस में यूजर अपलोड्स R2 में रखूँ एंड मेरे प्रोसेस्ड फाइल्स S3 में डाल दूँ, हम्म। तो इसके लिए स्टोरेज प्रोवाइडर रखा है। ठीक है। देन देर इज योर बकेट हम्म। एंड ऑब्जेक्ट की, फिर ये क्रिएटेड ऐड वगैरह है ही। इसमें ओके। डिलीट अपडेट डिलीट नहीं है बिकॉज ये बन के ही आएगा, ये अपडेट नहीं होने वाला। डू यू गेट इट? या। बाद में देर इज वीडियो रेंडिशंस, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके। इसमें क्या होगा वीडियो रेंडिशंस में, जो मैंने बताया था बीच में हम 1080p 720p 480p बनाएंगे, हाँ, वो क्वालिटी चेंज रेंडिशंस। कर सकते हैं। या, तो क्वालिटीज की जो एक्चुअल वीडियो फाइल्स है, देर आर टू हाँ टाइप्स ऑफ फाइल्स। एक तुम्हारा चंक्स है, हाँ। चंक्स में फाइल नहीं यूज होता, वाई, बिकॉज आई टेल यू, एक वीडियो में से हजारों चंक्स निकल सकते हैं। ओके। तो इसमें भी तुम सीधा ऑब्जेक्ट की लिखा है मैंने हम्म। बिकॉज वो या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करूँ, बट यहाँ पे प्रीफिक्स होगा। मैं ये नहीं कर सकता ना कि यहाँ पे लिख देता हूँ सत्यम डॉट एम पी फोर। हम्म। ओके, यहाँ पे सत्यम डॉट एम पी फोर /segment1। हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो से 16,000 सेगमेंट निकले, ठीक है। तो मेरा डीबी हो गया भाई, फट उसमें ही जाएगा। भर गया। हम्म। करेक्ट। तो इसमें मैं हम्म। क्या करूंगा, उनको एक प्रेफिक्स के अंदर स्टोर कर दूंगा कि सत्यम/segment1, सत्यम/segment2, और सत्यम तक ही स्टोर करूंगा। ठीक है।
सो दैट जब सत्यम तक ये करूंगा तो सारे ही मेरे प्रीफिक्स एक्सेस कर लूंगा। अच्छा, समझ गया। समझा? हाँ, हाँ। लेकिन इसमें बस वीडियो ही फाइल ही है, ठीक है, अभी तक ये समझना, वीडियो रेंडिशंस में। ठीक है। फिर बाद में है वीडियो रेंडिशन सेगमेंट्स, ये एक तो अभी समझ गया होगा नाम से ही। सेगमेंट्स। यहाँ पे सेगमेंट्स स्टोर होंगे। हाँ, हाँ। पर तो जैसे लेकिन एक वीडियो से अगर 16,000 सेगमेंट स्टोर निकल रहा है, हाँ, तो कितना सेगमेंट यहाँ पे स्टोर हो रहा है? यहाँ पे सेगमेंट स्टोर नहीं होगा, सेगमेंट सीधा जाएगा स्टोरेज में, अच्छा। बिकॉज इट्स अ ब्लॉब। ओके, ओके। ब्लॉब ही होगा, राइट, आई मीन बेसिकली फाइल है वो, ऑब्जेक्ट हम्म, फाइल है। तो वो ये सारा स्टोर होगा, ये जो जितना भी है वीडियो रेंडिशन सेगमेंट्स, मैनिफेस्ट फाइल्स, हम्म। एचएलएस फाइल्स, ये सारे आपके स्टोरेज पे जाएंगे। ठीक है। एंड उनका मेटा डेटा, बेसिकली दिस इज मेटा डेटा, राइट। हम्म। एंड इसमें नाउ इफ यू सी, मैं यहाँ पर कहाँ पे गया, सी वेट, यूनिक फॉरेन की, हाँ, फॉरेन की वीडियो रेंडिशंस आईडी पे जा रहा है, अभी मीडिया हाँ। एसेट नहीं है। बिकॉज मुझे, रेंडिशन आईडी में जा रहा या है। बिकॉज हम्म। 1080p के सेगमेंट्स हो सकते हैं, 720p के सेगमेंट्स हो सकते हैं, ओके। ठीक है। हम्म। देन जाएगा प्लेलिस्ट में। नाउ देयर इज प्लेलिस्ट का थिंग। प्लेलिस्ट में क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे मैं फटफट बना रहा हूँ, 1080p है। हाँ। मैं अभी 1080p लेता हूँ, समझ लेना 720p 480p भी है। ठीक है। बना देता हूँ फिर भी कंफ्यूजन ना हो इफ समवन इज वाचिंग। 720, 480। 480 बस हो गया हम्म। तीन। ओके। ठीक है। अभी इनका एक बीच में लेयर है, ये ठीक है। सबका ही हो रहा है, ठीक है, मैं सबका इसमें डाल देता हूँ। लेकिन नॉर्मली इंडिविजुअली सबका इंडिविजुअल लेयर है, या कि सब एक ही साथ एक ही लेयर में नहीं नहीं कनेक्टेड नहीं, है? सबका इंडिविजुअल है ये। ओके, गॉट इट। ओके। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक स्टेज है कि इंटरमीडिएट फाइल्स बना दी, लाइक मैंने इनकी एक वीडियो फाइल ही सेव कर दी है। ठीक है। ओके। वीडियो फाइल्स हो जाने के बाद इनके सेगमेंट्स बनाएंगे। वाई सेगमेंट्स, इफ यू सी cmf in hls stream, cmf जो है कॉमन मीडिया एप्लीकेशन फॉर्मेट, हम्म। इसका ये है कि एचएलएस और डैश जो है दो प्रोटोकॉल्स, हम्म। इनको अगर देखोगे अलग फाइल फॉर्मेट लगता था सेगमेंट के लिए। तो ठीक अभी है। फॉर एग्जांपल, अभी इसमें मेरे तीन है ना, हाँ। 3 into 2, मतलब 6 छः। सेगमेंट्स तो मुझे ऐसे ही स्टोर करने पड़ेंगे, राइट। हम्म। सीमैफ क्या करता है, ये ब्रिज है एचएलएस और डैश के बीच में, हम्म। कि तुम्हारा सेगमेंट फाइल जो है वो रहेंगी एक ही, हम्म। सर्व तुम एचएलएस और डैश दोनों से कर सकते हो। ओके। सो दैट मेरा स्टोरेज का प्राइसिंग कम आ गया, लाइक यहाँ पे अभी फाइनेंस भी थोड़ा आ गया। हम्म। मुझे स्टोरेज का जो मेरा प्राइसिंग है, जो मंथली बिल आएगा, हम्म। उसको कम करना है। ठीक है। ओके। सो इंटरमीडिएट मैंने फाइल्स बना दी। हम्म। इंटरमीडिएट फाइल्स बनाने के बाद में यहाँ पे मैं सेगमेंटेशन बनाऊंगा, जो सीमैफ है वो सीमैफ आएगा। ओके। एंड अभी इसके बाद अगला स्टेज जो है, इसको बोलेंगे हम प्लेलिस्ट। अभी ये जो प्लेलिस्ट है, एच हाँ। एल एस प्लेलिस्ट, ये हर एक की होगी, 1080p इंडिविजुअली। 720p 480p, ये इंडिविजुअल हर एक बंदे का प्लेलिस्ट होगा। ठीक है। एंड देन देयर विल बी अनदर वन बिग मास्टर प्लेलिस्ट, ओके। जो इन सबको कंटेन करेगी, सारे प्लेलिस्ट्स को। ओके। अब इसमें क्यों होगा ये, ताकि स्विच कर पाए वीडियो प्लेयर बेस्ड ऑन यूजर्स यूज़र इंटरनेट स्पीड। प्रेफरेंस। या स्पीड ऑटो पे करेंगे तो स्पीड होगा, हाँ, हाँ। और अगर यूजर खुद से वॉलेंटरली कोई चूज करेगा कि मुझे 1080p में ही देखना है, हाँ, हाँ। तो वो वहां से स्विच कर सकता है। गॉट इट। ओके। एंड ओके। मास्टर प्लेलिस्ट में बस वीडियोस नहीं आती, फिर तुम्हारी ऑडियो सबटाइटल्स वो सब आ जाता है। ऑडियो में इंटरमीडिएट नहीं होता, सीधा सेगमेंट करके एचएस प्लेलिस्ट में डाल के मास्टर में डाल दो। हम्म। सबटाइटल्स का तो कुछ झमेला ही नहीं है, लेकिन दो सबटाइटल्स भी करते हैं, बट सबटाइटल्स में भी इशू होता है एक। बेसिकली इशू क्या है उसमें, कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, हाँ। वो दो सेगमेंट जो है हमारे, उनके बीच में स्पैन कर रहा है, और अगर अच्छा। मैंने हार्ड टाइम लिमिट लगा दी तो बीच में ही सेंटेंस कट कर देगा वो। ओके।
हमें इतना देखना नहीं है, वो शाखा पैकेजर मैनेज कर लेता है, बिकॉज और सी। एक क्वेश्चन है, वो या एक वीडियो से ट्रांजैक्शन निकाल सबटाइटल्स निकालने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? वीडियो से सब राइट नाउ मैंने वो नहीं किया इम्प्लीमेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज ओके। सी, मुझे अभी तक पहले ये देखना है कि मेरा वीडियो पूरा प्रॉपर मेरे मोबाइल ऐप और फ्रंट एंड पे दिख जाए। समझ गया, हाँ, ठीक है ठीक है। नाउ राइट नाउ आई एम नॉट स्टक बेसिकली, आई मीन वो पूरे एब्स्ट्रैक्शन लिखने में मुझे थोड़ा हम्म। टाइम लग रहा है। ठीक है ठीक तो है। आई एम स्टक एट HLS प्लेलिस्ट वाला पार्ट। ओके। TUS से स्टोरेज पे चला जा रहा है, हम्म। स्टोरेज से नोड पे मेरे ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है। आई हम्म। हैव टू प्रोसेस दैट नोटिफिकेशन कि डीबी में डाल दूँ। ओके। फिर देन डेटाबेस से अगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ये रहा, हाँ ये जो फ्लो है ना, ये वाला पूरा हाँ इतना हाँ सेगमेंट ये हाँ। कंप्लीट है मेरा। ओके। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, RDS में जाएगा। हाँ। RDS से एक वर्कर होता है, ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न पूछा था, याद है कल परसों मैंने। ओके, मैं ट्रांजैक्शन। एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न। ओके, ठीक है। SQS से जो रेस्ट API पे जो नोटिफिकेशन आएगा, हाँ वो तो मेरे रेडिस के बुल MQ में भी तो जाना चाहिए, हाँ हाँ। क्योंकि बुल MQ सी, तुम इसके थ्रू भी कर सकते हो पोस्टग्रेस से सीधा, हम्म रेडिस और बुल MQ की जरूरत ही नहीं है। बट उसमें क्या होगा, डेटाबेस लॉक करना है। हम्म सपोज मेरा ट्रांसकोडिंग वर्कर ही गिर जाए, हम्म ड्रॉप के हो गया, लाइक कुछ भी शट डाउन हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्रैश कर गया, हम्म तो मैं डेटाबेस का वो रोल लॉक तो हमेशा के लिए भी नहीं कर सकता। हम्म। उसके लिए फिर तुम्हारा हार्ट बीट वाला यूज होता है। हाँ हार्ट बीट देते रहो एक ड्यूरेशन हाँ पे। हाँ, पोलिंग बोलते हैं हार्ट उसको। ये पोलिंग नहीं हुआ यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो लॉक ड्यूरेशन है ना, हाँ। उसको एक्सटेंड करते रहना है। अच्छा अच्छा, लॉक ड्यूरेशन को एक्सटेंड करते रहना है, हाँ, ठीक है क्योंकि ठीक है। अब हमेशा के लिए रख दूंगा, ये गिर गया तो किसको पता है। ठीक तो है मुझे उसको एक्सटेंड तो करना पड़ेगा। अब सीन क्या है कि फिर राइट ऑपरेशन बढ़ गए मेरे डेटाबेस पे सीधा। ठीक है। एंड ये सारा मैकेनिज्म बुल एम की तो दे ही रहा है मुझे, हम्म। ऐसी फ्री में मिल रहा है बेसिकली। तो बस प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं RDS में भी लिखूँ और रेडिस में भी लिखूँ, हम्म बहुत हाई चांसेस है कि दोनों में से कोई एक फेल कर जाए। हम्म। तो फिर एक में एक को पता है, एक को पता ही नहीं है, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। वो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक आउटबॉक्स पैटर्न बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे मुझे अभी वो टेबल लिखना है हम्म कि ट्रांसकोडिंग की जॉब्स जो है ना मेरे, हम्म। वो सारे एक ही टेबल में रहेंगे। ठीक है एंड एक छोटी सी प्रोसेस रहेगी रेस्ट API पे ही, ठीक वही है। मेन इंस्टेंस पे, जो क्या करेगी, वो जो ट्रांसकोडिंग जॉब है उसमें से जॉब्स एक पोल करके क्यू में डालती जाएगी। अच्छा ठीक है। ओके, गॉट इट। फिर मैं गॉट क्या इट। करूंगा, मीडिया एसेट में तो मेरा जाएगा रिकॉर्ड, हम्म। ट्रांजैक्शन यूज कर लूंगा DB का, हाँ कि हाँ। मीडिया एसेट में भी जाना चाहिए और ट्रांसकोडिंग जॉब में भी सारे अगर जॉब्स दोनों बनेंगे, में से एक में भी फेल हुआ तो वापस रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक हो जाएगा। हाँ हाँ, एंड मेरा ठीक है वर्कर तो बैठा ही है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन जॉब वाले टेबल में जॉब आई कि भाई बुल MQ में ऐड कर दो, ठीक है एंड फिर यहाँ पे EC2 में मेरा वर्कर रहेगा जो पुल करेगा ठीक है। जॉब्स को पुल करेगा एंड प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस का यहाँ पे मेन रोल आता है। जो तुम वहाँ पे उस दिन सर्च कर रहा था, चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस, या जो मैंने हाँ पूरा हाँ वो रोड मैप भेजा था, हाँ हाँ हाँ। उसमें बेसिकली क्या है कि सी, अपना नोड जेएस तो सिंगल थ्रेडेड। हम्म। सिंगल थ्रेड में अगर मेरा बीच में कोई CPU बाउंड टास्क आ गया, हम्म तो बुल MQ अपना हार्ट बीट नहीं प्रॉपर दे पाएगा, हम्म अटक गया ना। अभी CPU बाउंड टास्क नहीं हो रहा तब तक मेन थ्रेड अनलॉक ही नहीं होगी। हम्म। तो बुल MQ तो गया। हाँ। एंड मैं क्यों ही मेरे मेन थ्रेड को एंगेज करूँ उस काम के लिए, लाइक मेन हम्म। थ्रेड इज मेंट फॉर दी सी, ये जितना भी है असिंग टास्क के लिए बना है बेसिकली हाँ नोड, लाइक हेवी वेट उतना ही वो झेल पाता है, CPU हाँ बाउंड के लिए है नहीं। तो हाँ। मैं क्या करूँगा, अलग सी प्रोसेस ही स्पॉन कर दूंगा। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। हम्म। इफ आई कैन शो यू, दिस इज इंटरेस्टिंग अ लॉट। वेट, नोड जेएस चाइल्ड प्रोसेसेस, प्रोसेस का जो फंडामेंटल है, हम्म। इसमें इफ यू सी, हर एक प्रोसेस को ना बेसिकली अपना एक CPU टाइम मिलता है। हाँ हाँ ओके, जो वर्कर थ्रेड्स इंप्लीमेंट किए ना, हाँ हाँ। या तो समझो प्रोसेस उसका लाइक अपग्रेडेड वर्जन, इवॉल्व वर्जन है हम्म। रफली। तो लेकिन वर्कर थ्रेड्स में प्रॉब्लम क्या है, वर्कर थ्रेड जो है हाँ हाँ
वो वही एनवायरनमेंट यूज करता है जिसपे जहाँ से वो स्पॉन हुई है। मेन प्रोसेस जहाँ से चल रहा है। हाँ, चाइल्ड प्रोसेस में क्या है, चाइल्ड प्रोसेस को सब सेपरेट एनवायरनमेंट ही मिल जाता है हाँ, अपना। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है ना कि हर एक जो प्रोसेस होता है ना उसका खुद का कॉन्टेक्स्ट होता है, एग्जैक्टली बेसिकली खुद क्या का कर रहे हैं मेमोरी हम, होता है। नोड जेएस से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नया प्रोसेस ही स्पॉन कर रहे हैं। हाँ हाँ। नोड जेएस ने हमें ब्रिज दी है, एपीआई दी है बेसिकली। हम्म। ओके, तो वो स्पॉन करेंगे ताकि अगर मेरा एफएफएम पेग का भी प्रोसेस डाउन हो जाए तो बुल एमक्यू उसको फेल्ड मार्क कर देगा, ना कि मेरे बुल एमक्यू को भी लेके गिर जाएगी। समझा? समझा। अगर सपोज अभी हैप्पी पाथ देख लेते कि मेरा एफएफएम पेग भी पूरा सब कुछ काम हो गया, हम्म। तो अभी क्या करेगा, एफएफएम पेग पहले इंटरमीडिएट फाइल्स बना के कर देगा अपलोड R2 पे। हेलो? हेलो। मैंने मेरा आवाज अटक गया था क्या बीच में? नहीं नहीं, वो R2 पे अपलोड कर देगा हाँ, एफएफएम पे को ना, चाइल्ड इंटरमीडिएट प्रोसेस फाइल्स करके। जो है, ये जो इंटरमीडिएट फाइल्स है हम्म। R2 पे अपलोड कर देगा। फिर ये जो पूरा काम है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। हम्म। ये काम है शाखा पैकेजर का। अच्छा। शाखा पैकेजर इज द सेम पैकेजर जो यूट्यूब पे यूज हो रहा है, अच्छा। ओके। बिकॉज इट्स अ यूट्यूब प्रोडक्ट ओनली, शाखा पैकेजर। गूगल प्रोडक्ट। या बेसिकली गूगल प्रोडक्ट, हम्म। ओपन सोर्स है, यू कैन जस्ट ओके। पुल इट्स डॉकर इमेज। ओके। ये पूरा जो काम है ये शाखा पैकेजर देख लेता है। सेगमेंटेशन और प्लेलिस्ट बनाना। प्लेलिस्ट वाला, ठीक है। ये भी समझ लो, ये भी लाइक पूरा मास्टर है। प्लेलिस्ट ऑल्सो, या ओके। एंड ये मैंने डेटाबेस में तो मैं बस मेटा डेटा स्टोर कर रहा हूँ। ओके, अच्छा। ये एक बार हो गया, हाँ। फिर जो मेरे बिजनेस, अभी तो बिजनेस वाले स्कीमा नहीं बना है, इट हम्म। विल बी ऑन चैनल। ये जो है चैनल, चैनल के वीडियो आएंगे। ओके। तो वीडियो में वो मीडिया का जो मेन मीडिया एसेट जाएगा, वेट, मीडिया एसेट आईडी मिलेगा मुझे। हाँ। वेट, यहाँ पे मीडिया एसेट आईडी है, एक मीडिया एसेट सेकेंड, आईडी। हाँ। मीडिया एसेट आईडी से मैं भेज दूंगा सीधा मास्टर प्लेलिस्ट। जो ठीक है। एसेट आईडी जो है वो मीडिया एसेट से बाइंड है, ठीक है। तो मास्टर प्लेलिस्ट भेज दूंगा। बाद में तुम्हारा पूरा जो एडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग बोलते हैं, बीआर, हाँ हाँ, अडैप्टिव बिटरेट वो स्ट्रीमिंग। या वो काम करना चालू हो गया, बिकॉज मास्टर प्लेलिस्ट में तो सब कुछ है। अच्छा, समझ गया। तो एक एक बार मास्टर प्लेलिस्ट वाला प्रोसेस मतलब वहां तक पहुंच गया। मास्टर प्लेलिस्ट इज लाइक फाइनल बॉस। ओके, गॉट इट। तो वहां से फिर अडैप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग करके हम लोग या स्ट्रीम फिर कर तुम्हारा सकते वो हैं। जो मीडिया एसेट है वीडियो वाला, हम्म। मतलब उसका लाइफ साइकिल खत्म हो गया उधर। समझ गया। फिर वही रिकॉर्ड कर दो, रेफरेंस से फिर वो पास ऑन होते जाएगा। ओके। तो ये वाला पूरा पाइपलाइन बनाने जो तुम सीखा वो, हाँ, लाइक एआई, इसी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशंस। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। किमी। कीमी। किमी इसीलिए बिकॉज सी, क्लॉड का तो तुम्हें पता ही लिमिट लग जाता है। लिमिट तो उसमें बहुत है। किमी किमी उसका कंपिटिटर ही है, ठीक एंड है। किमी कोई लिमिट लगाता नहीं है, हम्म। सो किमी यूज कर लो। ठीक है। एंड परप्लेक्सिटी फॉर द सोर्सेस, सोर्सेज, ओके। एंड सोर्सेस से फिर पढ़ो कि कैसे किया है। गॉट इट। हाँ या दैट, वो परप्लेक्सिटी अभी तक मैंने उतना यूज़ किया नहीं है, वो मुझे करना चाहिए क्योंकि उसमें सोर्सेज बहुत अच्छा मिलता है परप्लेक्सिटी या में। वो सोर्सेस का एकदम सी, कभी कभी है ना चैट जीपीटी सोर्सेस खा जाता है, बताता ही नहीं हाँ, है। बताता नहीं है, सही बात है। एंड चैट जीपीटी का यूआई इज वर्स्ट, दे शुड रियली हैव सम गुड फ्रंट एंड वो लोग इंजीनियर्स। जानबूझ इसके पीछे भी बिजनेस रीजन है ना, क्योंकि वो लोग को पता है कि मेरे जैसा लोग बैठा है जो जीपीटी से आधा अपना प्रोडक्ट बना लेता है। हाँ, तो वो लोग वो भी है। जानबूझ के डिटेरियोरेट कर रहा है ताकि हम लोग कोडेक्स में जाए या फिर एआई कोडिंग एजेंट्स हाँ की हाँ, तरफ जाए। कोडेक्स भी है ना, हाँ यार। तो वो लोग लाइक चैट जानबूझ के। जीपीटी को इतना, लाइक सी, चैट जीपीटी मोस्टली इन जनरल होता था हाँ कंसिडरेशन। हाँ हाँ। क्लॉड का सी, क्लॉड बूम ही हुआ कोडिंग पे, टू हाँ, बी वेरी, वरना क्लॉड को पहले इतना नहीं कोई पूछता था। अंथ्रोपिक बहुत पीछे था क्लॉड के पहले। या हम्म। तो इस पे ये इन्होंने फिर क्लॉड कोडिंग में आ गया, तो चैट जीपीटी वाले बोले ओके भाई, यहाँ पे टोकन कंजम्पशन है कोडिंग में, कोडेक्स लॉन्च कर दो। बट स्टिल तो आई एम ऑल्सो लाइक जस्ट लाइक यू, आई एम, मेरे पास कोई नहीं है। हाँ मुझे हाँ परप्लेक्सिटी का बीच में ये मिला था, एयरटेल का होता है ना, हाँ, रिचार्ज कर दो तो मिल सब्सक्रिप्शन, हाँ जाता है। हाँ तो वो मिल गया था, तो उसका मैंने ये जो जब था, लाइक वो हाँ एंड एंड में लाइक खत्म होने आया था, हाँ हाँ। तभी मैंने प्रोजेक्ट के बारे में आइडिएशन चालू किया था। हम्म। तभी बोला अभी ये सब्सक्रिप्शन यूज करने का मेन टाइम है, हम्म। पूरा सोर्सेस निकाल लो, सब कुछ कर लो, समझ गया। एंड दैट्स इट।
बुल एमक्यू का है, बुल एमक्यू हैव टू डू ये मोर। ये ऑब्सिडियन में चेकबॉक्स कैसे बनाया? ऑब्सिडियन में सी इफ यू गो जस्ट हियर, यहाँ पे गया मैं, सी एक है डैश, देन स्पेस, ओके, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, ओके, स्पेस, यहाँ पे जाना, बाहर निकलना ब्रैकेट के, स्पेस एंड डन। ओके, गॉट दिस इट, इज हाउ यू विल डू इट। गॉट इट। आई जस्ट डू टू ट्रैक द स्टफ। या ये काफी काम का, इट इज वेरी लाइक यूजफुल। चेक पॉइंट्स में भी, नॉट दिस वन, मैं हटा हम्म। दिए शायद। इसमें मैं चेक पॉइंट लगाता हूँ, क्या आई हैव टू डू दिस। एंड ये ओके। कॉन्टेक्स्ट में भी काम आता है ना, हाँ हाँ, कॉन्टेक्ट वरना यही तो चैट जीपीटी ड्रिफ्ट कर जाता है। वही तो ऑब्सीडियन तो इसीलिए काम, लाइक शायद तुम ही मेरे को सजेस्ट किया था ऑब्सीडियन यूज करना। मैंने भी जस्ट इंस्टॉल किया था। लाइक सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोशन पे हाथ एकदम सुपर बैठा है हाँ सबका हाँ इनिशियली। हाँ। ऑब्सिडियन थोड़ा अलग हो जाता है, बट और स्टिल ऑब्सिडियन क्यों, कि भाई मेरा डेटा मेरे पास है। हाँ, और इन दी एंड ऑब्सीडियन डॉट एमडी फाइल में ही स्टोर करता है डेटा। एग्जैक्टली exactly. तो मैं वो सेम एमडी फाइल है ना, यू कैन हाँ। टेक इट टू योर नोशन। तो मैं क्या करता हूँ, हम्म। नोशन को बैकअप यूज करता हूँ एज अ स्टोरेज, हम्म। एंड इस पे सारा काम करता हूँ। बिकॉज सी, ये ओपन सोर्स है ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट दैट मच, लाइक मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता इस पे कि मैं कोई भी हम्म। गूगल टाइप प्लगइन यूज कर लूँ और मेरा हाँ ड्राइव का हाँ, एक्सेस दे दूँ। सही बात, नहीं नहीं, सही बात है। तो ट्रू। इसलिए, या, सही है। दिस इज योर नटशेल एंड दिस काफी इज अच्छा एक्सप्लेनेशन था योर सत्यम, लाइक काफी अच्छा। और टेक्स्ट स्टैक है, पर्न स्टैक है कि मर्न स्टैक है? पन पन पर्न। ड्रिजल स्कीमा है ये। और ड्रिजल है ना, हाँ हाँ ठीक है। दिस इज ड्रिजल एंड दैट्स इट, दिस इज मोनोरिपो। ओके। वन मोर थिंग आई हैव टू सजेस्ट यू, टर्बो मैंने मैंने बहुत देखा रहेगा, लाइक मैं एज इफ मैं टर्बो रिपो का ब्रांड एम्बेसडर ही हूँ, एंड पीएनपीएम, बट पी एन इट्स पी एम रियली कूल, लाइक कूल है वो। फिल्माटो एंड देन मैंने क्या लिखा था इसका, डेव टूल्स, पीएनपीएम डेव टूल्स अलार्म, सी, ये मुझे मेरे प्रोजेक्ट का पूरा कनेक्शन दिखा देता है ओ ये काफी मोनोरिपो सही है, का। ये वाला चीज, ये काफी सही है, ये तो वाला इफ चीज। यू गो, पैकेजेस में बता रहा है हाँ ये हाँ। जो मेरे सारे पैकेजेस है, पैकेजेस एंड एप्लीकेशंस, ये सारे इन किस पे क्या डिपेंडेंट है। हम्म। तो इफ यू सी कॉन्स्टेंट्स जो है, बेसिकली मेरे कॉन्स्टेंट्स क्या, एक्सप्लेन यू, फॉर एक कॉन्स्टेंट फाइल दिखा देगा, कॉन्स्टेंट्स में मीडिया में गया, सी सपोर्टेड मीम टाइप्स, एम आई ओके। एम, मीम ही बोलते होंगे, आई डोंट नो, अपलोड टाइप हो मीमी गया। बोलते हैं शायद। बेसिकली ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट फाइल जो है वो क्या वैल्यू होंगी वो सारी स्टोर कर रहा है, ओके। हम्म। जैसे कि स्टेटस है, नाउ आई विल शो यू द कनेक्शन, ओके। ओके। डेटाबेस में जाना और मीडिया में इंडेक्स, ओके। ओके। एंड मुझे ये जो था, कहाँ गया कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स एसआरसी मीडिया, अरे यार, ओ यार इसको याद है, एंड इसको इफ यू सी मैंने यहाँ पे मीडिया कॉन्स्टेंट्स इंपोर्ट किए, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये मेरा फंक्शन है, बेसिकली कुछ नहीं, देख कि भाई ये एरे में है या नहीं, अच्छा, वैल्यू। बेसिकली वो मीडिया कॉन्स्टेंट मतलब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल होना चाहिए, या वो इसको ऐसा क्या चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, मैंने भी चैट जीपीटी से ही सीखा है। हाँ, ये वाला मैंने भी वहीं से सीखा या है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड हम्म। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स जो बना है, दिस इज नथिंग बट जॉर्ड स्कीमा, हम्म। क्रिएट अपलोड सेशन स्कीमा। ओके। सी, चैनल का है, चैनल में कुछ ज़्यादा है, ऐड चैनल सोशल लिंक का स्कीमा। ओके। तो दैट क्या होगा, ये जो मेरे सारे जो है, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, हाँ हाँ। क्लाइंट है, एडमिन जो बाद में होगा, एडमिन इज बेसिकली सपोज यूट्यूब के जो स्टाफ है वो एक्सेस करेगी, हम्म। एंड एड्स वाला वर्कर मीडिया, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, हम्म। इसके ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, सो दैट ड्रिफ्ट ना करे। कभी हम्म। कभी होता है, सी अर्ली डेज में होता होगा, बैकएंड पे मैंने कुछ वैल्यू भेजी है, हाँ फॉर एग्जांपल कैंसल को कैंसलेशन लिखा है बैकएंड पे, हाँ हाँ फ्रंट एंड से कैंसल्ड भेज रहा हूँ मैं, हाँ हाँ हाँ। तो भले मैं करेक्ट हूँ, बट वो स्पेलिंग की वजह से वो मिसमैच हो रहा है। मिसमैच हो बट जाएगा। यही अगर मैं पूरे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स दे दूंगा, बेस्ट केस इज शैडसेन के ड्रॉप डाउन्स, हम्म। उसमें ये ड्रॉप डाउन
ड्रॉप डाउन में बेस्ट होगा, बिकॉज़ ड्रॉप डाउन में ये सेम वैल्यूज़ जाएँगी, हम्म। कोई अलग सी वैल्यू तो जाएगी ही नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा है वही लाइक दिखेगा। कोऑर्डिनेटेड होगी, सिंक होगा ओके। सिस्टम एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि बैकएंड कोई अलग वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है ओके। और फ्रंट एंड या फिर कोई और जो मेरी सर्विस है वो कुछ और भेज रही है। नाइस। सो या ये दैट्स इट। वाला प्रोजेक्ट सत्यम, लाइक इसको ना एंड टू एंड करने से, लाइक इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आई हैव सीन। या आई मीन इसमें लाइक सी मैं बेसिकली यूट्यूब क्लोन ही बना रहा हूँ, हम्म। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। बट यूट्यूब क्लोन में भी देखोगे ना, अगर ये पार्ट हो जाता है, ऑफ हाँ कोर्स हाँ। यूट्यूब तो बहुत ही मतलब उनके स्केल पे तो अलग ही लाइक है दे वो। हैव मोर देन 1000 एम्प्लॉइज, तो ऑब्वियसली दे कैन या स्केल इट टू 10 लाइक टाइम्स अगर मोर। मैं बताऊँ एट ए टाइम हाउ मैनी वीडियोस आर अपलोडेड टू यूट्यूब इन ए मिनट, नंबर बता, नंबर्स लाइक सी पर मिनट हम्म। 2,500 से 3,000 वीडियोस अपलोड हो रही है। सो जस्ट पर इमेजिन देयर मिनट। स्केल पर मिनट। एग्जैक्टली। अब वो वीडियो कितनी भी हो सकती है, कोई पॉडकास्ट है 4 घंटे का, जैसे मेरे स्ट्रीम 5-5 घंटे का होता 5 घंटे के है। लाइक इवन इफ यू सी अपना जो फ्री कोड कैंप है, भाई हम्म। 24 घंटे की वीडियो भी अपलोड करते हैं। वही ना। अरे एंड ऑल दिस फॉर अपना फ्री। टेल्यूस को 60 आवर्स का वीडियो डाला था, या 60 आवर्स। वो पूरा जावा एकदम एंड टू एंड। ओके। सो इमेजिन वो जो है, हम्म। एंड ऑल दिस फॉर फ्री। या एग्जैक्टली। लाइक मेहुल मोहन पता है, हाँ, मेहुल मोहन, उसका यूट्यूब चैनल उसने मैंने एक देखा है। वीडियो बना था, उसने एक बना था कि लाइक एक्सेप्ट गूगल, हम्म। लाइक बिजनेस के टर्म्स में यू कांट रन यूट्यूब प्रॉफिटेबली एवर। करेक्ट। लाइक यूट्यूब, सी गूगल के पास तो इंफ्रा तो है ही, हम्म। तो सब्सिडी मिल जाती है यूट्यूब प्लेटफॉर्म को कि है ही इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं हम्म। कर लेता हूँ। इट्स लाइक तुम्हारे डैड का कुछ काम है हम्म। एंड इसी वजह से बचपन में तुमको गेम्स खेलने के लिए पीसी मिल गया। हाँ हाँ हाँ। इट्स जस्ट लाइक दैट। एग्जैक्टली exactly। और यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा कॉस्ट तो सेव हो रहा है जीसीपी के वजह से, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। वहां से वो लोग का आधा कॉस्ट सेव हो जा रहा है गूगल का। और वो लोग रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं एडसेंस से, उसके बाद प्रीमियम से। तो या वहां से। एंड एडसेंस में क्लाइंट्स भी तो यूट्यूब से ही आ रहे हैं। वही ना। लाइक इट्स लाइक डॉग फूडिंग, एक सर्विस हम्म। दूसरे सर्विस को लाइक फीड कर रही है। वही वही। और लेकिन पता है, लेकिन ये वाला जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, इसमें द बेस्ट थिंग इज इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल यूट्यूब क्लोन जो लोग लोग मतलब एंड टू मतलब यूट्यूब में नॉर्मली बना रहे हैं। इसमें क्या है कि यू आर एक्चुअली थिंकिंग लाइक एन इंजीनियर कि यहाँ पे मेरे को वीडियो स्ट्रीम कैसे करना है, वीडियो को अपलोड कैसे करना है, लाइक एग्जैक्टली। वहाँ पे मेन चीज़ यहाँ, क्योंकि देखो यूआई बनाना इज वेरी इजी। एक एक सी जीपीटी एलेक्स, प्रॉम्प्ट अगर मारो, यूआई सिंपल बन यूट्यूब जाएगा। क्लोन बनाऊं ना, मैं सिंपल यूट्यूब क्लोन, हम्म। सी आई टोल्ड यू बनी सीडीएन, हम्म। मैं सीधा बनी सीडीएन पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, हम्म। मुझे यहाँ पे वीडियो दिख जाएगी, हो गया यूट्यूब क्लोन। वही ना। राइट। लाइक सी बीच में लाइक मैं जब सेकेंड ईयर में था, हाँ हाँ। तब यही था कि लाइक नेटफ्लिक्स क्लोन, स्पॉटिफाई क्लोन। हम्म। स्पॉटिफाई क्लोन के नाम पे भाई यूआई क्लोन ही है वो। वो वही तो, ये सारे यूट्यूब में वही मिलेगा। एंड मैं खुद फंस गया था उसमें, लाइक ब्रो स्पॉटिफाई क्लोन सिखा रहा है। एंड मैंने स्पॉटिफाई का भी किया था, लाइक आई टेल यू व्हाई आई हेट माय कॉलेज, नाम नहीं लूंगा डिफेमेशन केस आ जाएगा। ना। लाइक मेरे इसमें ना उनका कुछ ज्यादा, लाइक इट्स अ पीआर मशीन ब्रो, इट्स अ हम्म। पीआर मशीन। सिखाना छोड़ दो, लाइक मेरे कॉलेज के नाम में भी ना हाँ। आर्ट्स पहले आता है, साइंस एंड में आता है, चलो हिंट मिल गई। ओके। सो उन्होंने क्या किया था, सी एक तो वो बताया था मैंने कि जावास्क्रिप्ट बाद में और रिएक्ट जेएस पहले सिखाना है। एंड मैं एकदम है ना एक्साइटेड था, मैंने हम्म। सिलेबस देखा था, हाँ हाँ। सिलेबस ऑन पेपर सुपर्ब था। हम्म। एंड मैं उसी वजह से, एक तो सिलेबस और फेस्ट, हम्म। ओके, हम्म। मैं बोला फेस्ट तो है ही, मतलब बाकी इफ यू नो कॉलेज लाइफ होती है तो वो तो सॉर्टेड है। हम्म। सिलेबस भी सही है तो मतलब पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लूंगा कि भाई हाँ, कि यहाँ सिलेबस पे भी ये सही सीखने है। मिलेगा, वो सीखने मिलेगा, हाँ, हाँ। और कॉलेज का रेपुटेशन भी बाद में पता चला क्यों अच्छा है, लेकिन पहले तो अच्छा ही था। हम्म। तो मैं बोला सब तो लाइक विन विन सिचुएशन क्या ही हो सकती है इससे और।
वही। गया मैं, सेकंड ईयर स्टार्ट, फर्स्ट ईयर में तो कुछ होता ही नहीं इफ यू नो। 11 12 को ही पढ़ाते रहते, लाइक हम लोग के कॉलेज में पता है, लकड़ी हम लोग को मजदूर का काम नहीं होता, लकड़ी छीलो, हाँ लकड़ी काटो। या एग्जैक्ट, मैं बीटेक नहीं किया, मैंने बीएससी किया है। हाँ हाँ। बिकॉज सी 11 12 में, सी आई टेल यू एकदम पूरा मेरा जर्नी। हम्म। स्टार्ट किया था गेम डेवलपमेंट से। ठीक है। कि मुझे गेम डेवलपर बनना है, हम्म बिकॉज गेम डेवलपमेंट इज कूल। हम्म नॉट लाइक कूल, बिकॉज मुझे गेम खेलना पसंद है, तो बनाना किसको भी पसंद है। इंटरेस्ट था। या तो इन हम्म। चालू किया, कोडिंग कोडिंग चालू किया, लाइक तो मैंने 11 12 में बाईफोकल लिया था। कि वहां से बाइफोकल। तुम, या बाईफोकल इज यहाँ पे, सी आई डोंट नो अबाउट बंगाल, हम्म। बट यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई में हाँ हाँ। 11 12 इज योर जूनियर कॉलेज। या या दैट आई नो, उसका काफी मीम्स देखे हैं मैंने। या स्कूल 10th में ही खत्म हो जाती है। तो हाँ। सबको लाइक तभी से ही चुल मचती है कि हम्म अब भाई 11 12 होगा, अब होंगे मजे। हम्म। लेकिन हमारे मजे के टाइम पे कोविड आ गया। ठीक तो है। गया 11 12 तो गया। ठीक तो है। मैंने बाईफोकल ले लिया था, मैं बोला इससे अच्छी डील और क्या ही हो सकती है। हम्म बट स्टिल अगेन डिसअपॉइंटेड, कुछ नहीं सिखा रहे। लाइक टीचर्स वर आल्सो गुड, आई वोंट ब्लेम देम। हम्म बट वो लाइक सिचुएशन ही थी वैसी, कोई था ही नहीं मोटिवेटेड। सब मजे ही कर रहे लॉकडाउन में। हम्म वो सब हो गया। एंड देन कॉल वो, उसमें मैंने सी प्लस प्लस सीख ली, बिकॉज अनरियल इंजन सीखना था। हम्म। छोटा सा कोई यूडेमी की कोर्स से गेम बना दिया। ठीक है। एंड देन 11th अपना ये डिग्री में आ गया, बिकॉज सी मुझे पता था मैं जेई दूंगा। उसकी हाँ। प्रिपरेशन करने में टाइम पास होगा, बिकॉज पीसीएम मैंने उतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। कोडिंग ही है जो जिसने मुझे 12th भी अच्छे से पास करा है। ठीक है। बाइफोकल नहीं लेता तो फिर तो मैं गया ही था। फिर तो मैं गया था सीधा। ठीक है। उसके ओके। बाद। उसके बाद अपना डिग्री में आया, एंड एज आई टोल्ड यू 12th के बोर्ड्स के टाइम पे कुछ और शिट भी होती है। हाँ हाँ, आई कैन तो वो रिलेट। भी हो गई। आई कैन रिलेट। तो वो भी हो गई, मैं बोला शिट भाई, ये सब हो गया। क्लियर माइंड करना है तो क्या, तो यूल डू व्हाट यू लव। हम्म। तो मैं काम करता हूँ, ये सीईटी लाइक महाराष्ट्र का सीईटी एग्जाम होता है। हम्म। एंड जेडब्ल्यू देता ही नहीं हूँ, ठीक है। बिकॉज वहां पे मेरे हारने के चांसेस ज्यादा है ना। हाँ हाँ। वहां खेलता हूँ जहाँ जीत सकूं। तो हाँ। मैंने किया कि भाई जावास्क्रिप्ट कर लेते, वैसे भी ऑन द वे था। हम्म यूडेमी पे कोर्स खरीद लिया। एंड इट वाज माय वन ऑफ द बेस्ट 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। हम्म जो बहुत सुपर है, लाइक उसने प्रॉपर पीडीएफ्स देता है वो अपडेट हम्म। करके भी। अभी भी आते नोटिफिकेशन कि वो मैक्सिमस करके मैक्सी कुछ है क्या? नहीं नहीं मैक्सिमस नहीं, जॉन्स, उनके एक तो सरनेम भी अजीब से है। अच्छा अच्छा। आई शो यू, वेट, आई मीन ओके। नहीं, नहीं दिखा भी नहीं सकता। पेड है Archix, लेकिन hello पेड है। Archix, welcome to stream. आप बंगाली हो? No no, Archix, I'm from, my family's from Jharkhand. I live in West Bengal. Okay, 9 games. What's up, 9 games? Prathamesh. Prathamesh is asking, what do you do, Satyam? आई एम अनएम्प्लॉयड मैन। Okay, hello, Mehmet. Welcome to the stream. PNPM yarn is good. NPM is the oldest one now. Yup. See, I also need to start learning how to use PMPN. अरे कार्तिक ने बता दिया भाई ना। Uh, okay, I'm सब also from सी वो Kolkata. जो Or बोला six. था ना, Kratik, we आर्ट्स like. एंड Okay, साइंस वाला। वो बड़ा हिंट था. Okay. या वो बड़ा हिंट था। Archix कहाँ से हो आप? I'm from Kolkata, Archix. अनएम्प्लॉयड आस्क लॉबी में आ कार्तिक, गए. वो भी उसी कॉलेज से है क्या? Kratik, I from the same college. इफ यस यू आर कुक्ड। Okay. या आई मीन तभी मैंने समझा, इवन इफ यू सी कोई वेस्टर्न लोग जो होते हैं, हम्म। वो कभी नहीं बोलते कॉलेज में जाके तुम्हारी पढ़ाई होगी। वही वही, वो लोग सिर्फ एक्सपोजर के लिए ही बोलते हैं कॉलेज जाओ. बाकी. एक्सपोजर होगा एंड यू जस्ट गो एंड हैव फन। हम्म या सो ये सब हो गया। एंड फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही चला गया फेस्ट वगैरह में। हम्म कुछ सीरियस इतना सिखाया भी नहीं था, लाइक वही बेसिक्स ये कर रहे हैं। एक हम्म। अच्छी बात है कि वो इंजीनियरिंग वाला कारपेंटर वो वाला स्किप हो गया मेरा। हाँ, हम लोग में था, बीटेक में था. या मेरा दोस्त ने बताया मुझे कि भाई ये सब कर रहे हैं, मैं बोला क्या, तूने सीएससी ली है ना, तू कहाँ ये अलग लॉबी में जा रहा है कारपेंटर होके। अरे यार, पूरा 11 12 इसी में निकलता है. या एंड देन ही एक्सप्लेन मी कि नहीं भाई ऐसे होता है, मतलब थैंक गॉड। बिकॉज सी इवेंचुअली सीएससी फिर 3 साल की हुई। फिर मैं बीएससी लूँ या बीटेक, हम्म. वो ले लिया। Orchix, I know place in Kolkata, that's why I'm asking. I'm from Fulbagan, Orchix. Okay. या सो सेकेंड ईयर आया। आई एम हम्म. एक्साइटेड एज एएफ ओके. कि भाई रिएक्ट सीखेंगे, फिर तो बस ही बस।
एंड तब एआई था नहीं ना उतना स्ट्रांग। हमारे कॉलेज में थर्ड ईयर में जावास्क्रिप्ट सिखाया था, पता है? थर्ड ईयर में? जावास्क्रिप्ट सिखाया था। मैं मेरा सेकेंड ईयर का बताता हूँ। ओके, सेम फोर, हम्म। सेम फोर या जावा, एडवांस जावा, हम्म। स्प्रिंग, देन पीएचपी, ओके। जावास्क्रिप्ट, सी, ऑल दिस इन सिंगल सेमेस्टर। डैम। एंड लाइक वो एक भी चीज डेप्थ में नहीं है। ये ओके, सिर्फ ऊपर, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पता है लेयर। कैसे सिखाया था? कैसे? ओके, वेर लेट कॉन्स्ट, ओके, ये हो लूप्स। गया, फंक्शंस लूप्स, एंड देन खत्म। एक्सएचआर, फेच तो टच ही नहीं किया, खत्म हो गया जावास्क्रिप्ट। मैं बोला, एंड इस ये सब ये सोच के मैं बोला भाई इनके लेक्चर बैठूंगा तो मैं तो वैसे ही वर्स्ट के सिनारियो में चला जाऊंगा, इससे अच्छा नहीं बैठता हूँ, बट इन्होंने डिफॉल्टर लगा दिया। You know, this is why I say college degree now it does not matter unless and until from IIT, because in या, IIT you will get a good network because IIT का network is next level. Apart from that, college degree does not matter. और अगर आईआईटी ना मिले तो एनआईटी चले जाओ। हाँ, IIT ना मिले तो चुपचाप NIT चले जाओ। अगर NIT मिल रहा है, अगर NIT के नीचे कुछ है तो कॉलेज डज नॉट मैटर। वो आप कोई भी कॉलेज, फिर वो टीयर टीयर थ्री थ्री टीयर टीयर टू थ्री कॉलेज हो, इट डज नॉट मैटर। भाई टीयर थ्री से हो, दैट्स नाउ अ फ्लेक्स, यू नो। दैट इज फाइन, बट सी इसलिए मैं बोलता हूँ ना, लाइक स्किल्स मैटर एंड वी शुड नो हाउ टू शोकेस आवर स्किल्स टू पीपल। इसलिए मैं एंड बोलता हूँ बिल्ड इन पब्लिक इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग, अब सी जरूरी नहीं है सबका इंटरेस्ट इसमें हो, बट यू नो व्हाट, लाइक अभी आप लाइक सी सीए स्टार्ट करोगे, हम्म। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से एक्चुअल में चालू होता है। हमारे हम्म। यहाँ पे सीधा जावा सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, बट हम्म। एक्चुअली इफ यू वांट टू स्टडी सी एस यू हैव टू गो फ्रॉम आर्किटेक्चर लेवल। क्या हाँ, होता क्या है, डिजिटल राइट? सर्किट लॉजिक डिजाइन वो सब। हाँ, वो करो फिर थोड़े प्रोग्रामिंग में आओगे, एंड सी फिर बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सीखना है ना, यू हम्म। रियली नीड जेन्युइन इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। ट्रू। रट्टा वट्टा मार के ये सब्जेक्ट होगा ही नहीं, एंड सही हो भी बात गया है। ना, you'll हिट अ प्लेट्यू एट सम लेवल, हम्म। ग्रो नहीं होगा फिर। बिकॉज मैंने यही किया था, वो होता है ना, वो बोलते हैं डोंट बी द स्मार्टेस्ट इन द रूम। हम्म। मेरे साथ यही हुआ था, बिकॉज मेरा मेजोरिटी जो पीयर ग्रुप था, हम्म। सी राइट नाउ मोस्ट ऑफ देम आर इन सम अदर फील्ड, हम्म। they are not in working in CS, and ओके। if they are for the name sake, like नाम के लिए है, कर हम्म। कुछ अलग ही रहे। ओके। मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ द पीयर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था सीएस में, हम्म। एंड ऑफ कोर्स फिर तुमको लगेगा वो मुझे तो सब पता है, बट प्रॉब्लम इज तुमको जो लग रहा है ये लेवल पे मैं हूँ, यू आर हम्म। स्टक नाउ। हम्म। वही अगर मेरे मुझे कंपटीशन होगा, मुझ में एक इनसिक्योरिटी या फिर जेलसी होगी, भाई मुझे इससे आगे जाना, विल डू हम्म। समथिंग या। अलग। लाइक सी मुझे स्टैंड आउट करना था, कि हम्म। भले मुझे 25-30 की भी जॉब मिले, हम्म। बट एटलीस्ट दिखे कि भाई हाँ बंदा जेन्युइन इंटरेस्टेड है। हम्म। ये प्रोजेक्ट दिखाऊंगा उसको लगेगा, बिकॉज सही बात है। आई वॉज क्यूरियस राइट कि मीडिया हम्म। काम ही कैसे कर रहा है। हम्म। बिकॉज सी बहुत सारे चीजें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट उनके पीछे इंजीनियरिंग अलग लेवल की है। सही बात है। और एक्चुअली ना, अगर टू बी ऑनेस्ट किसी को अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगा तो इतना डीप में जाएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, जब तुम क्लाउड फ्लेयर एक्सप्लेन कर रहे थे, तभी मैंने तुमसे पूछा कि इतना डीपली तुमने कैसे पढ़ा, क्योंकि वहीं या से समझ में आ गया कि विदाउट क्यूरियोसिटी को इतना डीप नहीं जा सकता है। विदाउट क्यूरियोसिटी लोग देखेंगे बस काम करवा के खत्म करना है प्रोजेक्ट को। तो एग्जैक्टली, एंड वो सी चीज़ हो एक जाता है। होता है, लाइक आई हैड अ मीटिंग विद गुरु, हम्म। ही आल्सो एक्सप्लेन कि लाइक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ये वाली टेक्नोलॉजी फेंक दी। सी लास्ट टाइम तुमने बोला था काफका मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, राइट? हम्म। एंड मेरी तो काफका सुन के बस इसलिए होती, क्योंकि काफका के अगर रिक्वायरमेंट्स देखोगे, हम्म। रिकमेंडेड वन, हम्म। वो थोड़े अच्छे खासे हैं ही। तो हम्म। मैं बोला भाई, अगर ऑफ कोर्स आई नो नाउ दैट यू मोस्टली रन एवरीथिंग लोकली, तो वो हम्म। तो ठीक ही है, हम्म। बट अगर होस्ट करोगे तो मैं भाई ये काफका होस्ट करेगा, बिल क्या आएगा? या बिकॉज पैसे तो लिमिटेड है ना, हाँ, बात तो मतलब सही है। चार्ज डॉलर्स में होता है, वो तो हमारे लिए और थोड़ा गलत जाता सही है। एंड बात है। इसीलिए मेरा गुस्सा होता है कि लाइक व्हाई देयर आर नो प्रोवाइडर्स लाइक एडब्ल्यूएस इन इंडिया, बिकॉज हम्म। हमको फिर आईएनआर में मिलेगी ना। वही वही।
तो यहीं पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि क्यों AWS जैसा इंडिया में नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई खर्चा करना नहीं चाह रहा, पहला बात। और दूसरा चीज क्या या कि जब AWS स्टार्ट हुआ था ना, तो 13 साल लगा था उसको पहला प्रॉफिट देखने में। तो एग्जैक्टली। यहाँ पे इन्वेस्टर के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो तुमको 13 साल तक पैसा देगा और तुम उसको बदले में प्रॉफिट ना लाके दो। क्योंकि या यहाँ पे इनोवेट करने के लिए देयर इज अ hard truth that if you want to innovate something, that most of the time you will fail, and then there will एंड be a उसमें लॉस small, होगा। और उसमें लॉस होगा। ये ट्रूथ है, कोई इग्नोर नहीं कर सकते इसको। तो लॉस होगा, इनोवेट करने में कुछ चीज खत्म होगा, फिर जाके एक सोल्यूशन निकलेगा। तो वो एग्जैक्टली एंड खत्म करने सेम के लिए कोई यही पैसा देने को प्रॉब्लम रेडी है, नहीं है। हमारे पास हमारे खुद के चिप्स भी नहीं है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यहाँ पे कोई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। प्रॉब्लम ये है। दैट्स द मेन इशू। या तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे कोई, अगर तुम स्टार्टअप्स भी देखोगे ना हमारे कंट्री में, क्या हो रहा है, कुछ इनोवेटिव नहीं हो रहा स्टार्टअप में। वही फास्ट या ई कॉमर्स चले जा रहा है। ये एग्जैक्टली शार्क टैंक इशू। वही वही फास्ट ई कॉमर्स बने जा रहा है, वही लाइक फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स, यही सब बने, कुछ इनोवेट नहीं हो रहा है। इनोवेट नहीं हो रहा है क्योंकि कोई फंड नहीं करेगा एक आइडिया को जब तक उससे कुछ प्रॉफिट ना हो। तो विदाउट फंड तुम कैसे कुछ बना के प्रॉफिट ला पाओगे, अगर कुछ नया बनाने की कोशिश हो रहा है ना। तो यहीं पे एक वही लूप होल हो जाता है। लाइक सी अभी कितने लाइव वाचिंग है, देयर आर 25। 25 पीपल राइट। हम्म। आई मीन आई एम नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस, इट्स जस्ट अ सजेशन। हम्म। एडवाइस जितना देने जितना मेरा एज भी नहीं है, हम्म। इट्स जस्ट सजेशन। ओके गाइस, whatever you'll implement, see for example, um, do you know firecracker, Abhishek? फायर क्रैकर जो दिवाली में जलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं। तो एक फायर क्रैक एज कंप्यूटिंग तो पता है राइट? हाँ हाँ, एज कंप्यूटिंग आई नो। V8 आइसोलेट सी है वो जो रन हो रहा है। अच्छा। AWS का ये है ना लैम्बडा। हाँ हाँ, लैम्डा आई लैम्बडा नो, में आई तो हैव कुछ वर्कड भी विद रन दैट। कर दूंगा, हाँ। मैं नोड जेएस का भी रन कर दूं राइट? हम्म। तो सर्वरलेस जो चल रहा है उनका लैम्बडा, ये हम्म। मैंने लाइक ऐसे टाइम पास कुछ नहीं था, लाइट गई थी तो सर्च कर रहा था हाउ हम्म। इट वर्क्स। ओके। तो सर्वरलेस जो है उसमें प्रॉब्लम ये था, इफ यू रन अ प्रॉपर वीएम हम्म। तो बहुत ही रिसोर्सेज खाएगा, हेवी जाएगा। हम्म। एंड सर्वरलेस का क्या है कि फटाक से बनना चाहिए, लाइक हम्म। तुम्हारा जो कोल्ड स्टार्ट इशू जो बोलते हैं हाँ हाँ, कोल्ड स्टार्ट इशू। राइट, उसके लिए इफ यू लाइक जस्ट रीड अबाउट इट, माइक्रो वीएम्स हम्म। जी वाइजर बाय गूगल, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम गूगल ने सॉल्व किया था। हम्म। उसके ऊपर लाइक उसका फोर्क ही है फायर क्रैकर बाय एडब्ल्यूएस, एंड ओके। उसके ऊपर उन्होंने और काम किया था। हम्म। इट्स लाइक जितना अभी रफली बताता हूँ, जो हाइपरवाइजर लेवल का जो होता है काम, हम्म। उसको उन्होंने लाइक वो सारी चीजें हटा दी जो अननेसेसरी है। ओके। ओके, लाइक वीएम में सी तुमको पूरा डिस्प्ले जो हम वर्चुअल बॉक्स में इन ये वीएम करेंगे, वेयर में ऑपरेटिंग वीएमवेयर सिस्टम होगा हाँ, चलाते हैं। उसमें ऑपरेटिंग तुमको सब कुछ मिलता है, दुनिया भर का चीजें। लाइक हम्म। इट्स अ डेडिकेटेड योर डिफरेंट कंप्यूटर राइट। हम्म। उन्होंने बस इतना किया कि सब कुछ प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, हम्म। एंड जैसे डॉकर होता है कि मेन कर्नल से ही सीधा इंटरेक्ट हो जाए, हम्म। वो उन्होंने लाइक इफ यू जस्ट रीड अबाउट इट, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, हम्म। बट इट्स जस्ट डिफरेंट थिंग। एंड ये सब तुम लोग तभी एक्सप्लोर कर पाओगे इफ यू रियली वांट टू नो हाउ इट वर्क्स, हम्म। लाइक जेन्युइन इंजीनियरिंग क्यूरियोसिटी। एग्जैक्टली, आई एग्री। लाइक वर्सल यूज करूंगा सी, एक क्लिक पे डिप्लॉय हो जाएगा, हाँ, करेक्ट। बट अभी डॉकर कुबरनेटिस ये सब करने जाएंगे तब समझता है भाई है तो यही, हाँ, बस एब्स्ट्रैक्शन ही एब्स्ट्रैक्शन और है। वो एब्स्ट्रैक्शन के लिए वर्सेल इतना पैसा ले रहा है। एग्जैक्टली, सी वर्सल सेंस बनाता है कुछ चीजों में, हम्म। सीपीयू बाउंड टास्क तो भूल ही जाओ, उधर नहीं रन हो रहे। वही। तो उसके लिए तो तुमको जाना ही है EC2 पे या हम्म। फिर जो कोई भी इक्विवेलेंट। तो लाइक, जैसे अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगा, लाइक गाइस व्हाट आई वांट टू से इज दैट इफ यू डोंट हैव क्यूरियोसिटी यू विल नॉट एक्सप्लोर, एंड इफ यू नो डोंट एक्सप्लोर यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। You will just या find ways to make this work, and you just want, like, if you don't explore you will just become a person who just starts a project and reaches a point where I want to close this project and mark this project as completed. With this methodology you will not able to learn engineering. If you want to learn engineering, then you have to be curious, you have to build, and you have to learn how to build things. ओ ओ I can, oh I we have Ritu, I don't know, I can't Ritu pronounce Porna, it. welcome to the stream, Ritu Yeah, Porna. she is a colonel, she or he है, he she है ना? I Ritu guess Porna, she, it बोल देते it. it we have Colonel Hypervisor Engineer here too.
Okay, Wow. nice. Welcome to the stream, Rituparna. Okay. Like, see, Guru and now Ritu. Yeah, I I think don't they are know if the there will be most. much more. These guys are like, even I was, see, Agile Guru के साथ का जो मेरा ये था कनेक्शन, Mm-hmm. एंड आई रियली लाइक शुक्रिया तुम्हारे लिए, Mm-hmm. बिकॉज तुम्हारी वजह से मैं गुरु से मिला. Mm-hmm. लाइक तुम एक तो एक हफ्ते से पॉप कर रहे थे मेरे फीड में, हाँ. एंड मैं बोला भाई सी, फर्स्ट पे ही मैं देखूंगा तो सी बहुत सारे लाइव स्ट्रीम करते, हम्म. जब तक देखूंगा नहीं तब तक मुझे नहीं पता चलेगा ना. हाँ, हाँ हाँ, नाउ सही बात नाउ है. आई नो यू गो इन डेप्थ, लाइक भाई होगा कोई, लेट्स फोकस ऑन आवर वर्क. हम्म. यू वर कॉन्स्टेंटली पॉपिंग ऑन माई फीड स्टार्टिंग के वो तीन 3x3 के ग्रिड में, हम्म. लाइक देख लेते क्या करते हैं, एंड देन आई हम्म. सॉ योर कैन आई जॉइन गूगल मीट. हम्म. या आई मीन हाउ कैन वी शेयर बट. Okay, can I? You can join my Discord. नो तुमको मैंने एक काम कर, नो I यहाँ can पे share आ the जाएंगे. link, but if I share the या link in the chat, everybody या can सब join. लोग आ जाएंगे भाई, वही सब वही लोग वही. पॉडकास्ट बन जाएगा. Podcast, yeah. Like in बन future तो we गया can, है. in future we can create a dedicated something like this. Like we can plan या it. But abhi to, Rituparna, if you can join the Discord and just say hi, then we can share the link with you in Discord. या Okay. it will be like proper hypervisor and kernel Yeah. 101. Like I was reading about it, Mm-hmm. and like, okay, I got the request. Ritu. Okay, Okay. we got Ritu. Hello, hello, Ritu Parna. Are you there? Can you hear us? Hello, hello, please. Yes, yes. Hello. Yeah, you're audible, Ritu. यस अभी सही है. मैंने थोड़ा इको हो रहा था. हाँ, अभी सही है. अच्छा. Just one question, Ritu. Are you from Maharashtra? यस, सोलापुर से हूँ मैं. Acha, okay. Okay, I'm the odd one out. Yeah, I'm from Mumbai. अभी बर्लिन में रहता हूँ मैं. Oh shit. Okay. Okay. Even I am तो thinking of Germany now. I mean, जब जॉब मिलेगी तब मास्टर्स कर लूंगा वहां से. अच्छा. Okay, explain the kernel and hypervisor stuff. अ, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ. मैं सीएसई ग्रेजुएट हूँ और जब मैं कॉलेज में था 4 साल मैंने दबा के वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट की और Okay. इंटर्नशिप भी किया. थोड़ा फुल टाइम काम भी किया था वेब डेवलपमेंट में. वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बैकएंड, वो सब एप्लीकेशन लेवल पे. ये सब इतना कर लिया कि मैं बोर हो गया. मैं थोड़ा सोचा कि लो लेवल चीजें एक्सप्लोर करते हैं. तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑलरेडी अच्छा लगता था. Mm-hmm. Okay. जब सेमेस्टर में पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता था. और फिर मैं तब पढ़ना चालू किया. फिर सोचा एक खुद का छोटा सा कर्नल बना के ट्राई कर लेते हैं. तब मुझे इंटरेस्ट आया. मैंने प्रोजेक्ट बनाया, एक x86 का कर्नल बनाया था. Okay. उस पे मेरा सिलेक्शन इधर हुआ EC2 में. Mm-hmm. और फिर यहाँ पे तो फिर अभी 1.5 साल हो गया है यहाँ पे हाइपरवाइजर पे काम कर रहा हूँ. मैं Nice. अभी स्पेशली जो जीपीयू के इंस्टेंसेस होते हैं Mm-hmm. उस टीम में काम कर रहा हूँ. और मैंने थोड़ा बहुत AR64 मतलब ARM 64 जो हाँ. ग्रेविटॉन के इंस्टेंसेस है Mm-hmm. Yes. उसका उसके ऊपर भी काम किया हुआ है. Nice. Rituparna, can I know like आपका एज कितना है? मैं 24. What? Damn. Damn. हाँ. What? Are you for real like 24? हाँ यार. Nice, nice bro, nice. Like जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना स्टार्ट किया like मतलब उसके बाद आपका वो बर्लिन जाने का जर्नी कैसा था? कैसे आप एक एक करके Yeah, उसमें जा exactly. पाए? कैन यू एक्सप्लेन? मेरा ऑलरेडी जब मैं कॉलेज के बाद जब मेरा फर्स्ट जॉब था तब मैंने स्टार्ट किया था कर्नल पे काम करना. हम्म. Okay. वो प्रोजेक्ट की वजह से मेरा जॉब में सिलेक्शन हुआ. मैं उसके बाद ही जब मेरे को जॉब मिली उसके बाद मैं बर्लिन आया. अच्छा, तो वो Okay. प्रोजेक्ट के बाद आपने कैसे अप्लाई किया कि आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ? लाइक वो प्रोसेस क्या था?
तो मैं जापान में जॉब करता था और मैं उस वाली जॉब से परेशान हो गया था थोड़ा। हम्म। फिर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और मेरे को जॉब तो चाहिए था दूसरा वाला, तो हम्म। मैंने हर जगह अप्लाई किया। ठीक है। और मैंने सोचा था कि रेज्यूमे में कोई तो यूनिक प्रोजेक्ट एक होना चाहिए, एक हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल ऐसा यूनिक लगा तो मैंने वो रखा। और इन जनरल मैंने सारे ही एप्लीकेशंस में वो रखा था। हम्म। और फॉर्चुनेटली जॉब स्पेसिफिक ओपनिंग थी कर्नल डेवलपमेंट की, और उसमें मेरा वो प्रोफाइल और प्रोजेक्ट मैच हो गया, तो ओके। उधर सिलेक्शन हो गया। नाइस नाइस। ओके। ओके। लाइक थैंक्स टू ग्रेविटन, हाँ, लाइक उसमें सेविंग्स बहुत होता है। हाँ, बहुत बहुत चीप है, बहुत लाइक कंपेरेटिवली। आर्म आर्म कंपेयर टू x86 ज्यादा एफिशिएंट भी है, राइट? एफिशिएंट है लेकिन थोड़ा स्लो है। थोड़ा स्लो है, लेकिन जो जितना स्पीड डिक्रीज है x86 के कंपैरिजन में, उसके हिसाब से कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। तो ग्रेविटॉन इज अच्छा है, अच्छा है, काफी अच्छा है कॉस्ट के हिसाब से। नाइस। एंड आपका क्वालिफिकेशन लाइक आपने इंजीनियरिंग ये सब कहाँ से किया आप बोल सकते हैं? मैं सीएससी ग्रेजुएट हूँ, बीटेक ही किया है मैंने ट्रिपल आईटी गुवाहाटी से। ओके। नाइस। ओके। ओके। मास्टर्स वगैरह तो कुछ किया नहीं मैंने। तो आप लाइक साइड प्रोजेक्ट में अभी क्या कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा लाइक मतलब कुछ बनाने की कोशिश करें आउट लाइक कुछ डिफरेंट? साइड प्रोजेक्ट तो बनाता हूँ मैं, मतलब रोज कुछ ना कुछ तो चलते रहता है मेरा, ऐसे हार्डवेयर से रिलेटेड अच्छा। एम्बेडेड लो ये चीजें पूरा मैं। ये क्यूरियोसिटी से हो रहा है ना पूरा मतलब यस जस्ट यस एकदम। नाइस। और जितना भी नया चीजें अगर मुझे सीखने मिला, या फिर मैंने कुछ नया डिस्कवर किया, या फिर नया प्रोजेक्ट बनाया, हम्म। तो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहता हूँ, मेरे फ्रीक्वेंटली पोस्ट रहते हैं वहां पर। ओके। ओके। नाइस। लाइक हैव यू ट्राइड कूड़ा, लाइक जो ये एनवीडिया का कूड़ा है? अ, कूड़ा तो अभी जब मैंने कूड़ा स्टैक पे काम नहीं किया है, ओके। बट लाइक कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज कूड़ा, बिकॉज मैंने जितना भी पढ़ा है ना उसके बारे में हेलो कंफ्यूज हो ध्रुव जाता सूद, हूँ। वेलकम टू द स्ट्रीम। सो इन सिंपल टर्म्स कूड़ा एक ओके। आर्किटेक्चर है। वाओ। ओके। हेलो शिवा। जैसे शिवानी सीपीयू के शर्मा, वेलकम टू द आर्किटेक्चर्स स्ट्रीम। होते हैं, x86 आर्किटेक्चर है या ओके। फिर आर्म आर्किटेक्चर है, वैसे ही कूड़ा एक जीपीयू का आर्किटेक्चर है जो एनवीडिया ने बनाया है। और कूड़ा एक एपीआई भी है। वो एपीआई वो आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं और हमको एक एपीआई एक्सपोज करता है, तो जो भी मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस है वो ओके। उन कूड़ा एपीआई को यूज करके जीपीयू को एक्सेस करते हैं। ओके। आई हैव अ क्वेश्चन, ये कूड़ा का आर्किटेक्चर एनवीडिया ने रिवील नहीं किया है ना, वो पेटेंट करके लाइक वो लोग रिवील नहीं करते ना पूरा आर्किटेक्चर को? हाँ हाँ, मतलब उनका आर्किटेक्चर बोले तो वो लोग चिप कैसे बनाए वो रहता है, वो तो प्रोप्राइटरी है पूरा, वो नहीं रिवील कर सकते ना वो लोग। हाँ हाँ। ओके। ओके। सो अगर फॉर एग्जांपल आपका बस ओपिनियन चाहिए था, अगर अगर जैसे अभी एनवीडिया मार्केट डोमिनेट कर रहा है जीपीयू एंड सारा ये आर्किटेक्चर से, अब हम्म। जैसे ये लोग अपने सारे चिप्स को यू नो लाइक आर्किटेक्चर अवेलेबल देते नहीं है कि हम लोग क्या यूज़ करें क्या नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ। अगर ये किसी को मोनोपोली तोड़ के अगर एक नया कोई आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे बनाएगा लाइक आज के टाइम पे खुद से कैसे? अगर फॉर एग्जांपल कोई व्यूअर है जिसका मन में आ रहा है कि मुझे अपना खुद का आर्किटेक्चर आई बनाना गेस है एक, एएमडी यही कर रहा है ना? तो हाँ एएमडी कर रहा है, लेकिन कैसे मतलब क्या कर सकते हैं अगर कोई जैसे ओपन सोर्स हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, ओपन सोर्स हम लोग को पता है कोड राइट। अवेलेबल है, ये अवेलेबल, तो हम्म। देख के हम लोग खुद से इनोवेट करके कुछ ना कुछ नया उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी पूरा मोनोपोली करके रखा है, आके ओपन सोर्स ही नहीं कर रहा है, आर्किटेक्चर नहीं दिखा रहा है, तो हाउ कैन समवन बिल्ड एनीथिंग लाइक दिस फ्रॉम फ्रॉम स्क्रैच? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग तो वीएलएसआई पढ़ते हैं, तो यूजुअली वीएलएसआई से काम हो जाता है। सो बेसिक चीजें कर सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल लेवल पे बेसिक चीजें भी कर सकते हैं। एक छोटा सा 4 कोर वाला जीपीयू हम भी बना सकते हैं, प्रिंटिंग भी हो जाएगा। ओके। लेकिन फिर इट्स लाइक वेरीलॉग एक लैंग्वेज है जो एक एचडीएल हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, तो वो यूज करके हम लोग सर्किट्स डिफाइन कर सकते हैं। अब ओके। हमको
ये इतना आना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सर्किट हार्डवेयर में कैसे लिखे, वेरिलॉग में कैसे लिखे, उतना लिख लिया। फिर उसके बाद अभी उसके आगे और भी स्टेप्स होते हैं, उसको फिजिकल ट्रांजिस्टर्स में कन्वर्ट करना, फिर उसको फैब्रिकेशन के लिए भेजना। तो ये प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और महंगी प्रोसेस है, तो कोई करता नहीं है, कोई रिस्क नहीं हम्म लेना चाहता है चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ओके। बट कोई जो समझे फॉर ऑलरेडी एग्जांपल, मैं अभी लाइक इंजीनियरिंग, प्रॉपर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं लाइक खुद से जितना भी सेल्फ लर्न कर पाता हूँ, ये जो वेरीलॉग और वीएलएसआई है वो हम्म सेल्फ टॉट कर सकता हूँ, लाइक खुद से सीख सकता हूँ मैं, नॉट अभी लाइक तो एकदम नेक्स्ट अभी लेवल पे अभी बट। तो एआई की हेल्प से बहुत कुछ खुद से सीख सकते हैं। मतलब वेरीलॉग भी मुझे लगता है सीख सकते हैं खुद से। मैं भी प्रोजेक्ट इसके ऊपर एक चालू करने ही वाला हूँ। ओके। एंड सपोज मुझे अभी फॉर एग्जांपल अभी सी, इतना भी नहीं कि एक्सप्लोर किया है, बट मैंने जितना भी वेब डेव किया है, आई थिंक मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है दैट आई कैन एंटर इनटू लो लेवल थिंग। अच्छा। कहाँ से चालू करूँ मैं? ओएस? आई थिंक ओएस वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। बिकॉज मैंने बीच में क्या सोचा था कि जो रास्पबेरी पाई आता है ना, हम्म लाइक सी x86 से भी चालू कर सकता हूँ, बट रास्पबेरी पाई वैसे भी पड़ा हुआ है तो उसका हम्म कुछ काम भी हो जाएगा। तो आई हम्म वाज लाइक क्या करूँ मैं, लाइक ध्रुव एक्स एटी सूद, हाउ सिक्स यू डूइंग मैन? आई एम आर्म गुड, या डूइंग गुड। रास्पबेरी ध्रुव पाई? उसके सूद, लिए आई वुड से एक्स हाउ आर एटी यू सिक्स ब्रदर? डिफिकल्ट है, आर्म से स्टार्ट करो। बहुत सी चीजें समझने के लिए बहुत इजी है। ओके। उतना चीज समझ में आ जाएगा तो वो नॉलेज ट्रांसफर x86 के ऊपर नॉलेज ट्रांसफर करने में इतना टाइम नहीं ज्यादा लगेगा। मुश्किल होगा, टाइम नहीं लगेगा। आज AR64 काफी इजी है, ओके। वो कर सकते हो। ओके। और मैं एक प्रोजेक्ट भेजता हूँ, मेरा ही प्रोजेक्ट है। इसके फर्स्ट के 10-15 कमिट अगर तुम पढ़ लोगे तो भी बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, डू शेयर इट। मैंने चैट में, गूगल मीट की चैट में भेज दिया है। या। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली मैं बनाते बनाते बहुत सारी चीजें सीखा मैं। ओएस से रिलेटेड, या फिर सीपीयू से रिलेटेड हो गया, या फिर एक ओएस को डिजाइन कैसे कर सकते हैं या स्क्रैच से डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो ये काफी सीखा मैंने ये प्रोजेक्ट बनाते टाइम। फॉलो। सो लाइक इफ यू ओपन द फर्स्ट कमिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसमें सिर्फ दिखेगा कि मिनिमल ब्रिंग अप है, सिर्फ एक इन्फिनाइट लूप है। लेकिन मैंने वो जीडीबी डिबगर अटैच करके टेस्ट किया कि इन्फिनाइट लूप एटलीस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये फर्स्ट नहीं है, और पीछे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। कौन सा है फर्स्ट वाला कमिट? मैंने नेक्स्ट, अच्छा ओके। स्टार्ट कब किया था प्रोजेक्ट? मैंने तो स्टार्ट पिछले साल किया था, लेकिन बहुत बार रीराइट भी किया उसको। बार बार करना पड़ा था रीराइट, क्योंकि कुछ नई चीज समझ में आई, तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसको ऐसे इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, तो आगे जाके इजी हो जाएगा मतलब इम्प्लीमेंट बार करना। बार कोड, बहुत बार कोड रिफैक्टर करना पड़ा? हाँ, यस। ओके। ये वाला शायद फर्स्ट कमिट है ना? इनिशियल कमिट। नहीं, आपका ना गूगल मीट में सिर्फ वीएस कोड दिखाई दे रहा है, और ओके ओके, वेट मैं शेयर, ये वाला ना इनिशियल कमिट। हाँ, अब दिख रहा है इनिशियल कम, यस, ये वाला। गुड तो लॉर्ड। इसमें मैंने कैसे, लास्ट में अगर जाओगे तो कर्नल मेन जो फाइल है, उसमें सिर्फ एक इन्फिनाइट लूप है। तो ये मुझे तो एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि ओएस का स्टार्टिंग कैसे होता है, कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, मिनिमल कोड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते कर्नल हैं। सी, ये वाला ना? यस। तो अभी इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स है, बूट डॉट एस और कर्नल डॉट सी। बूट डॉट एस अगर खोलोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप दिखता है कि नॉट। स्टैक सेटअप हो रहा है, क्योंकि सी के फंक्शंस रन करने के लिए स्टैक चाहिए। तो स्टैक हम्म। सेटअप कर दिया, फिर हमने कर्नल मेन में ब्रांच कर लिया, तो उसके ओके, बाद कोड एग्जीक्यूट होना चालू हो ये जाएगा। असेंबली लैंग्वेज है राइट? यस। ओके। असेंबली लाइक एक्चुअल में पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मैंने किया था
बट बीच में छूट गया था। असेंबली लास्ट मेरे इतना भी कॉलेज में डिफिकल्ट हुआ था। नहीं है। या असेंबली आज फर्स्ट मतलब ईयर में। easy है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा एक एक हफ्ते में काफी सारी चीज पता चल जाएगी, और प्रोजेक्ट बनाते बनाते तो या तुम आराम प्रोजेक्ट से। बना के ही, लाइक वैसे थियोरेटिकल तो जाता ही नहीं है दिमाग में। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बेस्ट तरीका है सीखने का मेरे हिसाब से। करेक्ट हाँ, करेक्ट। इवन द प्रोजेक्ट जो हमने डिस्कस किया वही अगर मैं थियरी में बताऊं किसको कुछ नहीं समझेगा, लाइक भूल जाएगा, मतलब समझ तो जाएगा बट दो वही तीन दिन में भूल जाएगा वो। मतलब जैसे सिस्टम डिज़ाइन क्या है ना कि लोग जैसे अभी सिस्टम डिज़ाइन का जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सिस्टम डिज़ाइन को सही में सीखना है तो प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। या सिस्टम डिज़ाइन के कंसेप्ट उठाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, उसको स्केल करने की कोशिश लाइक करो, तभी। बेसिकली जो पूछते हैं ना, लाइक डिजाइन यूआरएल शॉर्टनर, हाँ, देन लाइक खुद बना बिल्ड अ के यूआरएल चलेगा। शॉर्टनर, तभी हाँ समझ में करेक्ट आएगा। करेक्ट करेक्ट। सो रितु, आप लाइक बर्लिन, लाइक ऐसे जॉब या आपने मास्टर्स के थ्रू गए थे बर्लिन, आई थिंक नहीं जर्मनी। नहीं, मैं सिर्फ जॉब एप्लीकेशन डाली थी, जॉब लग गई तो मैं इधर ओ आ या, गया। अरे हाँ, आपने मास्टर्स तो नहीं किया ना, लाइक बैचलर्स। हम्म, इंटरेस्टिंग। व्हाट ए कोइंसिडेंस, वी वर टॉकिंग अबाउट कर्नल एंड हाइपरवाइजर। और एग्जैक्ट उसी लिटरली, मोमेंट पे मैंने या वीडियो एग्जैक्टली। वही। अब हमारा लाइक गुड लक बहुत काम कर रहे हैं। या लाइक दिस इज क्रेजी भाई, लाइक इफ आई गेट पेड ना कि भाई तुझे फाइनेंस देखना ही नहीं है, आई जस्ट डू ऑल दिस स्टफ फॉर एंटायर डे, फॉर एंटायर लाइफ। इंटरेस्टिंग तो है, बहुत इंटरेस्टिंग है आपने ये फिर सब। ये एक्सप्लोर किया एडब्ल्यू एस लैम्बडा, लाइक वो एक्सप्लेन कर पाओगे, लाइक वो जी वाइजर फायर क्रैकर प्रॉपरली, लाइक ऑफ कोर्स इतना अ, प्रॉपरली एकदम इन डेप्थ नहीं, बट जितना हो सके। मेरे को जीवाइजर के तो बारे में तो नहीं पता, फायर क्रैकर हमारे टीम वालों ने ही बनाया है। या तो हाइपरवाइजर तो पता ही है क्या होता है। तो या हाइपरवाइजर में नॉर्मली हम लोग जैसे EC2 का हाइपरवाइजर है, उसके ऊपर इंस्टेंसेस हम लोग लॉन्च करते हैं, तो उसमें एक कंप्लीट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, मतलब फुल्ली फ्लेजेड लिनक्स चलता है, उसमें नेटवर्किंग होती है, हम्म, स्टोरेज होती है, यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, इनपुट आउटपुट सब होता है ना। हाँ, लेकिन हमको सिर्फ सिर्फ अगर कोड एग्जीक्यूट करना है, दिया हुआ कोड एग्जीक्यूट करना है, यूजर ने प्रोवाइड किया हाँ, हुआ कोड एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए इतने सारी चीजों की जरूरत नहीं है। ओके, तो फायर क्रैकर फायर क्रैकर एक KVM का 4K ओके, KVM यूज करते हैं अंडर द हुड, KVM API यूज करता है, और KVM उन्होंने चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हटा जो दे। नहीं, वो हटा दी, और एक बहुत छोटा सा मिनिमल हाइपरवाइजर बनाया जो बहुत फास्ट बूट हो। ओके, इसीलिए उसे माइक्रो वीएम बोलते हैं। हाँ राइट। ओके, क्योंकि उसमें बहुत फंक्शनलिटी है ही नहीं, बहुत लिमिटेड फंक्शनलिटी है और बहुत स्पेसिफिक फंक्शनलिटी है, यूजर का कोड रन करना है बस। एग्जैक्टली। एंड डू यू नो अबाउट S3, लाइक S3 कैसे एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेड है अंडर द हुड? नहीं, S3 के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। मिन आयो का गेटा भी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। S3 का तो, S3 स्टोरेज के साथ काम नहीं किया मैंने इधर कभी। ओके, नाइस। और लाइक बर्लिन में कैसा है, टेक सीन कैसा है बर्लिन में, मतलब वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या या कुछ कुछ इनोवेट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं बर्लिन में? बर्लिन में इतना टेक्निकल सीन है ही नहीं, म्यूनिक में ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मुझे वहां के बारे में भी ज्यादा आइडिया नहीं है। बर्लिन में, बर्लिन छोटा सा सिटी है, अमेजोन एक ही बड़ी कंपनी है, गूगल के 2-3 ऑफिसेस है, और ज्यादा कुछ टेक्निकल हो नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा। या लाइक जर्मनी में पेपर वर्क कुछ ज्यादा ही है ना अभी भी, कंपेयर हाँ टू डिजिटल। हाँ राइट राइट। लाइक उनके पास अभी भी लेटर बॉक्स है हर घर के लाइक बाहर, हाँ राइट? हाँ, आते हैं लेटर्स आते या हैं। बट भाई जो कोइंसिडेंस हुआ है ना गाइस अभी भी, वही एग्जैक्टली exactly. लाइक पता नहीं लेजिट मैं कैसे बोला हुआ। कि लाइक हाइपरवाइजर एंड वो सब जो मैंने लाइक रफली वही सेम बताया ना मैंने, कि लाइक जो हाँ वीएम होता है उसमें से जो अननेसेसरी चीजें है, उसको हटा दिया डिस्प्ले जाता वगैरह, है। उसको हाँ। हटा दो,
बस कोड एग्जीक्यूशन रख दो। हम्म। 9 AM गेम्स जोप उड़ाली, अरे लेजिट भाई मेरी नींद आ रही थी, उड़ गई मेरी नींद। उसमें फिर लैम्डा में ऐसा भी हॉट बूट और कोल्ड बूट का भी कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, कोल्ड बूट की तो वजह से लैम्बडा काफ़ी कभी-कभी प्रॉब्लम देता कोल्ड है। बूट लाइक कोल्ड स्टार्ट वही ना? कोल्ड मतलब अभी मान लो कि तुमने अभी अभी लैम्डा बनाया और फर्स्ट रिक्वेस्ट आई। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वो रिक्वेस्ट समझा, वो पता है, फर्स्ट लाइक रिक्वेस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट पे टाइम लेगा ज्यादा एंड अगली क्योंकि सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फटफट एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ, तो वो 15 फर्स्ट रिक्वेस्ट से लेके 15 मिनट तक वो वीएम अपना चालू रखता है। हम्म। 15 मिनट में कोई रिक्वेस्ट नहीं आई तो वो बंद हो जाएगा, फिर से कोल्ड बूट होगा। अगर 15 मिनट के अंदर ही फिर से दूसरी रिक्वेस्ट आई तो उसका सर्विस बहुत जल्दी हो जाएगा। आई गेस वर्सल आई गेस लैम्डा पे ही बनाया हुआ है। वर्सल लैम्डा पे नहीं बना है, लेकिन शायद वो लोग फायर क्रैकर यूज करते हैं। फायर क्रैकर का अपना इंटरनल फोर्क है। ओके, बिकॉज उसमें क्या है ना, आई गेस लैम्डा है ना वॉल क्लॉक पे चार्ज करता है राइट, हाँ, वॉल टाइम पे चार्ज करता है, बट जो वर्सल है वो सीपीयू टाइम पे चार्ज करता है। वर्सल वालों ने बेयर मेटल सर्वर लेके रखे एडब्ल्यूएस से, और उसके ऊपर उन्होंने माइक्रो वीएम ओके, शायद डिप्लॉय। लाइक नॉट हंड्रेड सीपीयू। परसेंट श्योर, लेकिन ऐसा मैंने सुना है शायद। ओके। और काफी लॉजिकल लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि माइक्रो डायरेक्ट अगर फायर क्रैकर वो लोग डिप्लॉय करते तो वो एकदम लैम्डा का क्लोन ही हो जाएगा ना, वो लोग फ्रंट एंड सर्व हाँ नहीं करते। सर, हाँ वही। शायद फोर्क बनाया होगा उन्होंने। नहीं लाइक अभी तो वर्सल तो फ्रंट एंड के आगे भी चला गया ना, लाइक अब तो वो पाइथन को सारे फंक्शंस भी सपोर्ट करने लग गया है। ओह अच्छा, मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ अभी वो लाइक वो उन्होंने फ्रंट एंड वाला जो उनका था ना पहले, मोड हम्म कि हम फ्रंट एंड डिप्लॉय कर देंगे वन क्लिक पे, हम्म। उसके लाइक आगे चले गए, इवन नेक्स्ट जेएस का वो एपीआई राउट भी लाया है, अच्छा, उसमें हाँ हाँ, स्विच राइट कर राइट। सकते हो। एज चाहिए तो वो करेक्ट। v8 आइसोलेट स्पॉन कर देगा। अच्छा। अगर मैं नोड जेएस कर दूंगा या फिर बंद कर दूंगा, तो फिर हम्म बंद का वो इंस्टेंट, लाइक मैं हर मेरे एक एंड पॉइंट पे बता सकता हूँ कि हम्म v8 आइसोलेट यूज होगा या नोड जेएस ओके रन टाइम यूज होगा, ओके ओके ओके। बिकॉज वो फंक्शन ही है ना, एट द एंड एक फंक्शन राइट राइट। एग्जीक्यूट होगा। हम्म। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंटरेस्टिंग है बहुत। लो लेवल की जो भी चीजें वो तो वही काफी लो अच्छी लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसमें एफर्ट्स भी बहुत लगता है, मतलब लगते हैं, राइट। रितु इंट्रेंस फिर इंटरेस्ट होगा मुझे, तभी कोई सरवाइव कर पाएगा। या एग्जैक्टली। मैंने कुछ दिन पहले ही एक अपना टैबलेट पोको का टैबलेट रिवर्स इंजीनियर किया, और वो फिर बेयर मेटल पोंग का गेम लिख दिया उसके ऊपर। तो वॉल्यूम बटन से चलता है और स्क्रीन पे पूरा मस्त डिस्प्ले होता है गेम पूरा। नाइस, सही है। डैम। रितु मैं ये अभी आप जीपीयू पे ही काम कर रहे हो राइट, जीपीयू इंस्टेंसेस पे, हाँ हाँ। तो ये सर्वरलेस जीपीयू कैसे काम करता है, जैसे अपना जो ये है रन पॉड या रिवर पॉड, आई गेस नहीं रन यार, पॉड है। सर्वरलेस जीपीयू का कोई आइडिया नहीं है मेरे को, मैंने नहीं काम किया उसके ऊपर। ओके, बिकॉज मुझे यही देखना था कि वो जो सर्वरलेस वाला जीपीयू है वो एज हम्म। इट इज जैसे अपना स्टैंडर्ड सर्वरलेस काम करता है वैसे ही है। आज ही नहीं, वो रनपॉट के बारे में कुछ देख तो रहा था। बहुत डिफिकल्ट है, कुछ तो बहुत डिफिकल्ट है, स्टैंडर्ड सर्वरलेस जैसा नहीं है वो। Okay. या बिकॉज रिवर पॉड के अगर प्राइसिंग सबसे कंपेयर करो तो रिवर पॉड के अफोर्डेबल है। हम्म। एंड आई एम लाइक मुझे ये इम्प्लीमेंट करना था, अनरियल इंजन तो पता ही है सब है सबको। हाँ। हाँ, अनरियल इंजन में एक पता है पिक्सल स्ट्रीमिंग है, जो उनका मेटा ह्यूमन जो आया है फीचर, मतलब हो गए शायद 3-4 साल। तो वो क्या करते, जो मेटा ह्यूमन जो है लाइक अनरियल इंजन है ना बेसिकली, हम्म वो किधर तो इंस्टेंस पे चलाएंगे एंड वो हम्म पूरा जो आउटपुट है ग्राफिकल आउटपुट वो हम्म। स्ट्रीम कर देंगे। उस पे कंडीशन ये है कि भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क लगेगा मुझे। अच्छा। तो मैं वही इम्प्लीमेंट करने के लिए रिवर पॉड, रन पॉड या रिवर पॉड है जो वो एक्सप्लोर कर रहा था, तो उस पे सर्वरलेस जीपीयू दिखा था। सर्वरलेस जीपीयू में प्रॉब्लम पता है मेरे को क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है कि सर्वरलेस जीपीयू मान लो हम लोग यूज कर रहे हैं एलएलएम्स लॉन्च, एलएलएम या फिर इन्फ्रेंसिंग के लिए। तो हम्म। एक रिक्वेस्ट तुम डाल रहे हो, वीएम बन रहा है, वीएम बनते बनते टाइम बनने के बाद एलएलएम के वेट्स भी जीपीयू पे कॉपी करने हैं,
उसमें हम्म। बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, उसमें ही आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर इन्फरेंस होगा, फिर उसको बंद भी करो। हाँ तो वही। टाइम बहुत है इसमें। या इसलिए फिर वो लाइक ऐसे स्टैंड अलोन जो है नॉर्मल जीपीयू इंस्टेंस वो सेंस बनाता है। हुँ, बट इसलिए मैंने क्या किया था, सी लाइक जो अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है ये जो मीडिया पाइपलाइन वाला, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सी अभी मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, ये कोई भी रिक्रूटर दिखेगा, फॉर एग्जांपल अभिषेक आया अभी या आप आ गए, आप हुँ। जब क्लिक करोगे तभी वो रन होना चाहिए ना, क्योंकि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट 24/7 रन करने में कुछ सेंस नहीं बनाता, राइट? हाँ, तो हाँ, मैंने क्या किया है, जो AWS लैम्बडा है वो वैसे भी मुझे 1 मिलियन रिक्वेस्ट तो देता ही है फ्री में, फ्री हाँ, टियर। हाँ, करेक्ट। तो मैं एक ऐसे क्रॉन जॉब रन करूंगा, बताना मुझे कि ये मैं बराबर डायरेक्शन में जा रहा है नहीं। क्रॉन हुँ, जॉब रन करूंगा एंड हर हुँ, बार देखूंगा कि मेरे जितने भी इंस्टेंसेस है हुँ। वो बिजी है या नहीं। अगर बिज़ी नहीं है तो उसको बंद कर दो। या बिजी नहीं है तो बंद कर दो, और अगर बिजी है तो चालू रख दो, लाइक जो ग्रेसफुल शटडाउन बोलते हैं हम। पता नहीं इसको कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो मैंने जब जीपीयू इंस्टेंसेस के ब्रिंग अप के ऊपर काम किया तो वीएलएलएम से हम लोग टेस्टिंग करते हैं एलएलएम्स की। हम्म। वीएलएलएम एक डिप्लॉयमेंट सर्विस है। हम्म। तो अम, अभी मान लो, लोलामा जैसे ही ना, लाइक काइंड हाँ ऑफ। राइट राइट ओके। एग्जैक्टली। तो मान लो अभी 800 जीबी का कोई मॉडल है, तो वो मॉडल लोड होने में, कंपाइल होने में ना 10 मिनट लग जाते हैं। ओके। तो मतलब अगर तुम मशीन भी बंद करो तो उसको स्टार्ट करने में, पहला रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए 10 मिनट लग जाएंगे। ओके। तो मेरे को सच में समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोग लैम्बडा कैसे बनाए होंगे जीपीयू का या फिर इन्फ्रेंसिंग के लिए। एग्जैक्ट, हाँ वही जो LLM वाला जो है पार्ट, उसमें अगर अभी आपने बताया वो तो एक्सट्रीम ही केस हो गई हम्म। कि लाइक मैं एकदम 800 GB का LLM ही रन कर रहा हूँ। हम्म। छोटा भी LLM होगा तो भी वो कोल्ड स्टार्ट में तो इशू होगा ही ना, मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट बहुत ही टाइम लेगी। यस यस करेक्ट। फर्स्ट नहीं, ये जो मेरा जो प्लेटफॉर्म मैं पूछ रहा हूँ ना, ये AI वाला है ही नहीं, हम्म। नॉर्मल इंस्टेंसेस है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ मेरे कौन से इंस्टेंसेस है। ओके, AWS EC2 प्राइसिंग में जा, कैलकुलेटर, मेरे दो ही इंस्टेंसेस है ओके AWS पे। एक है हम्म। अपना T4 टी T4 फोर सी नैनो। या T4G मीडियम है, अच्छा। मीडियम या फिर लार्ज पकड़ लो। और हम्म। एक है मेरा C6G अच्छा। मीड, C6G राइट। दोनों ग्रेविटॉन वाली ही है। हाँ दोनों ग्रेविटन वाले ही है। C6G लार्ज 2 vCPU 4 GB वाला। ओके ओके तो ओके। इसमें क्या होगा, अगर सी जो C6 वाला है ना, उसपे हम्म। मेरे वीडियो ट्रांसकोड होंगी FFmpeg को लेकर। हम्म। और जो मेरा T4G वाला है, उसपे होगा मेरा रेस्ट API रन। हाँ अगर दोनों इंस्टेंसेस खाली है तो हाँ। सेंस नहीं बनाता ना, मेरा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है ये। तो फ्रंट एंड बैक एंड कितना है इसमें, इस प्रोजेक्ट में? ये देख पा रहे हो शेयर स्क्रीन, यही है बैकएंड। एक मिनट, EC2 रेस्ट एपीआई ये EC2 ऑब्जर्वेट। नहीं है, ये ऑब्जर्वेबिलिटी को इग्नोर कर दो। नहीं तो फिर मतलब तुम्हारे जो पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड बैकएंड है वो कितना है, ये पूछ रहा हूँ। Guys, I'm listening. पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड, मैंने क्या सोचा था, ये जो लैम्बडा होगा, पहली रिक्वेस्ट है ना लैम्बडा पे जाएगी। ओके। म्यूट हो सर, आप म्यूट हो। हेलो। नहीं हेलो। नहीं, मैं अच्छा, इसको बोल रहा था, अभिषेक। अभिषेक। अरे नहीं नहीं, मैं वो वहां पे बोल रहा था। हेलो। अच्छा, दो माइक्स है क्या? नहीं नहीं, वो एक स्ट्रीम पे चल रहा है ना, तो ओके। अगर मेरा गूगल मीट का माइक ऑफ है तो स्ट्रीम पे आवाज आ रहा है, मेरे ही आवाज का। अच्छा। ओके हाँ, सो आप लोग मैंने कंटिन्यू क्या, करिए, मैं आई एम लिसनिंग। हाँ
हेलो रितु। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, ये जो फ्रंट एंड है, हम्म। इसकी पहली रिक्वेस्ट जो होगी वो लैम्बडा पे ही जाएगी। हम्म। ओके, लैम्बडा हम्म। चेक करेगा। मैं रेडिस एक इंस्टेंस यूज करूंगा कि लास्ट हम्म। टाइम कहाँ कब ऑनलाइन था। ओके, हम्म। पहली रिक्वेस्ट जाएगी, चेक करेगा इंस्टेंसेस अप एंड रनिंग है या नहीं। अच्छा। ओके, अप एंड रनिंग है तो फिर तो कोई बात नहीं है, सिग्नल ओके आ जाएगा। हम्म। रनिंग नहीं होंगे हम्म। तो वो उनको चालू कर देगा। ईसीआर में तो मेरे वैसे भी डॉकर के इंस्टेंस इमेजेस होंगी, अच्छा, हाँ। चालू कर देगा। एंड जो हम्म। भी मेरा रेस्ट एपीआई है, उस हम्म। रेस्ट एपीआई और टीयूएस अपलोड है ना, टीयूएस अपलोड नहीं, रेस्ट एपीआई का ही सिर्फ मुझे ये दे देगा यूआरएल वापस। एंड फिर मेरा ओके, फ्रंट एंड उसको ही, वो जो रेस्ट एपीआई का यूआरएल है उसको यूज उसको करता है। डायरेक्टली कॉल करेगा। सो इज दिस सेंसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव? बनता तो है, सेंस तो बनता है। बंद है तो मतलब नहीं चाहिए तब क्यों ही ऑन रखना अगर। हाँ, मेरा और बिल इसी बढ़ेगा ना। तो इंस्टेंसेस पे क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कौन क्या सी? वर्कलोड क्या है? इस पे रेस्ट एपीआई है मेरा, नोड का एक्सप्रेस। हाँ। और इस पे टीयूएस अपलोड बेसिकली क्या करेगा, क्लाइंट से जो भी फाइल जाएगी ना, हाँ। वो रिले करके एस3 में डाल रहा है। रिले करके रेज्यूमेबल अपलोड। अच्छा। तो इसके लिए बीच में EC2 क्यों चाहिए? हम लोग तो डायरेक्टली S3 पे भी अपलोड कर सकते हैं फ्रंट एंड से, प्री साइंड यूआरएल हाँ यूज बट, करके। हाँ वो कर सकते, बट अगर वीडियो बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ओके। 1 जीबी की वीडियो है और बंदे पे मोबाइल डेटा है 1.5 जीबी दिन का, हम्म। अगर बीच में फेल हो गई 1 जीबी की, तो उसे वापस स्टार्टिंग से ही अपलोड करना पड़ेगा। तो रेज्यूमेबल में S3 रेज्यूमेबल नहीं देता है क्या? शायद देने लगा फाइल सिस्टम कर, नया फीचर आया था, 1 मिनट एक बार चेक करता हूँ मैं। यहाँ पे तो बोल रहा है S3 रेज्यूमेबल अपलोड प्रोवाइड हाँ, करता है अरे रेज्यूमेबल हाँ बट, एपीआई के साथ। या बट, अरे मतलब रेस्ट एपीआई अपना S3 का एसडीके यूज कर हम्म रहा हूँ ना मैं। है तो ओके। क्लाउडफ्लेयर अंडर हम्म। आर टू नहीं सपोर्ट कर रहा। अच्छा R2 ना, हाँ R2 नहीं सपोर्ट कर रहा है, कोर S3 सपोर्ट कर रहा है। R2 क्या है? आर वो टू एस थ्री जैसा ही है क्लाउडफ्लेयर क्लाउडफ्लेयर का का। ऑब्जेक्ट डेटा, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। सो वही है, तो उसके लिए रेज्यूमेबल अपलोड है, मतलब इतने कुछ है नहीं यहाँ पे, मैंने सेपरेट बना है। हम्म। बिकॉज टीयूएस अपलोड को मैं हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकता हूँ उसके लिए, बट मैं अभी हम्म। फिलहाल के लिए दोनों को एक ही EC2 पे रन कर दूंगा। अच्छा। हम्म। तो समझो एक ही EC2 है, ये जो है ट्रांसकोडिंग वर्कर्स, ये सॉरी दो है, एक T4G है हम्म। जिसपे ये दोनों रन करेंगे, टीयूएस और रेस्ट एपीआई। और जो यस C6 वाला है, बिकॉज वो कंप्यूट वाला है ना, तो उस पर ट्रांसकोडिंग ऑफलोड कर दूंगा। यस यस यस। सो मेरा ये जो AWS लैम्बडा वाला, थोड़ा ऑफ कोर्स फर्स्ट रिक्वेस्ट पे डिले तो आएगा ही, उसको मैं कुछ नहीं हाँ कर सकता। बट मैं वहाँ हाँ पे लोडिंग पे मेंशन कर दूंगा ना कि लोड हो रहा है भाई, रुक जाओ। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। बिकॉज फिर सी, मेरा सी बेसिकली क्या है, $200 के क्रेडिट तो दे रहा है AWS, हम्म। वो उड़ जाएंगे मेरे तो ऐसे ही, बस अगर कर। 24/7 रख दूंगा तो। हाँ हाँ। तो इसलिए ये कर दूंगा ना। तो मैंने देखा है कैलकुलेशन जितना किया मैंने, कुछ भी करके $5 आ रहा है महीने का। और पूरी मेरी मीडिया सिस्टम चल रही है $5 में, और वो भी कट रहा है क्रेडिट में से। तो अगर इसमें से हम लोग EC2 भी हटा दे तो और बिल कम हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। कैसे? रेस्ट एपीआई जो होस्टेड है EC2 पे, वो हटा के लैम्बडा पे डाल दो, लैम्बडा तो फ्री ही है। हम्म। रेस्ट एपीआई का एक EC2 इंस्टेंस हट गया। अब ओके, ट्रांसकोडिंग वाला जो है उसके लिए उसके लिए तो लॉन्ग रनिंग लगेगा ही ना। उसके लिए एक चाहिए, करेक्ट, हाँ वो या एक चाहिए होगा। बिकॉज और मुझे बुल एमपी अपलोड जो है, वाला हम लोग एलिमिनेट कर सकते शायद। क्या? TUS अपलोड वाला EC2 एलिमिनेट कर सकते शायद। नहीं, जब तक अपलोड कंप्लीट होगा नहीं, हम्म। तब तक इसका रेडिस के साथ भी कनेक्शन है ना, कॉन्करेंट। अपलोड कंप्लीट नहीं होगा तब तक। तब तक तो कनेक्शन रहना ही चाहिए।
एंड आई गेस लैम्डा पे तो कुछ लिमिट है ना, टाइम का इतना ही नहीं चलेगा। तो डायरेक्ट S3 पे अपलोड कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ ना, डायरेक्ट S3 वाला ट्राई करो हाँ अगर बट हो मुझे पाए। मोबाइल S3 वाला तो प्री साइन अप्रूवल तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? हाँ, बट मोबाइल नेटवर्क पे ये है ना, इशू है, एंड मुझे मोबाइल S3 नेटवर्क तो चाहिए। है ना, अभी तो देखा। हाँ, सी यहाँ पे मैंने S3 बनाया है, क्योंकि डायग्राम पे मेरे पास S3 था। मैं यूज कर रहा हूँ Cloudflare R2, ओ जो एपीआई अच्छा, S3 यूज कर रहा है। ओके ओके ओके। तो उसमें वो रेज्यूमेबल सपोर्ट नहीं है क्या? नहीं, वो बहुत नया है। उसमें तो प्रॉब्लम भी क्या है पता है? अगर जाएगा ना अपना फाइल, तो SHA-256 का हैश नहीं देगा मुझे, CRC64 का ही देगा। ओके। तो उसमें मतलब अर्ली स्टेजेस पे, अभी जस्ट 2022 या 23 में लॉन्च किया उन्होंने प्रोडक्ट। बस उसमें ईग्रेस फ्री देता है, इसलिए मैं R2 यूज कर रहा हूँ। ये नहीं मालूम था मेरे को R2 के बारे में बिल्कुल। बहुत नया प्रोडक्ट है, बट लाइक उनका जो प्राइसिंग है बहुत मस्त है। S3 में मुझे तो वो भी देना पड़ेगा ना, ईग्रेस, इसीलिए। तो थैंक यू फॉर दैट लैम्डा का वैलिडेशन। हम्म। अभिषेक भाई, आप भी कुछ बोलिए, अरे नहीं, आपकी या स्ट्रीम है। अरे नहीं नहीं, मैं सुन के लाइक काफ़ी चीज़ मेरे को सीखने को मिल रहा है, तो लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व। तो अभी आप करंटली लाइक जीपीयू इंस्टेंस के बारे में बताओ रितु। लाइक क्या एग्जैक्टली कर, लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? जो नए जीपीयूज आते हैं, जैसे पिछले साल मैंने P6 B200 पे काम किया था, तो B200 एनवीडिया का नया नया जीपीयू था तब। हम्म। तो उसका उस उसके टाइप का सर्वर का डेवलपमेंट करने का काम रहता है मेरा। ओके। वो सर्वर टाइप मतलब जैसे T4G नैनो हो गया, हम्म। T4G C6G लार्ज तुम जो यूज कर रहे हो वो हमको सपोर्ट देना पड़ता ना हाइपरवाइजर में कि हम्म। ये हार्डवेयर है, इसके ड्राइवर्स लिखने हैं, और ये ऐसे ऐसे इतना स्लॉट्स होगा, इस फिजिकल मशीन पे इतने वर्चुअल मशीन्स बनेंगे, इस टाइप का काम। ओके। और लाइक इफ यू कैन लाइक, ऑफ कोर्स एकदम एग्जैक्ट मत बताओ, बट अगर कुछ आइडिया दे सकते हो जो एक्चुअल फिजिकल इंस्टेंस होता है, एक हाँ यूनिट, हाँ वो हाँ। लाइक कितना पावरफुल होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती होगी उसकी? नहीं यार, नहीं बता सकता मैं कॉन्फ़िगरेशंस। हाँ ठीक है। कॉन्फिडेंशियल। या लाइक नहीं रिटेल टर्म्स में बता दो, रिटेल में जो पीसी मिलते हैं वो कितने पावरफुल होंगे उसके कंपैरिजन में? तो जो C6G तुम यूज करते हो, हम्म। उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म। तो C6G डॉट लार्ज यूज कर रहे हो ना, हाँ। तो एक सबसे बड़ा फिजिकल मशीन जो होता है, एक फिजिकल मशीन वो 48x लार्ज होता है। व्हाट द हेक। और 48x लार्ज वाले में 192V सीपीयूज होते हैं शायद। वो सब पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो भी मिल ओके। जाएगा। 48x लार्ज के कॉन्फ़िगरेशंस देखना, तो वो एक फिजिकल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। 48x लार्ज मतलब सिंगल स्लॉटर, पूरा फिजिकल मशीन एक ही वर्चुअल मशीन ऑक्यूपाई करेगा। ओके। एंड ये मैक इंस्टेंसेस कैसे हैंडल कर रहे हैं अभी? लाइक उसमें तो पूरा मुझे डेडिकेटेड मैक मिनी मिल जाता है ना? हाँ तो, हाँ राइट करेक्ट, मैक मैक मिनी रखे हुए हैं डेटा सेंटर्स में। या उसमें तो मुझे पूरा डेडिकेटेड मशीन का ही मिलेगा, एक्सेस मिल जाता प्राइसिंग है, हाँ। आएगा। हाँ। डैम। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइक सीरियसली। और कैसे हैंडल हो रहा है ना, इसमें मेरे को भी लाइक लाइक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी इंटरेस्ट है, मतलब आई वांट टू बिल्ड माय ओन ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ थिंग। तो वो मेरे को हम्म। जानना है कि हाउ कैन आई स्टार्ट दैट। कि अभी 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 बेसिकली आई एम डूइंग एप्लीकेशन लेयर ओनली, कि वेब एप्लीकेशंस, फुल स्टैक एप्लीकेशंस, बट आई वांट टू गेट इनटू low level programming, building operating system kind of things. तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विथ आर्म, क्यों आर्म आर्किटेक्चर, आर्म काफी इजी है स्टार्ट बिगिनर्स के लिए। और उनके वेबसाइट पे उनका ऑफिशियल गाइड्स है। इफ यू गूगल फॉर लर्न द आर्म आर्किटेक्चर,
तो बहुत सारे गाइड्स होते ओपन हो जाती है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके। रिड्यूसेस, ओके। लर्न द आर्म आर्किटेक्चर। तो उसमें एक प्रोफाइल प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ना, तो सीक्वेंशियली पढ़ना। वो उन्होंने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन लिखा है। सीपीयू का अच्छा आइडिया आएगा तुमको, और फिर सीपीयू का एक बार आइडिया आया तो थोड़ा चैट जीपीटी वगैरह कर लेना, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना, वो हो जाएगा बराबर। फिर समझ में आने लगेगा कि क्या क्या आगे करना है। ओके। ओके। तो एंट्री पॉइंट होना चाहिए लर्न आर्म आर्किटेक्चर। ए हाँ प्रोफाइल आर्किटेक्चर, राइट? हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करना तो मैं हाँ, बता मैं देता यहाँ हूँ पे आपको। शेयर कर रहा हूँ। गूगल ओपन करना, गूगल में खुलेगा, यहाँ पे नहीं। गूगल। लर्न द आर्म आर्किटेक्चर। लर्न आर्म आर्किटेक्चर। हाँ, ये सर्च करना। हाँ, ये फर्स्ट लिंक, इसमें ए प्रोफाइल। ए ओके। और यहाँ यहाँ से जो है ना, इंट्रोडक्शन और आईएसए वगैरह, तो ये काफी अच्छी गाइड्स है। ओके। ओके। सीपीयू का ऐसे बेसिक आइडिया आ जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है इसमें। जैसे हमने कॉलेज में कभी ऑपरेटिंग हम्म सिस्टम लिया होगा, हाँ हाँ, तो हमने सब्जेक्ट था। पढ़ा पढ़ा याद होगा क्या, रिंग 0, रिंग 3, इंटेल के हाँ। प्रिविलेज होती है। तो वैसे ही इधर आर्म के वर्ल्ड में एक्सेप्शन लेवल्स होती है, एक्सेप्शन लेवल 1, एक्सेप्शन लेवल 2। तो उसका एक पूरा अलग गाइड है। तो ऐसे मेंटल मॉडल एक क्रिएट हो जाता है सीपीयू का। ओके। ओके। वो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का डायनासोर वाला बुक पता है? हाँ, वही वही हाँ, वो सुपर के वो वाला अच्छा उसकी। पढ़ा था मैंने। हाँ। मैंने भी वही पढ़ा है। भाई वो लेजेंडरी बुक है। हम्म। नहीं, मैं बोलूंगा उससे ज्यादा अच्छा, उससे बेटर ये वाले गाइड्स है। ओके, नहीं लेकिन ये तो लाइक काइंड ऑफ स्पेसिफिक हुआ ना, वो तो लाइक जनरल है आई गेस। नहीं, वो भी स्पेसिफिक है, वो इंटेल स्पेसिफिक है बिल्कुल। ओके। आई मीन। वो x86 आर्किटेक्चर स्पेसिफिक है, वो मुझे भी अभी रियलाइज हुआ जब मैंने ये पढ़ा। स्ट्रक्चरली सेम है चीजें, अ, लेकिन ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब वो इंटेल स्पेसिफिक है क्योंकि तब उस टाइम पे जब वो बुक लिखी गई थी तब आर्म आर्किटेक्चर इतना फेमस था नहीं। हाँ, लाइक आर्म आर्किटेक्चर को पहले से थोड़ा बच्चे टाइप आर्किटेक्चर ट्रीट करते थे ना। हाँ, राइट। और अभी अभी आजकल बूम हो गया है एकदम से। या लाइक इवन पहले तो लाइक आई गेस मोबाइल्स में यूज होता था आर्म आर्किटेक्चर। हाँ, सारे मोबाइल्स तो मोबाइल। आर्म पे ही चलते थे। और हाँ। पीसी में इम्प्लीमेंट करने वाले तो एप्पल वाली पहले निकले, फिर उसके बाद वो हम्म। थिंकपैड वगैरह एप्पल में का एम सीरीज देखने के बाद सब लोग को फिर अभी हाँ, स्नैपड्रैगन को मिल रहा है ना, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एक्स कुछ तो। स्नैपड्रैगन तो मोबाइल में यूज होता है। अच्छा, हाँ ठीक है, वो पीसी थिंकपैड पीसीज में वाले। आ रहा है, हाँ। राइट राइट पीसीज राइट। में भी आ रहे हैं बोलो। करेक्ट। नाइस। थैंक्स रितु, ऐसे थैंक यू सो मच सही रितु। टाइम पे स्पॉन होने के लिए। सही में आउट ऑफ नोवेयर। कूल। आर्म आर्किटेक्चर। मैंने चलो। तो एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, लेकिन अभी कुछ दिन हो गए, मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ घर पे बैठ के, तो वीडियोस डाला नहीं मैंने। लेकिन प्लान यही था कि ओएस डेवलपमेंट की वीडियोस डालूंगा। मैं लाइव स्ट्रीम करता था प्रोजेक्ट बनाते बनाते। सही है, अरे वहां पे सही आप एक है। सीरीज स्टार्ट करिए, हाउ टू बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। या एग्जैक्टली। करता हूँ करता हूँ। ऐसे वो यार, बीच में हुआ था ना, कौन सा वो एटलाशियन वाला बंदा पता है, बहुत पॉपुलर हो गया था बीच में। हाँ हाँ, लाइव स्ट्रीम उसका भी मैं देख हाँ। रहा था। वो अभी बीच में क्या ये रस्ट में रेडिस बना रहे हाँ हाँ, वो वाला मैंने देखा है। हैं। या वैसे भी आप कर दो आर्म आर्किटेक्चर का ओएस फ्रॉम स्क्रैच, हम्म वो एकदम जो कि लाइफ बेसिक, टाइम। वो क्या हो जाएगा ना, अगर आप ये वाला प्लेलिस्ट बना दोगे ना, तो वो हम्म बाइबल जैसा हो जाएगा कि किसी को भी ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसना है तो वो सबसे पहले वही इधर वाला आके कर प्लेलिस्ट। सकते हैं। या हाँ। हम्म
राइट। We are building a crazy network, guys. And thanks to Abhishek. और थैंक यू लाइक सी मैं जैसे आई स्टार्टेड दिस चैनल, मेरे को बस कंसिस्टेंट रहना था, मैं आता था स्ट्रीम करता था ऐसे ही कर करके। लाइक ये चैनल मेरा कंसिस्टेंसी के लिए था कि मतलब एवरी डे आई कैन शो अप एंड डू समथिंग। तो इसी को यूज कर करके लाइक पीपल स्टार्टेड ज्वाइनिंग एंड यू नो लाइक इट इज़ वेरी नाइस। लाइक रितु, आप अभी ये स्ट्रीम पे आ गया, पहले से सब्सक्राइब करके रखा है लाइक अभिषेक का चैनल? मैंने देखा हुआ था, सब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ है। मैंने देखा था चैनल पहले, अभिषेक भी लाइक सबकी फीड पे, गाइस आई एम लर्निंग एडवांस बैकएंड सिस्टम, ज्वाइन करो। हाँ, वेब डेवलपमेंट का एंड प्रोजेक्ट लेट बनाते मी थे टेल ना। यू, एक हफ्ता आपकी फीड पे रहेगा बंदा, एंड एक हफ्ते में से आप कभी तो क्लिक करोगे ही करोगे। हाँ, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। सी एग्जैक्टली। और अभी अचानक से मैं ज्वाइन किया और तुम्हारी हाइपरवाइजर वाली बातें चालू हो गई। या मैं बोला मैं आता हूँ अब। ये पर डैम। लेकिन जो मैंने अभी प्रोजेक्ट भेजा था ना, वो फर्मी ओएस वाला, इधर जो चैट में है, हाँ, हम्म। गिटहब वो रिपॉजिटरी। उसके बहुत बहुत टाइम लगाया मैंने। वो बनाते टाइम बहुत सारी चीजें सीखी मैंने, मतलब जितना कॉलेज में मैंने ओएस नहीं सीखा था ना, उससे ज्यादा मैंने ये प्रोजेक्ट बनाते टाइम सीख लिया। तो ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है, लाइक अगर किसी को फॉलो अराउंड करना है कोड देख देख के, लाइक दे कैन गो फॉर इट। अभिषेक, प्रीटी मच कंप्लीट है। उसमें शेल है, हम कमांड्स टाइप कर सकते हैं, आउटपुट भी आता है, लेकिन फिर उस बीच में डीबग आउटपुट्स बहुत सारे आ जाते हैं, तो रीडेबल ज्यादा नहीं है, इस टाइप का है वो सिचुएशन उसका। अच्छा, ओके। लेकिन प्रोटेक्शन सिक्योरिटी वाइज या फिर फीचर वाइज कंप्लीट है, बस यूजेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी कम है इसकी। ओके। अभिषेक, देयर इज समवन धवल कुमार सिंह, एडमिट करूँ क्या? एडम। हेलो। हेलो। आई गेस ही इज फ्रॉम। हेलो। हाँ, आई गेस चैट से कोई धवल कुमार सिंह एडमिट करूँ? कर लो। ठीक है। एडमिट। ऑलराइट, ही हैज जॉइंड द स्ट्रीम। हेलो। भाई कोई बोल रहा है 9 बजे तक ये बंदे सोएंगे नहीं। ओ, सुबह के 4 बज गए। वाह, कितने बजे चार ज्वाइन किया था लाइक स्ट्रीम? आई गेस 2 बजे, एक, डेढ़ 2 बजे शायद। अ, 1:30 बजे ज्वाइन किया था। हाँ, स्ट्रीम कितने बजे ज्वाइन, लाइक तुम स्ट्रीम कितने बजे ज्वाइन किया था? 2 बजे ना? टू मैंने तो थर्टी से। बीच बीच में कर रहा था, बीच में अच्छा, खाना अच्छा। खाते टाइम। ओके। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं ये वाला लाइक मीटिंग वाला कब ज्वाइन किया था। अच्छा, ओके। अभिषेक जहाँ लिंक्डइन भी बन गया। ओके। हेलो धवल, ये आर यू हियर? हे सॉरी यार। अरे मुझे सिर्फ एक ये क्वेश्चन था जो अभी बोल रहे थे ऋतुपर्णा कि ये जो ओएस वाला बता रहे थे, राइट? सो बेसिकली लाइक मतलब हाउ हाउ वुड इट वर्क, लाइक मतलब हाउ हाउ डू यू गेट स्टार्टेड ऑन इट, लाइक उसका कुछ बता सकते थे क्या? जो उन्होंने बोला वो समझ में तो आया, बट मतलब जो डिबगिंग वाला प्रॉब्लम बोल रहे थे, तो उसका कोई एडिटर, ऑल्टरनेटिव हे या कुछ फर्स्ट है टाइम क्या यार या वर्किंग नहीं? ऑन अ SaaS. Yes, I'm trying नहीं to यार, build my own ऑल्टरनेटिव तो SaaS कुछ नहीं है, ग्राइंड करो and बस, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। I'm मैं working on my स्टार्टिंग पॉइंट तो SaaS ये जो स्क्रीन पे off अभी खुला stream. हुआ है वो मैंने बता दिया, ये काफी अच्छा है। लेकिन फिर बीच में अगर कहीं फंसोगे तो यू आर ऑन योर ओन। डिबगिंग के लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं है। लॉग्स डाल डाल के, पढ़ पढ़ के, डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके, और अलग अलग चीजें ट्राई करके ही पता चलेगा। ओके ओके। Nice. ऋतु, एक लाइक क्वेश्चन है, कितना काम लाइक इंडिया में आपने कितने देर तक काम किया था, और लाइक डायरेक्ट बर्लिन? इंडिया में मैंने सिर्फ इंटर्नशिप की थी फिटजी में। फिटजी मालूम होगा ना, वो कोचिंग क्लासेस। हाँ हाँ पता हाँ, पता। आईआईटी निकालने वाले हैं। हाँ। हाँ, मैंने सिर्फ वहाँ पे इंटर्नशिप करी थी। फिर उसके बाद मैंने इंडिया में काम नहीं किया। उसके बाद मैं 6 महीने जापान जापान में था, फिर जापान से यहाँ पे बर्लिन में आ गया। ओके।
Editor, like everything that Do we're you see learning, the end AWS goal like कोई is to build my own institution SaaS. इंडिया में So whatever I'm निकले? learning, it is aligned with the क्या goal of चीज? building my SaaS. लाइक जैसे AWS है हम्म, अमेरिकन, हम्म। वैसे ही कोई इंडियन TCS And वगैरह I, बन yes, जाए apply those एज knowledge नहीं, while AWS building my वेंडर। पॉसिबल SaaS. नहीं है। मेरे को नहीं लगता अभी AWS के बराबर, या फिर गूगल क्लाउड, या फिर एज़्योर भी ले लो, ये तीन ही मार्केट में क्लाउड कंपनीज है जो डोमिनेट कर रही है। और बाकी Monopoly. अगर कंपनीज, राइट, एग्जैक्टली मोनोपोली है इन तीनों की, ट्राइपोली है। लेकिन हाँ, मतलब और कंपनीज आने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इनका ऑलरेडी स्केल इतना बड़ा है। और ट्रस्ट भी अच्छा है लोगों में, इन कंपनीज का रिलायबिलिटी अच्छी है, कभी सर्वर्स खराब नहीं Hello होते, Kishore, welcome to the stream. सर्विसेज हमेशा चालू रहती है। तो क्यों ही लोग नए क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास जाएंगे? या आई मीन वो Why? भी है, रीइन्वेंटिंग द व्हील वाला हो जाएगा। हम्म। But sometimes I feel India like is losing a lot of opportunities. क्योंकि क्या हो रहा है ना कि we have like cloud जब boom करा था उसमें we lost the opportunity. अभी AI boom कर LLM boom करा उसमें we are not, like कहीं ना कहीं opportunities miss हो रहा है. Like आप लोग को क्या लगता है? क्लाउड से रिलेटेड मैं तो नहीं बोलूंगा कि अपॉर्चुनिटी किसी को लेनी भी चाहिए अगर मिली तो। व्हाई? वही ना, कंपटीशन ही इतना ज्यादा है। मतलब हम ट्रिलियन डॉलर कंपनीज के आगे छोटी कंपनीज क्लाउड में आके क्या ही कर लेगी, वो बहुत या बट इंसिग्निफिकेंट। चाइना की तरह हम एटलीस्ट अपना डोमेस्टिक मार्केट तो सर्व कर सकते हैं, राइट? डोमेस्टिक मार्केट डोमेस्टिक कर मार्केट भी सकते उसको हैं। ट्रस्ट नहीं करेगा ना अभी तो फिलहाल। अब हाँ वो भी है, डोमेस्टिक मार्केट भी ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर इंडिया में सॉवरिन क्लाउड का प्रॉब्लम है तो शायद वो चल सकता है इन टू सम एक्सटेंट। सॉवरिन क्लाउड मतलब जो गवर्नमेंट वाले एयर हम्म। गैप सेंटर्स यूज करते हैं, जो बहुत सिक्योरेटिव या फिर हम्म। बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, उसका प्रॉब्लम है अभी इंडिया में। Hmm. True. आई डोंट थिंक सो सेमीकंडक्टर वाली रेस भी हम कुछ कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर शायद अभी मैंने रिसेंट में एक न्यूज देखा था, आईआईटी मद्रास में एक लैब सेटअप है सेमीकंडक्टर की। तो हाँ। वो कुछ तो कर रहे हैं वहां पर, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली पता नहीं, और कब तक अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा वो भी नहीं मालूम। और वही सेमीकंडक्टर तो सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट इंडस्ट्री है। वही ना हम्म। ताइवा और वो भी अभी ताइवान में पूरा वो हो गया है. लाइक हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया मतलब है. टीएसएमसी TSMC। टीएसएमसी तो मेजर प्रोवाइडर है अभी मार्केट में, लेकिन फिर उसके भी ऊपर जो कंपनी है एएसएमएल, राइट, जो हम्म। लिथोग्राफी मशीन्स बनाती मशीन्स है, बनाती है। तो वर्ल्ड में एक ही कंपनी है। टीएसएमसी के साथ और भी चिप मैन्युफैक्चरर्स है, सैमसंग हो गया, इन्फिनियन हो गया। या बट वो मशीन्स वाली एक ही कंपनी है, राइट? मशीन्स वाली एग्जैक्टली एक ही कंपनी, करेक्ट। तो उनका तो और ज्यादा मोनोपोली है वहां पर। वही या तो एंड लाइक दे उनका आर भी कुछ तो डायरेक्टली यूएस ने कंट्रोलिंग द किया है ना, मार्केट. लाइक हम्म। उन्होंने कुछ बोला है कि लाइक चाइनीज कंपनीज को बेचो ही मत न्यू जनरेशन वाली मशीन्स। वो मतलब अभी यूएस वाले तो कुछ भी बोलेंगे। एएसएमएल तो यूएस की कंपनी है नहीं, या वो नहीं, भी है। यूरोप की कंपनी, और यूरोप हम्म। में तो कुछ प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा है। ट्राइप एक्वायर्ड ओपन राउटर, ओके। स्ट्राइप के पास इतना लाइक हाउ डिड स्ट्राइप गेट सो मच मनी दैट दे कैन एक्वायर ओपन राउटर. नाइस. अरे सबका पैसा तो वही कलेक्ट कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। सबका कमीशन खा रहा है। सही बात है. के एमओआरस भी है, एमओआर इतना आई डोंट थिंक सो यूज होता है, होता भी हो। मर्चेंट ऑफ हाँ, रिकॉर्ड्स लाइक डोडो आपके पेमेंट्स. बिहाफ पे मैं सब कुछ इनवॉइसिंग वगैरह देख लूंगा। ओके। इनवॉइसिंग नहीं मतलब एक जो कंप्लायंस होता है, मतलब कंट्री हाँ, हाँ, जीएसटी स्पेसिफिक जो टैक्स वाला। टैक्सेस नहीं होते हैं कंट्री समझ स्पेसिफिक. गया, समझ गया, राइट, राइट, समझ गया। हम्म। तो मतलब तुम सिर्फ हमको इतना डेटा दो कि तुम्हारा क्या सेल हुआ, बाकी सब हम हैंडल कर लेंगे, इस हाँ, टाइप। लाइक जो आपको बिल आएगा हम्म। वो बिल प्रॉपरली एमओआर का ही आएगा, बस उसमें जो इनवॉइस होगा
वो बस हम्म आपका होगा, लाइक फॉर एग्जांपल हम्म कोई भी है, उबर होगा, तो उबर का ओके सब कुछ फॉर्मेटिंग ब्रांडिंग होगा, हम्म बट जो एंटिटी होगी जो पैसा का सब लेन देन देखेगी, वो हम्म एमओआर होगा। ओके ओके क्रेजी आज की स्ट्रीम हो गई भाई। वही यार, अभी तो 4:30 हो गया है। इट फील्स लाइक आई एम डूइंग अ नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी नहीं होता जिसमें रात को आई वी नो। वर्क एंड दिन में सोना। इट्स लाइक दैट। अभी मेरे पेरेंट्स उठेंगे 5 बजे भाई, मुझे डांटेंगे। या लाइक, या गाइस, क्या चल रहा है तेरा? आई थिंक अभी हम लोग रैप अप कर सकते हैं। या वी कैन, या वी थैंक यू। शुड एक्चुअली। या थैंक यू रितु, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग द कॉल मैन। या थैंक यू यार थैंक थैंक यू यू, थैंक मैं यू रितु, थैंक यू सत्यम, थैंक यू थैंक धवल, यू अभिषेक, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, धवल। थैंक यू, चलो बाय बाय बाय। Yeah guys, so we have done this call and I hope you guys enjoyed this call and like we enjoyed you enjoyed today's stream, and if you enjoyed the stream, crazy stream, yep. Yeah guys, I hope you enjoyed the stream, and if you enjoyed the stream, do consider subscribing to the channel and drop a like as well. And from the next stream, we're going to start the customer module of the food delivery application. Okay, Dhawal, nice to join. Would love to see the future sessions. Sure, Dhawal. Thanks, man. Thanks for joining. Editor, good night, sleeps. Yeah, good night, everyone. Good night, and thanks for joining the stream. I'll see you in the next stream. Until then, take care of self. Bye and good night.